Welcome back, ladies and gentlemen, to the day 3 of Nvidia iCafe Attack Fortnite tournament, powered by Nvidia. Of course, I will be your host for the evening, Shanshu, and joining me for the evening is going to be a really awesome caster, Spiro. Spiro, how are you doing tonight? Well, I'm doing good. How are you, Sanchu? First of all, thank you so much for having me here. बहुत excited हूँ मैं आज के इवेंट के लिए. Fortnite में पहली बार कास्ट कर रहा हूँ and मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से आज हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो खेलने वाले हैं इस इवेंट के अंदर. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, स्पेशली बिकॉज आपको इतना इतना अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि मैं पहले 2 दिन के गेम प्ले से बता सकता हूँ, ये बहुत बहुत भयंकर खेलते हैं यहाँ पर सब. सो या इट्स गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम. एंड आपने स्पेरो कितना फोर्टनाइट खेला, आपको कितना पता उसके बारे में? देखिए, मैंने फोर्टनाइट ज्यादा नहीं खेला बट मैंने देखा बहुत है. मैंने बहुत सारे स्ट्रीमर्स को देखा है फोर्टनाइट खेलते हुए और साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रीम है, ये जो टूर्नामेंट है, मैं वो देख रहा हूँ 2 दिन से एंड इट्स बीन अमेजिंग जिस तरह से यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं. कल ही की बात कीजिए, जो हॉट एयर बैलून के ऊपर उन्होंने कैंप किया था और वहां से ऊपर दे वर जस्ट रेकिंग हैवक ऑन एवरीवन. दैट वाज एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग. वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा. मैं चाहूंगा कि आज भी कुछ ऐसे ही शोज आपको देखने को मिले यहाँ पे. एंड आई थिंक ऐसा ही होने वाला है, स्पेशली बिकॉज आज हमारे साथ कितने सारे क्रिएटर्स खेलने वाले हैं. इट्स नॉट जस्ट द प्रो प्लेयर्स बट द क्रिएटर्स एज वेल. तो उनकी भी एनर्जी देखने को मिलेगी, उनका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. आउट ऑफ ऑल द क्रिएटर्स, स्पीरो, आप किसको ज्यादा सबसे लेके एक्साइटेड हो? किसका गेम प्ले आप सबसे ज्यादा देखने में इंटरेस्टेड हो? आई फील सिख वॉरियर की टीम मेरे को काफी प्रभावित कर रही है अभी के लिए. देखना चाहूंगा वो कैसा खेलते हैं आज के दिन में, बिकॉज सिख वॉरियर एक ऐसे प्लेयर हैं जो मल्टीपल गेम्स खेलते रहते हैं अपनी स्ट्रीम्स के ऊपर. नाउ ही नोज अ लॉट ऑफ गेम्स, राइट? तो फोर्टनाइट भी काफी अच्छा एक एफपीएस शूटर है जिसको खेलने में शायद सिख वॉरियर को काफी मजा आएगा. डेफिनेटली. एंड प्लस मैंने ऑलरेडी देखा है सिख वॉरियर को फोर्टनाइट खेलते हुए पहले बहुत बार. सो आई एम प्रीटी श्योर ही ऑलरेडी नोज द बेसिक एंड उनको पता हो गया कि एग्जैक्टली गेम में करना क्या है. एंड ऑल्सो आज का जो हमारा टूर्नामेंट है, नॉर्मली फोर्टनाइट में बिल्डिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है. इट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स. बट ये जो टूर्नामेंट है, इट्स अ नो बिल्ड टूर्नामेंट. तो यहाँ पर किसी को भी बिल्डिंग सीखने की जरूरत नहीं है. तो इवन अगर कोई क्रिएटर पहली बार फोर्टनाइट खेल रहा है, ही कैन जस्ट ट्रीट इट एज अ नॉर्मल बैटल रॉयल, ही और शी. तो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो या इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑसम वॉचिंग ऑल ऑफ देम प्ले. एंड आपको कल के प्लेज में, जैसे आपने ऑलरेडी बोला, आपको हॉट एयर बलून का जो प्ले था काफी अच्छा लगा. इज देयर एनी अदर प्ले दैट यू रियली लाइक? देखिए, आई नॉट पर्टिकुलरली आई वुड लव टू सी कि कोई जैसे जोन के बाहर कल हमने देखा कि प्लेयर्स जा जाके अटैक कर रहे थे. दैट रूथलेस एग्रेशन वाज देयर यस्टरडे. आई वुड लव टू सी कि आज कुछ वैसा देखने को मिलेगा या नहीं. बट मैं जी हाइपर को देखना चाहूंगा, लाइक कैसा खेलेंगे आज के दिन में. कल इतना ज्यादा वो ऊपर नहीं जा पाए बट आई वुड लव टू सी ए कम बैक देयर. बट जैसा कि हमने कहा, क्रिएटर्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज इन द एंड ये क्रिएटर्स ना असली गेमर्स हैं. ये सारी गेम्स खेलते हैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर और आज फोर्टनाइट खेल रहे हैं, वो भी एक कंपेटिटिव सिनेरियो के अंदर. इट वुड बी फन. Definitely couldn't agree more right there. And before we start, I think हमको थोड़े से अपने स्पॉन्सर के बारे में बात करनी चाहिए. Let's tell the audience about Nvidia Reflex. Would you like to start with that, Spiro? Well, absolutely. I mean, Nvidia Reflex एक टर्म होता है लेटेंसी. मेरे ख्याल से यहाँ पे जनता जानती होगी काफी अच्छी तरीके से कि जब आप अपने माउस या कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं और जो रिएक्शन स्पीड आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिलता है, उस टाइम ट्रैवल को हम लेटेंसी कहते हैं कि कितना टाइम ले रहा है, कितनी लेटेंसी है आपकी. एंड Nvidia Reflex एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप इस लेटेंसी को कम कर देती है. काफी सारी गेम्स है जो सपोर्ट करती है Nvidia Reflex को. एंड मैं पर्सनली अपने गेम्स में, अपने शूटर्स में यूज करता हूँ एंड काफी ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. यप, डेफिनेटली. एंड इस पे मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा. सिर्फ लेटेंसी का फर्क नहीं पड़ता, जैसे स्पीरो ने बताया. इसमें आपकी गेम परफॉर्मेंस है, जो स्मूथनेस है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि हमारे जितने भी विजुअल ग्राफिक्स हैं, राइट, जो सीपीयू एंड जीपीयू के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो इसको और एनहांस कर देता है, वो इसको और भी फास्ट कर देता है, जिससे गेम इतनी ज़्यादा स्मूथ लगती है कि लाइक इट्स किसी और चीज़ के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता. इट्स सो स्मूथ, राइट? So yeah, Nvidia Reflex, you should definitely try it out. अगर आपके पास Nvidia का GPU है, नहीं है तो क्या कर रहे हो, जाके पहले लो, right? And Nvidia Reflex की ऑप्शन जाके गेम में ऑन करो. It's definitely going to help you a lot. And yeah, so हमारी पहली गेम शुरू होने वाली है at any moment now. So I'm really excited to see क्या होने वाला है. And Spiro, जितने भी आपने क्रिएटर्स देखे, अपने प्रो प्लेयर्स देखे अपनी लास्ट के 2 डे से, उसमें से आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगा? कि आपको लगता है कि कौन आपने कम देखा और आप उनको आज ज्यादा देखना चाहोगे? आपने ऑलरेडी बोला है जी के प्लेयर्स को
Yeah, G हाइपर के Hyper. I प्लेयर्स, would love राइट? to see if he can make a comeback. But of course, there is a problem, right? Building नहीं है इस मोड के अंदर, and हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो ओपन फॉर ऑल क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको आदत है बिल्डिंग बनाने की. उनको जब भी डिफेंड करना होता है, they used to create a lot of buildings, and हायर vantage पॉइंट पे जाने के लिए they used to create a lot of buildings. But इस मोड में वो नहीं है. तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, प्रो प्लेयर्स को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, जो इतना ज्यादा आसान नहीं है उनके लिए भी. हमने कल भी देखा काफी सारे प्लेयर्स हायर ग्राउंड पे जाते हैं. हमने होटल बैलून की बात करी, बट माउंटेन्स भी एक ऐसा एरिया है जहां पे कल हमने देखा कि स्नाइपर लेके काफी ज्यादा प्लेयर्स गए हुए थे. आई वुड लव टू सी कि क्या आज भी सिमिलर टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और क्रिएटर्स किस तरह से खेलेंगे, वो किस तरह से उनको काउंटर करेंगे. बिकॉज लेट मी टेल यू सांशु, जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, मल्टीपल गेम्स खेलते हुए आए हैं. एंड अगर आप समझोगे कि वो इतना अच्छा नहीं खेलने वाले, तो आप गलत साबित होने वाले हो आज. मैं बिल्कुल इस बात से आपके साथ 100% एग्रीमेंट में हूँ. तो या हमारी गेम स्टार्ट होनी चाहिए एनी मोमेंट नाउ. रियली एक्साइटेड टू सी कैसे रहता है. प्लस आपको आई एम प्रीटी श्योर स्कोरिंग सिस्टम तो पता होगा स्पीरो, हमारी प्लेसमेंट पॉइंट्स एंड एलिमिनेशन पॉइंट्स कैसे रहता है. well, absolutely. आप एक बार हमारे जो नया ऑडियंस है उनके लिए जरूर एक्सप्लेन कीजिए कि कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं प्लेसमेंट के और कितने फिनिशर्स के. डेफिनेटली. तो हमारा जो पॉइंटिंग सिस्टम है इज डेफिनेटली मोर प्लेसमेंट हैवी, जिसका मतलब है कि आपको प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान रखना है इंस्टेड ऑफ गेटिंग दो स्किल्स. एलिमिनेशंस के ऊपर ज्यादा मत ध्यान देना, क्योंकि एलिमिनेशन के सिर्फ एक ही पॉइंट है. वेयर एल्स हमारे जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम टॉप 25, जहां पर आपको 1-2 पॉइंट्स मिलते रहेंगे. एंड जैसे ही आप टॉप 5 में पहुंचोगे यू स्टार्ट गेटिंग 3 पॉइंट्स. एट नंबर 1 यू गेट अ रियली ह्यूज बम्प दैट इज 8 पॉइंट्स. So ये सारे पॉइंट्स स्टैक होते रहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम. एंड हमने कल देखा ही है द प्लेयर्स हु प्लेड रियली कंसिस्टेंट इन ईच ऑफ द गेम्स वर वे हायर इन द लीडर बोर्ड, एंड उन्होंने पोजीशन अपनी काफी अच्छे से मेंटेन करके देखी थी. इनफैक्ट डे 1 पे अगर आप सबको याद होगा, जो नंबर 1 प्लेयर था he had an advantage of 40 points. Lead थी उसके पास 40 points की, just because he was playing so consistent and didn't go for kills. And even though Spiro, this game is more placement heavy, we still saw so many people playing so aggressive yesterday. In fact, one of the duos even had I believe around 16 kills yesterday. Wow, that is crazy, right? Definitely. And especially in no build, right? So but if one of your teammates dies, carrying out a situation 1v2 gets really hard, right? Yeah. And these guys still played so aggressive, and मैं उनका गेम प्ले देख रहा था, it was truly something else. So I'm really excited to see उनका भी आगे आज क्या करेंगे, what is going to be their game plan, right? And Spiro, do you know about the weapon system and यहाँ पे shields जो हमारे हैं, यहाँ पर हमारे जो sprint के बारे में है, उन सब के बारे में आपको पता है? Well, not that much, but कल मुझे एक चीज ने बहुत प्रभावित करा, वो थी जो गूगन थी, जिससे आप एक्सप्लोसिव गू को स्प्रे कर रहे थे, उसके बाद वो फट रही थी. दैट वाज एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग, जितनी अग्रेसिव नेचर के साथ उसका इस्तेमाल करा गया था, स्पेशली होटल बैलून से भी, और पहले भी हमने देखा था उसका काफी अच्छा इस्तेमाल करते हुए. आरपीजी लॉन्चर वाज एक्चुअली क्वाइट गुड. मेरे को प्राइम शॉटगन भी अच्छी लगती है. वो उसका जो पहला शॉट होता है वो एक्सप्लोसिव डैमेज देता है आपको, बाकी शॉट्स थोड़े से कम डैमेज देते हैं, बट या द गन्स आर रियली गुड इन फोर्टनाइट. It definitely is. Plus, I believe you are coming from a BGMI background, right? जहाँ पर आप पहले कास्ट करते थे. A lot of games, yeah. Right? तो उसमें होता था शील्ड का, इसमें भी शील्ड का एक ऑप्शन है. You have to drink big pots, minis, and हमारा यहाँ पे there's also splashes, right? Splashes हमारे देते हैं दोनों पूरे डुओ को, हमको शील्ड देंगे. Whereas shields and mini shields and big pots हमारे सिर्फ एक ही प्लेयर को शील्ड देते हैं. सो मैं बेसिकली जो पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, राइट, बिकॉज यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, यू विल हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ शील्ड्स, अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड फॉर दिस रीजन प्लेयर ने अपना चॉइस बनाया है कि दे वोंट कैरी शॉटगन्स, इंस्टेड दे ओनली कैरी एआरस एंड एज मेनी यूटिलिटीज एज पॉसिबल फॉर द एंड गेम. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक फोर्टनाइट में जैसे हमारी शॉटगन है, इट इज दैट क्रूशियल कि हमको रखनी चाहिए, कि डू यू थिंक इट्स ओके कि तुम्हारी शील्ड रखना भी ठीक है? देखिए, काफी समय हो चुका है फोर्टनाइट को, और अब प्लेयर्स को पता है कि शॉटगन को काउंटर कैसे करते हैं. आपको लॉन्ग रेंज में रहना है, थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है, और उसके बाद आप शॉटगन को काउंटर अच्छी तरह कर सकते हैं. आई फील कि अगर प्लेयर्स ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप ज्यादा एआर रखेंगे, एसएमजीज रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इन द एंड यूटिलिटी इज वे मोर इंपॉर्टेंट इन दिस मोड एज कम्पेयर टू बिल्डिंग मोड. बिकॉज वहां पे बचने के लिए आपके पास बिल्डिंग्स होती थी, यहाँ पे आप शील्ड का इस्तेमाल करोगे, उसको रिचार्ज आपको बार बार करना पड़ेगा. तो आई फील दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. प्लस जो हमारे न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा वो कौन सी
स्ट्रैटेजी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ न्यू गेम फॉर अ लॉट ऑफ देम एज वेल। काफी ने पहले खेला हुआ होगा, बट कईयों के लिए काफी समय के बाद वो खेल रहे होंगे, तो मजा आएगा देखने में वो क्या करते हैं। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम सिक वॉरियर एंड एस डुओ, आप कोई और क्रिएटर के लिए एक्साइटेड हो देखने के लिए? Well, absolutely. I'm in global esports से Rushinder Sinha and Mohit Asrani, the OG gamers. They have played almost every single game जो है इस planet के ऊपर काफी समय से, काफी सालों से वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी देखने में मजा आएगा। और सबसे बढ़िया चीज है, even though they don't practice daily, they are very competitive. Let me tell you that. समवन काफी लोग एक्चुअली चैट में पूछ रहे हैं बूम हमारे कहाँ पर है। स्पीरो बूम इज वन ऑफ द ओजीएस्ट मेंबर ऑफ फोर्टनाइट कम्युनिटी, राइट? एंड पूरी कम्युनिटी में एवरीवन लव्स हिम। तो हमको पहले 2 दिन उन्होंने ही ज्वाइन करा था। एंड गाइस लेट मी टेल यू, ही विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम गेम 3 ऑनवर्ड्स, सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। आपको उनकी भी बात सुनने को मिलेगी, बट टिल देन वी आर जॉइंड बाय स्पीरो एंड उनको हम पूरी गेम बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है? चैट में आप भी हेल्प करना, मैं भी बताऊंगा इनको। एंड या, इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम एक्सपीरियंस। सो स्पीरो, बिफोर वी स्टार्ट, do you have any other questions? Anything you would like to know about Fortnite? Yeah. All right. So I have an update as well from the back end कि थोड़ा सा क्यू डिले हो रहा है यहाँ पे, तो 5 मिनट का और समय यहाँ पे लगेगा, उसके बाद मैच में हम डायरेक्ट जाते नजर आएंगे। रही बात सवाल की, तो आई थिंक फोर्टनाइट इज अ ब्यूटीफुल गेम। जो हमारी कम्युनिटी है वो भी काफी अच्छी, आई कैन सी द चैट एज वेल जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो आपने मुझसे तो पूछ लिया यहाँ पे कि हमारे फेवरेट को, मेरे फेवरेट क्रिएटर्स कौन से। मैं एक बार चैट से जरूर पूछना चाहूंगा कि उनके फेवरेट क्रिएटर्स आज कौन से हैं, वो कौन से क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कौन से मेन प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको नजर आएंगे। बिकॉज एक्शन तो होने वाला है काफी ज्यादा, एंड आई बिलीव कि आज आपको क्लियरली दिखेगा कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं बहुत सीरियस खेलने वाले हैं। डेफिनेटली, एंड चैट में जरूर बताना कि तुम कौन सा क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। देयर वर अ कपल ऑफ क्रिएटर्स जिन्होंने हमको कल भी ज्वाइन करा था, एंड वन ऑफ देम वाज सिगार वाइटी। कल मैंने उनके बारे में बात करा था, बट ही इज आल्सो एन ओजी। उन्होंने भी काफी फोर्टनाइट खेली है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गेट दैट लकी यस्टरडे एंड ही डिड डाई on all the matches in early games, so उनका end game देखने को नहीं मिला। So अगर वो survive करे हैं कल के अपने qualification and आज भी उनको देखने को मिलता है, I'm pretty sure he is going to do much better, so I'm really excited to see how he's going to do. वेल एब्सोल्युटली। आई मीन प्रियांशु पावा यहाँ पे पूछ रहे हैं कैन आई पार्टिसिपेट टुडे। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा प्रियांशु, अभी तो नहीं, बट अगला टूर्नामेंट जैसे ही आता है आप बस सारे सोशल्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगला टूर्नामेंट जैसे आएगा आपको वहाँ पे न्यूज आएगी, रजिस्टर कीजिएगा अगली बार। एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट टूर्नामेंट एज वेल, एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू एनवीडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस अमेजिंग इवेंट फोर्टनाइट के लिए। बिकॉज कल मैं देख रहा था शांशु, आप भी कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि भारत में फोर्टनाइट थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा एक्सपैंड करे, एंड आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप टुवर्ड्स इट। 110% आई टोटली एग्री। क्योंकि मैं इसके बारे में कल जैसे बात कर रहा था कि अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर स्टिल रियली इन्वेस्टेड इन दिस गेम। वो हर रोज अपनी मेहनत लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राइंग टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स इन दिस कम्युनिटी। एंड मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि दिस टूर्नामेंट इज डेफिनेटली रियली गुड वे फॉर देम टू get noticed by the community, noticed by the people who are taking जिनकी ऑर्ग्स हैं, ताकि वो उनको टीम्स में ले सके and give them a bigger platform. So yeah, Nvidia ने ये बहुत बड़ा अच्छा काम करा है, ये टूर्नामेंट को पूरा होस्ट करके, ऑर्गेनाइज करके। इनका तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मेरी फेवरेट गेम एटलीस्ट फोर्टनाइट को इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, स्पेशली इंडिया में। थैंक यू सो मच Nvidia। एंड आई एम प्रीटी श्योर चैट में काफी सारे लोग भी होंगे जो Nvidia से काफी ज्यादा थैंकफुल होंगे। मेरे को बताओ, अभी तक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द क्रिएटर्स बाय द वे गाइस। अपना चैट में बता तो रहे यार, व्हिच क्रिएटर यू मोस्ट एक्साइटेड फॉर? एब्सोल्युटली, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यहाँ पे चैट काफी ज्यादा बातें आपस में भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले अगली बार टूर्नामेंट खेलने का। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, आपको भी मौका जरूर मिलेगा जैसे ही अगला ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट आता है फोर्टनाइट का। एनवीडिया नॉट ओनली फोर्टनाइट, लाइक एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड नहीं होते तो शायद हम बाकी गेम्स भी ना खेल पाते। तो ह्यूज शाउट आउट टू एनवीडिया एंड देयर टेक्नोलॉजी एज वेल फॉर क्रिएटिंग दोज अमेजिंग ग्राफिक कार्ड एंड चिपसेट्स। साथ ही साथ जैसा कि हमने बात करी, एनवीडिया इज अ इन्वेंशन कंपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते रहते हैं। तो आगे फ्यूचर के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या आने वाला है एनवीडिया की तरफ से। सेम, एंड अभी मैंने जैसे उनका लॉन्च देखा फॉर द 40 सीरीज ग्राफिक कार्ड, इट वाज सो गुड, स्पेशली बिकॉज उन्होंने जो अपना स्पेक्स लिस्ट बताया
compared to 3080, 40 series, or sorry, 30 series, 40 series is so much better. You get twice the RT cores, right, जिससे रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. I'm sorry, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कोर्स थोड़े से बड़े हैं. एंड उसके अलावा हमारे पास टेंसर कोर ज़्यादा है उसमें, एंड द प्रोसेसिंग पावर इज जस्ट कम्प्लीटली क्रेजी. इट कैन रन एनी द गेम जो तुम भी उस पर चलाओगे, and you're going to get the most FPS at the best setting. So definitely 40 series is definitely जान है मेरी. I wish मैं जितनी जल्दी हो सके मैं लेने की कोशिश करूंगा वो. And Well, absolutely. I Spiro, if think you a don't lot of mind me people are asking, saving. Yeah. कि आप अभी कौन सा GPU यूज कर रहे हो? Well, to be honest, it is quite awkward. But in this PC, currently, if you ask me, I'm getting embarrassed because I don't know which GPU I'm using right now. This PC is provided by my company, but I have a PC at home and I'm using, I think, a little 20 generation Nvidia GPU. I'm yet to upgrade to the 40 or the 31, but that works as well. 2060 I'm using there, I think, and it is perfect. It is actually quite good. Yeah, it is. It definitely is. I remember जब 20 सीरीज पहले पहले आई थी and RTX की पूरी बात जब छिड़ी थी, right? Because that was the first graphic card जिसमें RTX आया था, and everyone just went totally crazy for it. I'm still also using a little older GPU. तभी मेरे को भी अभी upgrade करना. I'm using a 1660 Ti. So hopefully soon. Hopefully. Right? Well, And I see a lot of absolutely. players in the chat जो हमारे साथ कल खेले थे, right? Sorry to cut you right there. तो there's a lot of players जैसे हमारे Falcon W keys हैं, we even have Cytec. So good luck to all of you guys. ठीक है, अच्छा अच्छा काम करना and अच्छी placement लेके आओ तुम सब, and हमको अच्छा अच्छा गेम प्ले दिखाओ so we can cast it and have fun. फन तो आज होने वाला, एक्साइटमेंट जरूर रहेगी आज के मैचेस के अंदर, बिकॉज जब भी प्रोफेशनल प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स साथ में मिलते हैं ना, तो आपको क्लियरली देखने को मिलता है कि जो हमारे स्ट्रीमर्स हैं, भारत के जो क्रिएटर्स हैं, वो कितने ज्यादा वैल्यू लाते हैं, क्योंकि उनका गेम सेंस भी, उनका गेम स्टाइल काफी अच्छा है और डेवलप हो चुका है मल्टीपल गेम्स खेलते खेलते पिछले कुछ समय में. उनकी स्ट्रीम्स एंटरटेनिंग होती हैं और मेरे ख्याल से आज जो वो कंपेटिटिव नेचर दिखाने वाले हैं वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा. यू हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन नाउ सांशु, के आपको कौन से क्रिएटर्स लगते हैं कि आज वो अलग लेवल पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं? मैंने ऑलरेडी बात करी है सिगार वाइटी की, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि इफ ही इज प्लेइंग टुडे और नॉट, बट अपार्ट फ्रॉम हिम I'm really excited about Bloodline actually. अगर आपको पता हो, he plays a lot of RP and Valorant, so I think उनका aim is already pretty good. So maybe his duo can do pretty good as well. क्योंकि since there is no building, right? You don't need to have a lot of mechanical knowledge regarding the game. You just have to aim and shoot and make sure your rotations are perfect. So let's hope he does good. And the second creator I'm really excited for is actually Mellow Hirsch. Because वो भी काफी टाइम से Fortnite खेल रहे हैं, and I have to say he is pretty decent at the game. And so yeah, इन दोनों creators के लिए I'm really excited. And as I can see from the list, Cigar is on the list, so yeah, really excited to see him as well. Well, absolutely, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है जैसे ही आपने उनका नाम पढ़ा यहाँ पे. दैट इज क्वाइट गुड. मजा आएगा देखने में वो कैसा खेलते हैं. बट जैसा कि आपने बताया, बिल्डिंग आपको नहीं बनानी है. इट्स क्वाइट बेसिक, राइट? आई थिंक जोन टू जोन आगे बढ़ना, और सबसे पहली चीज जहां पे आप ड्रॉप लेंगे वहां पे अच्छी खासी लूट अगर आपको मिल जाती है, तो दैट इज समथिंग जो एक गेम डिफाइनिंग फैक्टर साबित हो सकता है, स्पेशली इस तरह के मोड के अंदर. देखते हैं कौन से वो क्रिएटर्स रहेंगे, आप कौन से वो प्रोफेशनल प्लेयर्स रहेंगे जिनको लूट अच्छी मिलती है, जिनको अपने फेवरेट ड्रॉप से जाने का मौका मिलता है, बिकॉज क्या पता आपके ड्रॉप पे कोई और भी आ सकता है. डेफिनेटली. एंड यहाँ पर अगर एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, राइट, अगर कोई भी हमारी स्ट्रीम देख रहा है एंड आज खेलने वाला है हमारे साथ, स्टार्टिंग में डू नॉट गो फॉर एनी कंटेस्टेड प्लेस. लाइक जैसे आपने बोला, लूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड अगर आप किसी के साथ कंटेस्ट करते हो एक लैंडिंग स्पॉट, इट्स totally on RNG. If you do get a better weapon than him, then you might be able to kill him. But agar nahi milta, you will be stuck in a very tough situation where you just have to run away. So it's definitely not advisable to land at a contested spot. What I usually used to do when I used to play tournaments in Fortnite back in the day was I used to just glide in the air for a while and see kaun sa area khali hai, right? And then I used to go there just so मेरा start game सही रहे, because I believe कि start game अगर अच्छा जाए, early game अगर अच्छी जाए, तो you get a lot of confidence for the mid game and the end game.
दैट्स राइट? ट्रू एक्चुअली। आई मीन अगर आपको लूट अच्छी मिल जाती है तो बेसिकली यू हैव द कॉन्फिडेंस राइट कि आप और बेहतर खेल सकते हैं और फाइट भी ले सकते हैं, आप अग्रेसिव भी खेल सकते हैं अगर आपके पास लूट अच्छी आ जाती है तो। कल भी हमने देखा कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर काफी सारे प्लेयर्स शुरुआत में ही दे वर गेटिंग काउंटर, दे वर गेटिंग टेकन डाउन एंड काफी सारे क्रिएटर्स को या तो बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था या दे वर यूजिंग द जंप पैड्स, वो बस बचने की कोशिश कर रहे थे, दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक और चीज मैंने देखी कि कई सारे प्लेयर्स नॉक होने के बावजूद उनको छोड़ देते हैं, वो किल कंफर्म करने जाते नहीं है। आई वुड से कि यू हैव टू कंफर्म योर किल्स टुडे बिकॉज कल काफी सारे प्लेयर्स बच गए थे, रिवाइव हो गए थे। ट्रू, एंड हम उसके बारे में बात भी कर रहे थे इनफैक्ट बूम एंड आई, कि काफी सारे लोग ऐसे ही रिवाइव हो जा रहे हैं बिकॉज प्लेयर्स आर रियली स्मार्ट, राइट? उनको पता है अगर उनका टीममेट नॉक्ड है, इट्स नॉट वर्थ इट टू गो फॉर अ 1v2 फाइट एंड दे जस्ट गो एंड हाइड सम प्लेस, एंड उनका जो नॉक्ड ओपोनेंट है, जो नॉक टीममेट है, वो भी जाके छुप जाता है, एंड एज सुन एज द ओपोनेंट्स जस्ट गिव अप एंड दे लाइक अब मैं और नहीं ढूंढ रहा इसको, मैं जा रहा हूँ जोन में, तो दे गेट रियली स्नीकी एंड गो रिवाइव देयर टीममेट. So yeah, they definitely need to finish your kills today, guys. Keep that in mind. And also, yeah, so I wanted to talk about something very specific in this game. There's a place called Herald Sanctum. अगर आपको पता हो उसके बारे में स्पेरो, तो वहां पर क्या है, there's a boss, right, which has a lot of HP. It's an NPC, and but अगर आपने उसको kill ले ली उस पे, right, it will drop a certain weapon that's called Herald's Burst Rifle, which is really overpowered. राइट? सो मैंने आई डोंट थिंक कल नहीं तो परसों किसी के पास भी वो देखी है पिछले 2 दिनों में, which is not surprising because Herald Sanctum does not have anything else in terms of loot. It barely has any chest, so that is the only advantage point उधर जाने का कि you get that weapon. So I really hope आज उसका थोड़ा सा और गेम प्ले देखने को मिले. Maybe players can rotate mid game and try to kill that NPC. But yeah, let's see what happens. आई वुड लव टू सी दैट। आई मीन मजा आएगा अगर कोई प्लेयर वहां पे जाता है उस वेपन को रिट्रीव करने के लिए, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लस टाइमिंग का भी खेल रह जाता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है जोन के अंदर जाने के लिए, नेक्स्ट जोन कहाँ बन रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कहाँ से रोटेट करके कौन से एंगल को होल्ड करना चाहते हैं। कल हमने देखा बहुत सारे प्लेयर्स टॉप ग्राउंड हायर ग्राउंड पे जाके बस वेट कर रहे थे, कैंप कर रहे थे कि कोई प्लेयर नीचे से आए। फर्स्ट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन कट ऑफ रोटेशंस क्लियरली, अगर आपके पास एक एडवांटेज पॉइंट है तो शायद आज भी प्लेयर्स वही करने की कोशिश करेंगे, एक हायर ग्राउंड को पकड़ेंगे लूट फिनिश करने के बाद, एंड here you go, as I was saying, I was talking looking about forward high to ground, watch, yeah, talking about high ground. जी हाइपर को देखना चाहता था मैं, तो फाइनली वो भी यहाँ पे हैं एंड देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन आज करेंगे। Yeah, definitely. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि they are going into one of the snowy areas. I believe this is near Rave Cave. And yeah, this is a really good spot to land, but the only problem with this spot is it is quite contested at the start game. So let's see उनका gameplay कैसे रहता है. Well, absolutely, yeah. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आप नहीं जाना चाहते एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स हों, बट यहाँ पे हाइपर का एक्सपीरियंस काम आएगा फोर्टनाइट खेलने का। मैक्वीन की बात की जाए वो भी जा रही हैं एक पोजीशन के अंदर, देखते हैं वो कहाँ पे लैंड करना पसंद करती हैं। शिमरिंग के ऊपर से आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए अभी के लिए नजर आ रहे हैं। सिक वॉरियर को देखना चाहूंगा, आई मीन लेट्स सी व्हाट ही कैन डू, बट शिनोबी की अगर बात की जाए ऑलरेडी वो यहाँ पे लैंड कर चुके हैं, लूट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं बताना चाहूंगा टिल्टेड टावर्स एक ऐसी जगह जहां पर किसी टाइम पे ये सबसे ज्यादा ट्राई हार्ड जगह होती थी पूरे फोर्टनाइट मैप की. आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पर 3 डुओस तो मेरे को दिख ही रहे हैं मिनी मैप पे, प्लस एक उड़ के भी आ रहा है सोलो. सो ये प्लेस बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होने वाली है एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई राइट अवे बिफोर द फर्स्ट जोन इवन स्टार्ट्स मूविंग. So yeah, let's see how it goes. Shinobi की जैसे बात कर रहे थे हम, they have already found 2 chrome splashes and 2 launch pads, which is really crucial for the end game क्योंकि rotation में बहुत ज़्यादा help करते हैं ये. Well, absolutely, काम तो जरूर आएंगे and I think he got one ranger assault rifle as well. देखते हैं कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा. प्राइम शॉटगन भी उनके पास यहाँ पे आ चुकी है. सल्बाटिक जिनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ग्लोबली स्पोर्ट्स के ओनर, वन ऑफ द को ओनर सुरेंद्र सिन्हा, जैसा कि मैंने कहा बहुत गेम्स खेलते हैं, इनको सारी गेम्स आती हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है, काफ़ी एंजॉय भी करते हैं और बहुत कंपेटिटिव भी हैं. टीएफएक्स के रेहान की अगर यहाँ पे बात की जाए तो फाइट यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. उन्होंने प्लेयर को नॉक करा, गेम स्ट्रेंज को नॉक करके फिनिश भी ऑलरेडी कर दिया गया. एंड जैसे ही आप शील्ड स्प्लैशेस की बात कर रहे थे, उनका भी इस्तेमाल हमें देखने को मिला यहाँ.
बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आकर्ष और रिहान हमारे पहले दोनों दिन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव डुओ अगर मैं किसी को बोलूंगा वो यही होंगे। एंड साइटेक को काफी ज्यादा डैमेज देते हुए यहाँ पर आई थिंक नॉक हो चुके हैं साइटेक, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट फॉर हिम एंड टेकिंग सम फॉल डैमेज। उन्होंने देखा नहीं, यहाँ पर नीचे जा नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, वो फॉल डैमेज वो रिकवर कर सकता है काफी इजीली एक मेड किट के साथ। बैटिकल पे वापस आते हुए यहाँ पर आई थिंक फॉर स्टार्ट गेम, एंड यहाँ पे सेम बात वही हो रही है कि ये शॉटगन नहीं प्रेफर कर रहे लेना, इंस्टेड दे आर गोइंग फॉर 2 ARs। या एब्सोल्युटली, स्ट्रैटेजी की बात है, हमने पहले बात करी है, हम डैम श्योर के यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनी बना के आए हैं और ऑलरेडी वी हैव सीन सो मच एक्शन। अभी तो मैच शुरू हुआ है और पहले ही हम देख चुके हैं काफी ज्यादा प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं और उनको फिनिश भी करा जा रहा है। थोड़ा सा एज पे उतरे हुए हैं, मैं देखना चाहूंगा कितनी जल्दी यहाँ पे आगे बढ़ते नजर आएंगे। अभी भी समय बहुत ज्यादा है इनके पास। वहीं अगर बात की जाए ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की, आई थिंक उन ठान के आए हैं कि आज वैल्यू तो निकालेंगे, बट साहिल को स्पॉट किया मेलोहर्ष वाइटी ने। शॉट देने की कोशिश करी जरूर है, बट ज्यादा शॉट कनेक्शन अभी के लिए मिले नहीं उनको। एंड आई थिंक उनको अपने टीममेट के पास जाना चाहिए बिकॉज उनका टीममेट ऑलरेडी नॉक हो चुका है एंड दिस फाइट वो पक्का हारने वाले हैं बिकॉज 1v2 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है करना। जिप लाइन पे यू गेट रियली वनरेबल क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो बिना कोई कवर के, एंड ओपोनेंट्स ने इसी चीज की एडवांटेज लेते हुए उनको पूरा स्प्रे कर दिया एंड ही गेट्स नॉक्ड आउट। Well, absolutely. It was unfortunate, but वो शुरुआत में ना फाइट ज्यादा लेना चाहते नहीं थे, वो छुप रहे थे बार बार, बट जैसे उनका साथी नॉक हुआ तो उनको जाना पड़ा और इतना ज्यादा फायदा उनको मिला नहीं इस चीज का। अरिप्सो वाइटी की बात कीजिए, अभी अभी अपने साथी ब्लड लाइन वाइटी को उन्होंने रिवाइवल दिया है और अभी भी खतरे की घंटी बज रही है बिकॉज अभी ज्यादा दूर निकले नहीं है। दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस बिकॉज मुकाबला करने के लिए अपोनेंट्स पास में ही है और सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल टीम्स मुझे देखने को मिलती है मैप के ऊपर। Yep, condos में काफी ज्यादा contested है, which is really surprised to see because I usually only see couple of duos landing there, but I could उधर मेरे को देखने को मिल रहा था कि कम से कम 3 तो हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ऐश, यहाँ पर उन्होंने एक डुओ स्पॉट कर लिया अपने सामने बट उनको शूट नहीं कर रहे। ही इज जस्ट बीइंग वेरी स्नीकी। हियर कम्स द स्प्रे एंड डैमेज तो काफी दे दिया है उनको, बट उन्होंने काफी जल्दी शॉक वेव यूज करके ग्रीडी वहां सिचुएशन से निकल चुके हैं। यहाँ पर आपकी फेवरेट ब्लू गन प्ले में देखने को मिल रही है। Well, absolutely, अच्छा लगा उसको देख के, बट कहीं ना कहीं ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश करी आश्रय ने। थोड़ा सा और बेहतर एम कर सकते थे, अगर एम अच्छा करते तो शायद वो किल उनको मिल भी जाता, बट अभी भी अटैक करने के मूड में ही नजर आ रहे हैं आगे बढ़ते हुए। 50 आर्मर है इनके पास, देखते हैं कितना ज्यादा फायदा उनको मिलेगा। प्राइम शॉटगन, जैसा कि हमने पहले बात करी कि पहला जो शॉट है वो बहुत डैमेज दे सकता है आपको, तो क्लोज जाके तो पहला शॉट देना चाहते हैं, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, आई मीन ही गॉट नॉक्ड देयर। मैं वो ही देख रहा था and I was so surprised। उसने एग्जिट करने की कोशिश करी वो सिचुएशन यूजिंग अ लॉन्च पैड, बट दैट लॉन्च पैड didn't work। he tried to jump on it and वो पूरा फेल हो गया। यहाँ पे ब्लड लाइन पूरे वनरेबल है हवा में, उन्होंने लॉन्च पैड किया है अभी, बट लकी फॉर हिम उनके ओपोनेंट्स ने मिस कर दिया जो शॉट्स, जो लेजर आ रहा था उनपे। यहाँ पर सिक वॉरियर की जैसे हम बात कर रहे थे, ही इज प्लेइंग विद मिंटी गैल एंड इन्होंने जो लोड आउट चूज करा है दैट इज अ शॉटगन विद एन AR एंड काफी ज्यादा शील्ड है इनके पास विद 2 शॉक वेव्स व्हिच इज वेरी क्रूशियल फॉर रोटेशन एंड स्पेशली अगर कोई आप फाइट में फंस जाओ एंड यू हैव टू गेट आउट द सिचुएशन। जैसे हमने देखा शॉक वेव्स कितने ज्यादा काम आ सकते हैं। Well, absolutely, दोनों ही वेपन्स उन्होंने इवोक्रोम वर्जन के लिए हुए हैं, इवोक्रोम शॉटगन एंड इवोक्रोम राइफल। बट वहीं सल्बाटिक की बात की जाए, उन्होंने अपोनेंट्स को स्पॉट किया, शिनोबी के ऊपर शॉट देने की कोशिश करी जरूर थी बट कोई डैमेज वो भी के लिए दे नहीं पाए। 40 शील्ड है इनके पास, सो एचपी आपको देखने को जरूर मिलती है। कुछ ज्यादा लूट देखने को मिल नहीं रही इनकी इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे। मैं वही देख रहा था, आई बिलीव ये इसलिए है क्योंकि टिल्टेड टावर्स में वैसे लूट की कमी नहीं है, बट इतने ज्यादा लोग जब एक ही जगह पे लैंड करेंगे ऑफ कोर्स लूट डिवाइड होगा एंड आपको वो स्पेसिफिक लूट नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप जो आप ढूंढ रहे होगे राइट फॉर एंड गेम। साल्वा को टेक डाउन किया गया, बहुत कोशिश करी उन्होंने बच के निकलने की, पानी के अंदर छलांग लगाई जरूर थी बट कोई फायदा उसका हुआ नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो आज मैं थोड़ा सा ना स्नाइपिंग एक्शन भी जरूर देखना चाहूंगा। अभी के लिए थोड़ा सा जोन का डैमेज खाते हुए सिजल 69 वाईटी वो अपने जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक स्नाइपर है उनके पास, आई वुड लव टू सी सम स्नाइपिंग एक्शन देयर। यप डेफिनेटली, एंड हमने कल आई थिंक एक स्नाइपर का शॉट देखा था व्हिच वाज रियली रियली नाइस। द गाय वाज हाइडिंग ऑन अ पोर्टा बंकर एंड ही वाज टोटली अनअवेयर दैट उसके बिल्कुल माथे पे एक क्रॉस से सेट है एंड जैसे ही वेंट फॉर द पीक ही वाज टेकन डाउन। So I believe some action हम यहाँ पर भी आज देख सकते हैं। The sniping action usually come around the mid game and the end game जब players थोड़े settle होना शुरू होते हैं and they find a good place to hang around
to wait for the zone to close in. So I think उस टाइम के आसपास आपको जरूर मिलेगा आपका एक्शन. well, there is a comment in the chat जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, एक सज्जन है वो कह रहे हैं आई लव गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, इजी किल्स मिलते हैं वहां पे. तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए यार, ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो आप भी जा सकते हैं भीड़ भड़ाके वाले एरिया पे और आप भी किल्स निकाल सकते हैं. बट सलबातेक अभी भी अपोनेंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा ओपन एरिया में जरूर यहाँ पे है बट कोई भी प्लेयर इनके सामने अभी के लिए इनको दिखा नहीं है. देखते हैं कितनी और अच्छी लूट यहाँ पे एकत्रित वो कर सकते हैं. Let's see what's gonna happen. RX Drax की बात की जाए, इनके पास एक पंपकिन लॉन्चर जरूर है, देखना चाहूंगा उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. पंपकिन लॉन्चर मैं तो बोल ही रहा था कल कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड वेपन्स अभी जो गेम में है, अपार्ट फ्रॉम गू लॉन्चर ऑफ कोर्स. एंड मैंने कल देखा उन्होंने प्लेयर्स ने शॉटगन नहीं कैरी करी, इंस्टेड दे वेंट फॉर अ रॉकेट लॉन्चर. एंड एज सून एज द टीममेट और द ओपोनेंट केम क्लोजर टू हिम, ही जस्ट यूज्ड द रॉकेट लॉन्चर ऑन हिमसेल्फ. क्योंकि शॉटगन का क्या है, इट डज सम डैमेज बट वो डैमेज जो है वो डिपेंड करता है कितनी पैलेट्स कनेक्ट हुई हैं, right? But RPG is just guaranteed 110, 120 damage. So that was a really unique strategy, which I got to see yesterday. That's a good strategy, but वहीं प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं. अगर अभी 44 और सकून 44 की बात की जाए, इस पूरी टीम को यहाँ पे वाइप आउट कर दिया गया है, which is surprising because कल अच्छा खेल रहे थे ये दोनों ही प्लेयर्स. शिनोबी के पास वापस चलते हैं. शिनोबी और विलन अभी के लिए लूट डिसेंट इनको मिल चुकी है एंड अभी भी टिल्टेड टावर्स में ही है. यहाँ पे मल्टीपल टीम्स अभी भी हैं, तो हो सकता है कि काफी जल्दी आपको एक फाइट देखने को मिल सकती है. भाई अगर मोहक मल्होत्रा की बात की जाए, ये तो अभी उड़ के वापस आए हैं. देखते हैं जोन के अंदर कितनी और जल्दी जा पाएंगे. एंड यहाँ पे बलून यूज करने की कोशिश है. एंड यहाँ पर हम फाइट देख पा रहे हैं शिनोबी के बीच में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं. उन्होंने टीममेट खत्म भी कर दिया है, जो ओपन है सॉरी ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है. एंड ये टिल्टेड टावर्स में ही फाइट हुई है. तो आई बिलीव ये गन शॉट सुन के बाकी जो डुओ है वो भी यहाँ पर इनके पास जल्दी आ जाएंगे, इनको अटैक करने की कोशिश करेंगे. एंड आई बिलीव जो दूसरा डुओ है टिल्टेड में, दैट इज द GE डुओ. सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग कैसा रहता है वो मैच. देखते हैं अगर वो मैच होता है तो मज़ा बहुत आएगा. वहीं अगर साहिल की अगर बात की जाए, बस इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा हील अपने आप को करते हुए. शील्ड थोड़ी सी मैक्स करेंगे, उसके बाद वो भी अब आगे जाना चाहेंगे. सनाप स्टेशन में वो यहाँ पे जरूर है, बट टैक्स बोर्ड की अगर बात की जाए, कैंप किया जा रहा है यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं अपोनेंट के आने का. और जैसे ही घर में आएंगे तो मेहमान नवाजी तो करी जाएगी. बट अब इनके पास है शॉटगन्स एंड शॉटगन के साथ ये डैमेज दे सकते हैं. हियर यू गो, मिंटी कल को यहाँ पर नॉक करा जाता है एंड सिक वॉरियर को भी खत्म करा जाएगा. जस्ट ड्यूओ को देखने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, उनको शॉटगन से स्वागत करा गया घर के अंदर. ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था सिक वॉरियर एंड उनके डुओ मिंटी गर्ल के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक उनको पता था कि इस घर में कोई प्लेयर है. दीज गाइज वर बीइंग दैट स्नीकी एंड दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट. बट कमिंग टू कैक्सो नाउ, यहाँ पर कार में बोटिंग करी जा रही है एंड ये कार अटक गई. ये कार ने गिव अप कर दिया मिड फाइट, एंड विच इज एक्चुअली आई थिंक अ गुड थिंग, क्योंकि अगर कैक्सो उनको फॉलो करते रहते, राइट, दैट बैटल कुड हैव गॉन ईदर वे एंड कुड हैव एंडेड उनकी डेथ में. And coming to Cigar Whitey, whom really excited for, let's see इनकी फाइट कैसे रहती है. They have a decent loadout as well. उनके पास रोटेशन है, उनके पास शील्ड्स हैं, एंड उनके टीममेट के पास भी काफी अच्छी लूट है. यहाँ पर हम देख सकते हैं वापस नो शॉटगन लोडाउट जो ये यूज कर रहे हैं. इट्स अ गुड वन. आई मीन रुचिर उनके साथ खेल रहे हैं, ये भी काफी अच्छे स्ट्रीमर हैं, काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं. बट अभी के लिए इन्होंने एक टीम को ढूंढा, चेस करने की कोशिश कहीं ना कहीं वो कर जरूर रहे थे. बट वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए सेंस रॉक एंड रोला की, वो भी आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने भी शील्ड अपनी पुट ऑफ कर रखी है. देखते हैं वो कहाँ जाके थमते हैं, कौन से पोजीशन को वो यहाँ पे होल्ड करना पसंद करेंगे. अभी तो बस अपोनेंट्स को ढूंढने की कोशिश मेरे ख्याल से कर रहे हैं जिस पे. बट वहीं अगर टैक्स स्पॉट की बात की जाए, वो यहाँ पे नॉक पड़े हैं. क्रीमबॉट वो नीचे जाते हुए बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. यहाँ पे उन्होंने भी अपनी प्राइम शॉट निकाली जरूर है. पहला शॉट देके डैमेज उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे दिया है, लेकिन उनकी एचपी भी बहुत कम, और इसी के साथ उनकी टीम को भी समाप्त करा जाएगा. टैक्स स्पॉट इज नो लॉन्गर देयर. टैक्स बॉट ने मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती जो करी है, ही वेंट इनटू अ कॉर्नर्ड प्लेस जहाँ पे वो बिल्कुल एस्केप ही नहीं कर सकते. एंड यहाँ पर इस फाइट की बात करते हैं. यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल्कुल ही कार अंदर चढ़ा दी उस पे बुश पे, एंड आई डोंट थिंक उनको पता था कि बुश में बंदे बैठे हैं. सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर बोथ ऑफ देम, right? And those players are already eliminated, but unfortunately these guys are under a lot of pressure from a third team, a third duo,
एंड लुक एट हाउ क्राउडेड दिस प्लेस इज, क्योंकि सब आ रहे हैं जोन में रोटेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं दूसरे टीममेट्स दूसरे ओपोनेंट्स का आने का भी, ताकि उनको मे बी दे कैन गेट सम शॉट्स ऑफ देम एंड पोटेंशियली गेट अ किल। Well, look at the number of people who are still alive. काफी ज्यादा संख्या में लोग अभी बचे हुए हैं और ये प्लेयर्स को जो जोन के बाहर हैं अब तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा। कार्तिक की अगर बात की जाए तो लॉन्ग रेंज से उनको शॉट्स आ जरूरत है, रिवाइव करते हुए अब अपने प्लेयर को नजर आएंगे। देखते हैं कितनी जल्दी वो ये कर सकते हैं। वही अगर ड्रैक्स की अगर बात की जाए वो भी अपने अपोनेंट को ढूंढने की कोशिश अभी कर रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी वो ढूंढ पाएंगे। आई कैन हियर सम शॉट्स एज वेल, तो काफी ज्यादा फाइट्स काफी जल्दी आपको इलाप्स होती नजर आएंगी। बिल्कुल, एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जैसे ऑलरेडी अभी 40 डुओस 40 प्लेयर्स तो अलाइव हैं एंड अभी थर्ड जोन जो है क्लोज होने वाला शुरू होने वाला है एंड सबैटिकल यहाँ पर गेट्स नॉक्ड बाय नोवा व्हिच इज रियली अनफॉर्चुनेट। Suki is trying his best and he takes out Shiz. Really good aim by him. मतलब मौका मिलेगा यहाँ पे रिवाइव करने का, बट मैं देखना चाहूंगा क्या वो आगे आके अटैक करना पसंद करेंगे। एक बंकर बनाया गया है, उसके अंदर जाके रिवाइव किया जा रहा है अपने प्लेयर को, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी। बट कहीं ना कहीं सल्पाटेक को मेरे ख्याल से रिवाइव नहीं मिल सकता। सुकी आई थिंक ही डिसाइडेड द राइट थिंग कि वहां पे उन्होंने जंप पैड का इस्तेमाल करके थोड़ा पीछे चले गए, विच वाज अ गुड थिंग, बट ही इज कमिंग बैक एंड ही इज फीलिंग अ सुपर सैयन, बट गोकू का ज्यादा सही इस्तेमाल नहीं होगा वहां पे एंड आई थिंक कर्जी वुड मैनेज टू वाइप आउट टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। Yep, that is unfortunate. But Querzi ने and उसके टीममेट ने definitely काफी अच्छे से वो fight ली and he knew exactly when not to go and push when his teammate was knocked. उन्होंने कल्ले जाके Suki को push नहीं करा वहाँ पे. In fact, he waited, he used the shield bubbles and revived his teammate, which is definitely a good decision. And यहाँ पे बात करते हैं हम वारी की, who has a really good loadout. All he needs is some rotation and he should be really set for end game. Kozar games के साथ ये खेल रहे हैं अपने duo के साथ. इनके already 2 kills हैं, which is very interesting. This is good. I mean, maybe freeze की अगर बात की जाए, इनके पास भी 2 किल आपको देखने को मिलते हैं। पायरो के पास भी 2 किल हैं। देखते हैं और कितनी वैल्यू निकालेंगे। जोन श्रिंक होने वाला है काफी जल्दी, तो काफी रोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने एक वैंटेज पॉइंट बनाया जरूर है और उसी वैंटेज पॉइंट से अपोनेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट शॉट्स आ जरूर रहे हैं। आई वुड लव टू सी जोन भी यहाँ पे बन चुका है। ऑलरेडी यू कैन सी ऑन द मिनी मैप के बहुत ज्यादा टीम्स रोटेशन करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर का पूरा इस्तेमाल करा जा रहा है पायरो के द्वारा एंड ही गोज डाउन अपनी थोड़ी शील्ड यूज करने के। गुजार ने क्या शॉक वेव करके बिल्कुल मुंह पे आरपीजी चलाई है। दैट डेफिनेटली डिड अ लॉट ऑफ डैमेज एंड अनदर आरपीजी कमिंग इन। वाओ, दोस प्लेस क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में स्पेरो? इट वाज अमेजिंग। आई मीन जितना आरपीजी डेंजरस होता है क्लोज रेंज में, उतना ही बेहतर इस्तेमाल वहां पे करते हुए नजर आए। बट हाइपर को अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, एचपी उनके पास नहीं है, लॉक तो करे जाएंगे इंडिया गेमर। आई थिंक इंडिया गेमर को अब कुछ ना कुछ मैजिक करना पड़ेगा अगर उनको रिवाइव करना है। शिनोबी वो भी आगे आ जरूर रहे हैं, कर्जी आगे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो फिनिश करना चाहेंगे इस खेल को। स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश, काफी अच्छा डैमेज, 1 एचपी बचा हुआ है कि इंडिया गेमर बाल बच के पीछे जाते हुए। एक्चुअली ही इज गॉट टेकन आउट इट सीम्स। यस, वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए एंड इंडिया गेम में डेफिनेटली बहुत वियर्ड सिचुएशन में फंस गए थे, जहां पर उनको पीछे से स्प्रे आ ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम दे आर फाइटिंग टेकिंग अ फाइट विद अनदर डुओ। सो उनके पास और कोई चारा नहीं था। ही ट्राइड हिज बेस्ट बट अल्टीमेटली जी हो गया उनके लिए। But I expect them to do better from the next game because Hyper and his duo India Gamer were one of the top 5 teams I would say in the last 2 days and they were definitely doing really good. नॉट अ गुड स्टार्ट, बट अभी भी बहुत ज्यादा मैचेस बचे हुए हैं यहाँ पे, तो वापसी करने की कोशिश वो जरूर करेंगे। इट्स वारी की अगर बात की जाए, एचपी बहुत कम है एंड कवर भी नहीं है इनके पास। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक और बुलेट एंड इट्स ओवर। यस, इट इज ओवर फॉर वारी। वो भी खत्म होते नजर आएंगे। नोवा शिनिट्स को यहाँ पे वो किल मिलता हुआ। अब सिर्फ 25 डुओज 25 टीम अलाइव रह चुके हैं यहाँ पर एंड आई थिंक साहिल उनका खुद का टीममेट है। यस, वो अपने टीममेट को ही गन से स्प्रे कर रहे हैं। वैसे मेरे को इससे याद आया, एक काफी यूनिक स्ट्रेटजी होती थी पहले जब बैक इन द C4 डेज। तो टीममेट्स क्या करते थे, अपने खुद के टीममेट्स पे C4 लगा देते थे एंड उनको एनिमी के पास भेज देते थे, फिर उसको एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि हम टीममेट्स को डैमेज नहीं कर सकते और एनिमी एक्सपेक्ट नहीं करता वो इतना पास आ रहा है, तो वो काफी डेंजरस सिचुएशन होती थी एंड आई बिलीव गू लॉन्चर के साथ भी वो कर सकते हैं सेम इफ दे ट्राई। वेल एब्सोल्युटली,
आई थिंक अभी के लिए तो वो जंप कर रहे थे, गलती से आगे आ गए, बट रिवाइवल किया जा रहा है हाई की तरफ से। यहाँ पर रिवाइवल देखते हैं कितनी जल्दी करा जाएगा। ओ माय गॉड, इट्स फायर पावर को रिवाइव कर दिया गया है एंड वो अभी के लिए अपने आप को हील करते नजर आएंगे। इट्स रियली क्रूशियल, आखिरी स्टेजेस में आप आ चुके हैं और स्पेशली अगर आप जोन के अंदर हैं तो अपने आप को बनाए रखिए इस गेम के अंदर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एंड यहाँ पर सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं जोन को क्लोज होने के लिए। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल आउटसाइड द जोन। उनको रोटेट अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार जोन क्लोज हो गया, जोन डैमेज 5th जोन में बहुत ज़्यादा होता है। प्लस और प्लेयर्स विल ऑलरेडी बी रेडी, क्योंकि उनको पता होगा कि बाहर से जोन से बंदे आएंगे, तो उनको स्प्रे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस करे दूसरे बंदों से। सो अभी देखते हैं इनका रोटेशन कैसे जा रहा है। यहाँ पर हम वायरस को ऑलरेडी देख सकते हैं, ही इज़ यूजिंग एज मेनी शील्ड बबल्स एज पॉसिबल ऑन हिज कार, ताकि वो सेफली रोटेट कर सके जोन में। Everyone is trying to do that only. I mean, सब आना चाहते हैं जोन के अंदर, बट गेट के सिनारियोज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए हाई की, ही इज रियली हाई एक्चुअली, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर आसमान में वो जा चुके हैं। बट अभी भी अगर रॉक एंड रोला की बात की जाए, शील्ड बबल का इस्तेमाल कर जरूर रहे हैं, बट मैं देखना चाहूंगा कितनी जल्दी उनके ऊपर अटैक किया जाता है। सिजल 69 YT वो भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, बट डैमेज काफी ज्यादा खा चुके हैं। आई थिंक साहिल के पास जो रॉकेट लॉन्चर है इस समय वो काफी ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि उनके पास एक वैंटेज पॉइंट भी है वहां पे। एंड यहाँ पर हर्ष गेट्स नॉक्ड आउट, इवन दो ही हैड अ शॉक वेव जो उन्होंने यूज नहीं करा, बट ही स्टिल गेट्स नॉक्ड आउट, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनका टीममेट अभी भी जिंदा है एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट दोस क्रूशियल प्लेसमेंट पॉइंट्स। यहाँ पर रॉक एंड रोला देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा आरपीजी यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ताकि थोड़े से एनिमीज़ को डैमेज दे सकें, नॉक कर सकें। अपने कार के पीछे कवर लिया हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट, स्पेशली अगर आपके पास पोटा बंकर जैसी कुछ चीज़ नहीं है। कार कैन हेल्प यू इन रोटेशन एज वेल एज प्रोवाइडिंग यू कवर। जी हाँ, हाइपर की अगर बात की जाए वो भी बस इंतजार कर रहे हैं, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज अपोनेंट टू कम इन। जोन बहुत छोटा बच चुका है, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल सर्वाइविंग देयर। रॉक एंड रोला की अगर बात की जाए, अनदर शील्ड वी कैन सी, रॉकेट लॉन्चर का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला है और अभी भी 12 उनके पास यहाँ पे रॉकेट्स बचे हुए हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर, एंड ही वुड मैनेज टू गेट द शॉट एज वेल। हाई को टेक डाउन कर दिया गया है, लग रहा है कि यही डुओ है जो जीत सकता है यहाँ पे। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, बट अगर आप मैप पे देखो, यहाँ पर हाई पर मैप के चारों पासे घूमी जा रहे हैं शॉकवेव के साथ, एंड उनका लास्ट का शॉकवेव काम नहीं आया। ही विल गेट टेकन आउट। यहाँ पे रॉक एंड रोलर पे वापस आते हैं, इनके पास अभी भी 10 एमओ बची आरपीजी में, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंड गेम में इतना ज़्यादा एमओ रहना पॉसिबल नहीं रहता। उन्होंने आरपीजी यूज करी, बट एंड डैमेज के साथ नॉक भी कर दिया एक प्लेयर को, एज इफ is the only one alive from that duo. He takes him out. Wow. And there are only 3 people left. It's a 1v1v1. Oh, it's actually a 2v1. It is a 2v1 और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेला जा रहा है रॉक एंड रोला की तरफ से, बट फाइनल किल भी निकालेंगे एंड here you go. जैसा कि हम दोनों ने ही प्रेडिक्ट किया था, रॉक एंड रोला एंड हिज टीममेट वीरूसेन, they managed to win this amazing game. कमाल का कंपटीशन देखने को मिला यहाँ पे, and I think it was brilliant, but since underscore rock and rolla, what a game from him. Definitely he did really good, and I have to say वो RPG definitely काफी काम आई, and I was actually very surprised उनके पास 10 RPG ammo in the end game when there are only 5 to 6 people alive बची हुई थी। I think उन्होंने काफी सारे dead players की loot इकट्ठी करी होगी, तभी उनके पास ammo बचा होगा, and वो RPG काफी काम आई end में। Well played by him। पहले गेम का हमारा विनर आ चुका है, जो विनिंग डुओ है, it is Rock and Rolla and his teammate Virus। Well played to both of them। यहाँ पर हमको काफी सारे क्रिएटर्स भी दिखे जिन्होंने काफी अच्छा खेला, आई थिंक फॉर द फर्स्ट गेम। अभी थोड़ा वार्म अप चल रहा होगा सेकंड गेम से, आई बिलीव दे विल गो एंड डू बेटर। सो आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, राइट, यू नो व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर वी सी सम एड्स। व्हाट डू यू थिंक स्पेरो? वेल एब्सोल्युटली, चलते हैं फटाफट से आज की तरफ। एड्स के बाद जब वापस आएंगे तो मिलेंगे अगले गेम्स में जितने क्रिएटर्स हैं उनसे भी, बट थोड़ी बात भी करेंगे गेम के बारे में। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एड्स फर्स्ट।
ऑल राइट, वी आर बैक एंड हमको अभी देखने को मिला एनवीडिया रिफ्लेक्स इन एक्शन। स्पीरो, आप थोड़ा सा बताना चाहोगे एनवीडिया रिफ्लेक्स के बारे में अपने ऑडियंस को? Well, it is a wonderful technology. First of all, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था मैं बाफल हो गया था जान के कि इतना ज़्यादा कुछ एडवांस हो चुका है। एनवीडिया, जैसे कि हमने पहले बात करी, इट्स अ इन्वेंशन कंपनी। लाइक नई नई टेक्नोलॉजी को वो इन्वेंट करते रहते हैं बार बार, एंड एनवीडिया रिफ्लेक्स इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आई मीन आई लव इट। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी गेम्स हैं आजकल के समय में जो एनवीडिया रिफ्लेक्स को सपोर्ट करती हैं। एनवीडिया रिफ्लेक्स क्या करता है, आई थिंक इट्स इन द नेम एज वेल, आपकी रिफ्लेक्स को बढ़ाता है क्योंकि आप बेहतर तरीके से स्मूथनेस आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप देख सकते हैं अपने अपोनेंट्स को, एंड जो लेटेंसी है, चाहे वो माउस की लेटेंसी हो चाहे आपके कीबोर्ड की लेटेंसी हो, उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। ट्रू, एंड हमारी जो गेम्स हैं उसको भी काफी स्मूथली रन करता है थैंक्स टू NVIDIA Reflex. It helps us so much, so I would definitely recommend you guys to try it out. A lot of games are supported by NVIDIA Reflex, so you should definitely go check out settings पे जाके क्या आपकी फेवरेट गेम जो है वो NVIDIA Reflex की उसमें ऑप्शन है कि नहीं, अगर है तो ऑन कर लो एंड उसका एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली ले पाओगे। प्लस एक और चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज, अगर आप सबको पता हो जो पीकर्स एडवांटेज होता है, राइट, वो काफी ज्यादा कम कर देता है ये गेम NVIDIA Reflex ऑफ कोर्स। तो वो कैसे? क्योंकि आप ओपोनेंट को एक सेकेंड नहीं तो जितना भी टाइम है वो पहले देख पाओगे क्योंकि आपकी लेटेंसी इतनी कम है। सो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड yep, so that was NVIDIA Reflex, and let's talk about the previous game that we just saw, Spiro. आपको इसमें से सबसे पहले कौन सा सबसे प्ले अच्छा लगा? देखिए, मुझे तो वही आखिरी सर्कल के अंदर जो रोक एंड रोला ने जो आरपीजी नेट का आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल किया ना, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जैसा कि आप बात कर रहे थे कि आखिरी स्टेज तक आपने काफी ज्यादा एमओ बचा के रखा है, एंड हमने पहले भी बात करी थी कि आप जितनी ज्यादा लूट करेंगे उस पर ज्यादा अपना ध्यान देंगे तो आखिरी में वही फायदा होगा, और वो हुआ। रोक एंड रोला ने डिस्ट्रॉय किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि 1 एचपी बचे हुए हैं एंड काफी जल्दी उनको खत्म करा जाएगा जब वो अपनी शील्ड से बाहर निकल के अटैक करने गए थे अपोनेंट को। बट बॉय ओ बॉय, दैट वाज अमेजिंग जिस तरह से वो अग्रेशन दिखाया और खत्म करा अपने अपोनेंट्स को। डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेल प्लेड था वो पूरा का पूरा मोमेंट, क्योंकि अगर आप आपको याद हो रॉक एंड रोला की जो बीच में सबसे पहले फाइट स्टार्ट हुई थी उनके लास्ट डुओ के साथ, ओपोनेंट्स के साथ, वो काफी ज्यादा क्लोज थी। रॉक एंड रोला वाज लेफ्ट ओनली ऑन 20 और समथिंग एचपी आई बिलीव, राइट? सो वेल प्लेड बाय बोथ ऑफ देम। बट मैं बात करना चाहूंगा जो क्रिएटर्स हमारे साथ ये हमारा पहला गेम खेले हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद हमने देखा द जीई डुओ, राइट, जो हमारे साथ टिल्टेड में उतरे थे। उनका आपको गेम प्ले एंड उनका प्ले स्टाइल आपको कैसा लगा स्पिरो? देखिए, दे वर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। काफी देर तक उन्होंने सरवाइव जरूर किया, एंड आई थिंक कमोइट इसराने एंड सल्बाटेक बोथ मैनेज टू गेट डिसेंट वैल्यू, डिसेंट लूट शुरुआत के अंदर। बट आखिरी में जब उनकी फाइट हुई थी तो इट वाज अ 2v1 सिचुएशन, राइट? सल्बाटेक को दूर से टेक डाउन कर दिया गया था, सो ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड इवन दो ही वाज वेयरिंग अ नाइस स्किन, गोकू की स्किन, मेरी फेवरेट स्किन, वो पहन के आए हुए थे, बट इट वाज नॉट इनफ क्योंकि इन अ 2v1 सिनेरियो इट इज नेवर गोइंग टू बी इनफ। उन्होंने एक डैमेज काफी ज्यादा दिया था, नॉक निकाला था, बट इन द एंड जब तक वो वापस आते, ऊपर से उन्होंने बाउंस पैड का इस्तेमाल किया था, लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया था, जब तक वो वापस आते तब तक रिवाइवल हो चुका था। That is very true, and it was definitely not a good situation जहाँ पे वो फंस गए थे। and जैसे आपने बोला 2v1 is a nasty scenario to be in because तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही कम हो जाते, स्पेशली इफ यू डोंट हैव स्टफ लाइक आरपीजी दैट कैन डू ग्रुप डैमेज दोनों को इकट्ठे। एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर क्रिएटर्स एज वेल। मैंने देखा यहाँ पर सिगार वाइटी सर्वाइव टिल दी मिड गेम एंड दी एंड गेम तक उन्होंने सर्वाइव कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली उनके डुओ थोड़े से पहले मर गए थे, बट स्टिल आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड आगे भी मैचेस में देखना चाहूंगा। बट कमिंग टू मेलो हर्ष, हमने उनको देखा स्टार्टिंग में दे पिक्ड अ फाइट एंड उनका टीममेट जो थे वो पहले जाकर नॉक हो गए थे, सो ही हैड नो अदर ऑप्शन टू गो एंड कमिट टू द फाइट एज वेल। सो I believe they could have done a little better job अगर वो कहीं non-contested area में land हुए होते। We could have probably seen them in the end game as well, but वो नहीं हो पाया, which is very unfortunate. And yeah, so I wish them better luck यार from the next game. Absolutely, Aman. I would like to wish Sick Warrior as well, क्योंकि पहला गेम इतना कुछ खास गया नहीं, उनको कैम करके खत्म कर दिया गया। घर में बैठे थे अपना शॉटगन लेके आराम से 2 प्लेयर्स, और जैसे ही सिक वॉरियर और उनके टीममेट आए, बूम बूम मैन, इट वाज ओवर। काफी जल्दी उनको खत्म करा गया। तो सिक वॉरियर इस बार तो किसी भी घर में घुसने से पहले स्काउटिंग जरूर करेंगे।
डेफिनेटली, एंड ये चीज हमको कल भी देखने को मिली थी. आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट 2 गेम्स देयर वाज अ टीम जो घर के अंदर बैठ रही थी, राइट, एंड उन्होंने या शॉटगन अपनी पॉइंट करी थी डायरेक्टली टुवर्ड्स द डोर. वो दरवाजा जैसे ही खुलेगा, जो भी बंदा आएगा उसको तो इंस्टेंटली नॉक ही मिलेगा, वो तो डेफिनेटली श्योर था. बट या, हाउस कैंपिंग इज अ बिग पार्ट, स्पेशली क्योंकि हम बिल्ड नहीं कर सकते. सो किसी भी घर में जाने से पहले आपको स्काउट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेसिकली यू आर प्लेइंग, क्या कहते हैं, रूलेट विद योर लाइफ, कि आपने दरवाजा खोला, वहां पर एनिमी होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं पता. Yeah, you have to be careful. Sick Warrior would be in this one. But, I loved it. The first map was absolutely phenomenal, the way these players played. मैं expect कर रहा हूँ और बेहतर गेम प्ले इस बार, और especially प्रोफेशनल प्लेयर्स से, कि और बेहतर वो कर सकते हैं. काफी ज्यादा हमने जगह देखी जहाँ पे एक क्लस्टर सा बन गया था शुरुआत के अंदर. काफी ज्यादा प्लेयर्स एक साथ थे जैसे ही उन्होंने लैंड किया था, and they were trying their level best, but certainly it was not enough for a lot of players. इस बार मैं देखना चाहूंगा थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अगर देखने को मिले प्लेयर्स की तरफ से, अलग अलग जगह पे वो जाएं और आखिरी में ज्यादा प्लेयर्स बचे, दैट वुड बी वंडरफुल. डेफिनेटली, एंड जैसे आप बोल रहे थे कि प्रो प्लेयर्स इतना नहीं सरवाइव कर पाए स्टार्ट गेम में एंड मिड गेम में, बिकॉज हमने देखा हाइपर भी एलिमिनेट हो गए थे स्टार्ट में ही, क्वर्जी हमारे मिड गेम में एलिमिनेट हो गए थे. ये बहुत अच्छे डुओज हैं दोनों, काफी टाइम से ये फोर्टनाइट खेल रहे हैं, प्रो सीन में इनका काफी नाम है. एंड ऐसी ही सेम चीज हुई थी हमारे एक और डुओ के साथ जिनका मेरे को नाम अभी नहीं याद आ रहा, बट वो भी स्टार्ट गेम में साथ में एलिमिनेट हो गए थे, बिकॉज उन्होंने जहां पर लैंड करा वहां पर ऑलरेडी उनके साथ 2 डुओज और थे, जो कि डेफिनेटली कभी भी अच्छी बात नहीं है. प्लस दैट मेरे को वापस वो कार सीन याद आ रहा है जहां पर 2 कार्स एक दूसरे का पीछा कर रही थी एंड उन्होंने पानी में कार चला दी, राइट. द ओपोनेंट्स वर इन अ जीप, जिसके कारण उन्होंने पानी में कार चला ली, बट ये लैम्बोर्गिनी में आ रहे थे एंड जस्ट लैम्बोर्गिनी जस्ट पानी में पूरा डूब गया and they had to stop the push, which was really funny. So yeah. Well, All maybe right, it here was we have a blessing in disguise. Because opponent के maybe पास maybe गूगन थी तो शायद प्रॉब्लम होती, बट हाई से शुरुआत करते हैं. ऑलरेडी लैंड करते हैं आपको नजर आ जाएंगे. देखते हैं कितनी ज्यादा वैल्यू और कितनी अच्छी लूट वो लेके जा पाएंगे. मैक्वीन की अगर यहाँ पे बात की जाए, इनको भी मैं देखना चाहूंगा इस बार कि ये कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं. इनके साथ ही कोक जरूर है. लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू. सल्बाटेक दोबारा से यहाँ पे टिल्टेड टावर जा रहे हैं. देखिए पहली बार गए थे, फाइट जहाँ पे हुई नहीं थी, थोड़ा आगे जाके हुई थी. इस बार मुझे लगता है कि उतरते ही फाइट होने वाली है. मेरे को भी कुछ ऐसे लग रहा है, स्पेशली बिकॉज इनके साथ 2 और डुओस लैंड कर रहे हैं, बट यहाँ पर आते हैं हम कसार गेम्स के पास एंड सरप्राइजिंगली इधर इतने छोटे एरिया में भी मैं देख सकता हूँ कि 2 डुओस तो कम से कम आ रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर देम एट ऑल, क्योंकि इतनी छोटे से एरिया में हमारे पास सिर्फ एक ही डुओ की लूट मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा, एंड यहाँ पर 2 डुओस लैंड कर रहे हैं. पूरा आरएनजी होने वाला है वहां पे. तो लग तो यही रहा है. पनवाड़ी ग्रीडी की अगर यहाँ पे बात की जाए, लूट की शुरुआत इन्होंने भी यहाँ पे कर दी है. देखते हैं कौन से वेपन्स, कौन से लोडआउट्स के साथ ये जाना अभी के लिए पसंद करेंगे. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा लास्ट मैप में भी इतने ज़्यादा लोग शॉटगन्स का इस्तेमाल करने थे, बट कसार गेम्स की हमने बात करी, वारी की बात करी, दोनों को खत्म कर दिया गया ऑलरेडी. तो पहली जो टीम थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है. ये तो डेफिनेटली काफी अनफॉर्चुनेट था उनके लिए, क्योंकि हम उनकी बात ही कर रहे थे. इतना ज्यादा कंटेस्टेड प्लेस में जाना, यही एक्सपेक्ट करोगे आप अगर एक और डुओ के साथ बिल्कुल एक ही घर में लैंड कर रहे हो. यहाँ पे पनवाड़ी ग्रीडी काफी ज्यादा लूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक उनका लोड आउट अभी ठीक बन चुका है काफी, और उनको बस थोड़ी सी शील्ड चाहिए एंड अर्ली गेम के लिए दे शुड बी प्रीटी गुड. यहाँ पर क्वीन पे वापस आते हुए इनके पास लूट की बहुत ज्यादा कमी है इस वक्त. ओनली थिंग दे हैव इज अ शॉटगन एंड अ पिस्टल, एंड उनके टीममेट ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं आई थिंक. या यार को आई थिंक को एलिमिनेट काफी जल्दी कर दिया गया था एंड मैक्वीन अब अकेले हैं. कितनी ज्यादा वो वैल्यू निकाल सकते हैं अकेले, ये देखने वाली बात होगी. वही अगर सल्बाटिक की बात की जाए, लूट इस बार भी शुरुआत के हिसाब से काफी अच्छी उनको यहाँ पे मिल चुकी है एंड आई थिंक इज लुकिंग टू हंट सम प्लेयर्स एंड देखते हैं कितनी जल्दी वो यहाँ पे हंट कर पाएंगे, बिकॉज जहां वो जा रहे हैं वहां पे 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं. मुकेश चुके की अगर बात की जाए, वो भी काफी तेज से आगे बढ़ते हुए फोर्थ में है. लूट अभी के लिए तो डिसेंट इनको मिल चुकी है. आई वुड लव टू सी के कितनी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं इस लूट के साथ. सबैटिकल के प्ले के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा, बट उसमें वापस आते हैं. यहाँ पर हमारी सामने एक फाइट हो रही है हथौड़ा एंड मुकेश के बीच में. हथौड़ा की हेल्थ बहुत ज्यादा कम एंड ही गेट्स नॉक्ड राइट देयर. वो फिनिश के लिए नहीं जाएंगे अपने, चक स्प्लैश यूज करे जा रहे हैं बाय लेवी टू गेट हिज शील्ड बैक.
and here comes a Gugan action. Game change is the only one alive from that duo, and Gugan इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देती है. प्लेयर किसी बिल्डिंग नहीं तो प्लेस नहीं तो कोई वॉल के पीछे कवर ले ही नहीं सकते. यही तो चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा लूट पे पहले ध्यान देना पड़ता है, वरना आप थोड़े बैकवर्ड पे चले ही जाते हैं. सलबाटेक अभी भी स्काउट कर रहे हैं, वो यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं अपोनेंट को. थोड़ा सा पंपकिन आरपीजी एक्शन और आपको देखने को मिल सकता है. 3 तो उनके पास पहले हैं रॉकेट्स, एक गन और पड़ी है, आई थिंक मार्क कर रहे हैं अपने साथी के लिए. जी हाँ, सुकी आए हैं, उन्होंने वो वेपन उठा लिया है. साल्वा की अगर बात की जाए तो लग रहा है कुछ एक्शन देखने को काफी जल्दी मिल सकता है. ही इज हियर गूगन के साथ थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश, बट खुद भी काफी डैमेज खा चुके हैं, काफी क्लोजर आ चुके हैं. एक अपोनेंट उन्होंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिम. सबैटिकल की हेल्थ एकदम से काफी कम होगी कि उनके पास पहले ही शील्ड्स नहीं थी. आई थिंक उनके पास शील्ड्स थी. मे बी अभी हमने कोई फाइट मिस करी है क्योंकि उनके ओपोनेंट्स भी हमको बिल्कुल सामने ही दिख रहे हैं. सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ था. एंड यहाँ पर हम बात करते हैं वॉर की, जिसके पास एक लेवर शॉट गन है, एक AR के साथ एंड 6 नेट्स कैरी कर रहे हुए हैं, विच इज़ डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आप सबको पता ही होगा फोर्टनाइट मेयर्स चालू हो चुका है. हॉलोवीन हमारे इतना पास आ रहा है तो गेम में ज़ॉम्बीज ऐड हो चुके हैं. एंड यहाँ पर हाई के साथ फाइट शुरू कर दी है वॉर ने. हाई को थोड़ा सा डैमेज दिया, बट अब दोनों डुओज एक दूसरे के दूर जा रहे हैं. Well, that's a good one. I mean, disengage करना सही समय पे disengage करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है आपके लिए. गोकू गराल एंड वॉरेक्स नट्स, देखते हैं कितनी ज्यादा वैल्यू वो निकालते हैं. अभी के लिए बहुत दूर चले गए अपोनेंट, बट वही सलबैटिक की अगर बात की जाए स्पॉट तो उन्होंने करा अपने अपोनेंट को आरपीजी के साथ डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं, बट अभी के लिए ज्यादा वैल्यू निकाली नहीं है. लास्ट उनके पास ये एमओ बचा है. विलन भी वहां पे आरपीजी का इस्तेमाल कर जरूर रहे हैं. सलबैटिक अब कवर उनके पास है नहीं, पीछे उनको जाना पड़ेगा. डैमेज वो खाते हुए सुकी पीछे से कवर जरूर दे रहे हैं, बट ये कवर क्या काम आएगा, बिकॉज दोनों ही प्लेयर्स थोड़ी सी एचपी गवाते हुए. यहाँ पर सुकी और सबैटिकल का ये डिसीजन मेरे को बहुत अच्छा लगा. उनके पास लो ग्राउंड पे थे, वो आरपीजी चला रहे थे नो डाउट, बट उन्होंने जैसे देखा कि ओपोनेंट्स के पास हाई ग्राउंड है, वो बिल्डिंग के ऊपर है और उनके पास कोई कवर नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली अपना स्ट्रैटेजी चेंज करी एंड पीछे चलना शुरू कर दिया. बिकॉज दे नो कि वो पहली गेम वाली गलती वापस नहीं कर सकते, उनको प्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी अगर उनको क्वालिफाई करना है कल के लिए. आश्रय की अगर बात की जाए तो 2 शॉकवेव ग्रेनेड्स हैं उनके पास. नो डाउट अभी इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं. हील उनको यहाँ पे चाहिए होगी, काफ़ी जल्दी उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा. आई स्टिल बिलीव के शुरुआत के हिसाब से हमने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को गवा दिया. सिक वॉरियर को भी खो दिया है. मिंटी गर्ल जो उनके साथ थे, सिक वॉरियर और मिंटी गर्ल एक और बार यहाँ पे जल्दी एलिमिनेट होते आपको नजर आए. तो दैट्स नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर द क्रिएटर. बिल्कुल भी नहीं. एंड मेरे को पता क्या लग रहा है, हमने जिंक्स ना कर दिया उनको उनके बारे में पहले बात करके, बिकॉज कल सेम चीज सिगार वाइटी के साथ हुई थी. आई वाज रियली एक्साइटेड उनको देखने के लिए एंड आई डेफिनेटली जिंक्स्ड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहे अर्ली गेम्स में. यहाँ पर हम बात करते हैं आश्रय की, हु गेट्स नॉक्ड आउट बाय वन ऑफ द ओपोनेंट्स एंड वो उनको भी पुश कर रहे हैं आई बिलीव. बट यहाँ पे बात करते हैं एसएफ की, जिनके सामने जीई का एक डुओ है, हाइपर एंड इंडिया गेमर. लेट्स सी अगर वो फाइट हैंडल कर पाते हैं एसएफ कर ले, बिकॉज आई डोंट सी उनका टीममेट कहीं भी पास में. एब्सोल्युटली. रूलर ऑन द अदर हैंड डिसेंट लूट है, आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे हैं. देखते हैं कितनी जल्दी उनको यहाँ पे और अपोनेंट्स मिलते हैं, बिकॉज रूलर गॉट 2 kills there as well already, so let's see what he can do. डेफिनेटली यहाँ पर लोड आउट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनका. सिर्फ एक AR और एक गू लॉन्चर लेके चल रहे हैं ये. अपने 2 स्प्लैशेस भी इनके पास शील्ड रिकवर करने के लिए एंड पोटा बंकर सॉरी एंड शील्ड्स भी हैं दोनों, विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. शिनोबी के बाद में बात करते हुए यहाँ पर यही वो डुओ है जो प्रेशर दे रहे थे अपने सबैटिकल को एंड सुकी को. सबैटिकल एंड सुकी फिर भी बैकआउट पूरा नहीं कर रहे, वो पहाड़ पे बैठे हुए हैं. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दीज गाइज टू मेक वन रॉन्ग मिस्टेक एंड उनको कैच कर लेंगे ये ऑफ कार्ड. एंड आई लाइक हाउ सुकी एंड सबैटिकल थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं. दे आर जस्ट स्काउटिंग एंड फाइंडिंग अ गुड प्लेस टू टेक शॉट्स फ्रॉम, विच इज डेफिनेटली अ गुड डिसीजन. इनका गेम प्ले देख के पता लगता है कि इनको पता है ये क्या कर रहे हैं एंड इनके पास डेफिनेटली प्रायर नॉलेज है इस गेम की. They always wants to fight it out. I mean, it's G fighting for a reason, right? Global esports के players हमेशा
लड़ने के लिए इच्छुक रहते ही हैं। वहीं रेहान की तरफ हम चले तो फाइट यहाँ पे शुरू हो चुकी है। कर्स शॉट देने की कोशिश यहाँ पे करते जरूर है, प्राइम शॉटगन है उनके हाथ में, एक पहला जो शॉट वो लेंगे उससे काफी ज्यादा डैमेज वो दे सकते हैं अपने अपोनेंट्स को। एंड हियर यू गो, काफी सही कनेक्शन रेहान ढूंढते हुए और अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज दिया, उनको नॉक किया, उनको खत्म किया। एंड इन द एंड आई थिंक जो उनके पास इवोक्रोम शॉटगन थी काम आई। एंड व्हाट आई एम रियली सरप्राइज इन दिस गेम इज कि हमारे पास सिर्फ 57 प्लेयर्स बच चुके हैं। ऑलरेडी 33 प्लेयर्स आर एलिमिनेटेड, एक्चुअली 23 प्लेयर्स आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड, एंड हमारा सेकंड जोन अभी तक क्लोज होना शुरू भी नहीं हुआ है। सो ये गेम डेफिनेटली फास्ट चल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एंड अगर हम मैप की बात करें, यहाँ पर हमारा एक डुओ बैठा है ग्रूव में, ग्रीसी ग्रूव में, and एक डुओ जोन में आ रहा है फ्लटर बान के ऊपर से उड़ते हुए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रीसी में भी वो क्या बैठ के कर रहे हैं ये मेरे को नहीं पता। इस पॉइंट पे जोन में रहने का कोई फायदा नहीं है। लूट कंप्लीट कर रहे होंगे अभी के लिए अपने मैजिक सर्कल से, यहाँ पर लैंड तो जरूर किया है एक्सी ने, बट देखूंगा मैं, इंतजार करेंगे जोन के अंदर कितनी जल्दी यहाँ पे ये प्लेयर्स जा पाते हैं, बिकॉज अभी भी जोन के अंदर गए नहीं है। एंड आई थिंक दे वांट टू फ्लाई इनटू द जोन राइट नाउ। They are looking to get some more loot, थोड़ा फार्मिंग यहाँ पे करा जा रहा है, थोड़ा सा और लूट यहाँ पे उनको मिल जाएगा, और काफी ज्यादा मात्रा में लूट यहाँ पे मौजूद है। उनको एक्चुअली 2 कीज मिल गई थी, जिसके कारण उन्होंने वो हिडन वॉल्ट खोल लिया। वहां पे वॉल्ट में काफी ज्यादा लूट होती है, एंड आई थिंक उनके लिए थोड़ा लकी हो गया ये कि जोन बिल्कुल ही उनके पास में था, बिकॉज प्लेयर्स ऑलरेडी रोटेट कर गए होंगे वहां से दूर, राइट। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप वॉल्ट खुलने की आवाज सुनते हो, अगर आपके आसपास कोई भी ओपोनेंट होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा आपको अटैक करने, क्योंकि काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है आपको, वो मिल जाते हैं ऑफ कार्ड थोड़े से, एंड उनका जो लूट है वो तो काफी बेटर हो गई वॉल्ट के कारण। Oh my God, it's फायर पावर वहां पे नॉक पड़े हैं जिपलाइन का इस्तेमाल करके हाई ऊपर जाते हुए, बट यहाँ पे अपने प्लेयर को, अपने साथी को रिवाइव करने का मौका उनको मिलेगा नहीं, और इन द एंड उनको छोड़ के ही शायद आगे जाना पड़ सकता है। फायर पावर स्लोली स्टेडली वो भी जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट अभी के लिए कोई खासा फायदा हुआ नहीं। हाई थोड़ा बचने की कोशिश करते हुए, शॉट अभी भी उनके ऊपर आ रहे हैं, डैमेज वो खाते हुए क्या हवा में ही वो खत्म हो जाएंगे। दूरी बनाने की कोशिश यहाँ पे कर जरूर रहे हैं, शॉट जो आ रहे हैं वो अभी के लिए मिस होते हुए। आई डोंट थिंक अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे। फायर पावर के लिए यही रहेगा, इस मैप का समाप्ति रहेगी उनके लिए, बट हाई अभी के लिए बच जाएंगे। एंड अगर आपने नोटिस करा होगा मिनी मैप पे, हाई एक डुओ के ऊपर से निकले हैं, एंड आई थिंक वो डुओ भी थोड़ा सहम गया था, वो एकदम से वहां पे ही रुक गए कि नोटिस ना हो जो मैं इस प्लेयर से जो हमारे ऊपर चल रहा है, बिकॉज आई थिंक अब प्लान उनको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। हम मिड गेम की तरफ आ चुके हैं, एंड अब सबको जितना भी हो सके जिंदा रहने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एसिफ एंड साहिल, जिन्होंने अभी अभी वोल्ट खोली थी, वो बलून के ऊपर बैठे हैं एंड काफी अच्छी पोजीशन ले चुके हैं जोन के अंदर, एंड उनको उनके सामने एक डुओ भी दिख चुका है जो रोटेट कर रहा है, बुश में जाके बैठा है। अगर यहाँ पर इनके पास स्नाइपर होती, मैं गारंटी ले सकता हूँ ये दोनों प्लेयर्स नॉक होते, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्नाइपर नहीं है, एंड एआर इतना ज्यादा दूर एम करना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। यहाँ पर वापस कार से उड़ाते हुए बुश के अंदर हमारी टीम देख सकते हैं हम एक ऊपर बैठ के वो पूरा आनंद उठा रहे हैं इस फाइट का, दोनों के बीच में जो फाइट चल रही है, और अगर मौका मिला तो दोनों फाइट में थर्ड पार्टी करके वो किल्स भी निकाल सकते हैं भाई। अगर हर्ष की अगर बात की जाए, उनके साथी जो हाइपर हैं वो तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, और हर्ष अब अकेले प्लेयर बचे हैं। थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करी जा रही है, थोड़ा सा पीछे वो आ चुके हैं, देखते हैं कितनी देर तक वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। एंड डाइनो एंड उनके टीममेट कैक्सो का डेफिनेटली हाइड एंड सीक चल रहा है, बिकॉज उनको पता है यहाँ पर कोई ना कोई तो ओपोनेंट है, बट वो कहाँ पर है ये नहीं उनको पता, तो वो क्राउच करके पूरा घर ढूंढ रहे हैं। उनको ओपोनेंट मिल चुका है, आरपीजी निकाली गई है, बट लकी फॉर देम उन्होंने आरपीजी यूज नहीं कर पाए टाइम पे। अगर वो आरपीजी यूज करते काफी ज्यादा डैमेज होता तीनों को इनफैक्ट, एंड अगर उनकी हेल्थ ऑलरेडी कम होती तो वो खुद को भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो अच्छी बात है आरपीजी नहीं चली, उन्होंने काफी स्नीकली, काफी अच्छे से वो पूरी सिचुएशन हैंडल करी। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम टीएमटी की, जिनके पास काफी अच्छा लोड आउट है। जोन के ये थोड़ा सा बाहर हैं एंड और ज्यादा बाहर जा रहे हैं, प्रोबेबली टू अवॉइड एज मेनी ओपोनेंट्स एज पॉसिबल। ये जोन के साथ रोटेट करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर इनको एक वॉल्ट मिल गई ऑलरेडी खुली हुई, जहां से ये लूट ले रहे हैं। इनको और ज्यादा शॉकवेव मिल चुके हैं। सोलो प्लेयर है तो डेफिनेटली काफी हेल्प करेगा शॉकवेव सिचुएशंस, टफ सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने गोल्डन लेवर नहीं उठाना पसंद करी, मे बी उनकी मनपसंद नहीं होगी ये गम, और मे बी ही जस्ट डज नॉट वांट एनी शॉटगन।
वेल मे बी दैट इज द केस, बट लीवाई की अगर बात की जाए, पहले तो उनकी 70 पिंग आ रही है, बता रहे हैं हमको ये अपने नाम से ही, बट अभी के लिए बुश कैंपिंग करते हुए ऑटोबस अगर यहाँ पे बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो जा ज़रूर रहे हैं, क्योंकि जो डैमेज है वो पड़ने वाला है इनको अगर जोन के बाहर ये ज़्यादा देर तक रुकते हैं और चल नहीं रहे हैं, क्योंकि द डैमेज इज कमिंग टुवर्ड्स देम। ये भी तेज़ी से जोन के अंदर जाना चाहेंगे, काफ़ी अकेले प्लेयर हैं, सोलो प्लेयर हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू वो निकालेंगे। अभी भी अगर यहाँ पे बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं, नॉइजी को खत्म करा गया कार्श के द्वारा, फाइट्स तो अभी भी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, एंड मैंने वैसे नोटिस करा है जब भी जोन क्लोज होने वाला होता है तब सारे लोग एक ही तरफ भाग रहे होते हैं, एंड अगर आपने जो रोटेशन पाथ है आपका जोन में जाने के लिए आपने करेक्टली नहीं चूज करा, आपने डेड साइड से, जहां पर हम बोलते हैं जहां पर एनिमीज की प्रेजेंस होने के चांस सबसे ज्यादा कम है, वहां से रोटेट नहीं करा, देन यू विल डेफिनेटली गेट कॉट इन द क्रॉस फायर, एंड एनिमीज आर प्लेयर्स आर सो थर्स्टी फॉर किल्स कि जैसे वो जोन के अंदर जाएंगे वो बॉर्डर पे बैठ जाएंगे एंड वेट करेंगे किसी और एनिमी के आने का ताकि उनको साथ में मार सकें। सल्बाटिक की अगर बात की जाए, सुकी एंड सल्बाटिक दे जस्ट होल्डिंग ऑन जोन के बिल्कुल एज पे यहाँ पे लड़ जरूर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, सल्बाटिक बचने की कोशिश यहाँ पे करते हुए और आगे आ चुके हैं। आई थिंक सुकी एक तरफ जा चुके हैं, सल्बाटिक दूसरी तरफ आ चुके हैं। आई वुड लव टू सी क्या यहाँ पे एक क्रॉस फायर सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, या फिर प्लान है सिर्फ बचने का, क्योंकि सुकी वहां पे नॉक हो गए हैं। Salvatic, the last man standing, he still wants to fight it out. It seems slowly and steadily अपने ओपोनेंट की तरफ काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ते हुए स्पॉट करेंगे अपने ओपोनेंट को, बाहर निकलेंगे, क्या खत्म करेंगे, थोड़ा सा साइड हो गए और वो अभी स्पॉट नहीं कर पाए। इनके ओपोनेंट बिल्कुल उनके साथ में, Salvatic बचने की कोशिश करते हुए, बट वो जो मूव था इनका गलत साबित हुआ। अगर बच के निकल जाते ज्यादा बेहतर होता, बट इट्स जी फाइटिंग, दे ऑलवेज फाइट इट आउट। You know what's surprising? Sabbatical died to the same duo that they died in the first game. कोएक्सी से ही मरे थे एंड अभी भी कोएक्सी से मरे। That is very unfortunate, बहुत ज़्यादा unfortunate है ये। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेवाई ऑन 70 पिंग ऑलरेडी गेट नॉकड आउट है यहाँ पर, प्रॉब्लम अपने टीममेट का वेट कर रहे हैं उनको आके रिवाइव करने का। मुकेश ने अपना पूरा घर बना लिया यहाँ पर, खुद का बेस, एंड थोड़ा सा शॉट्स देने की कोशिश करी जा रही है टू द जी डुओ हाइपर एंड इंडिया गेमर। वो आई लव द लोकेशन दैट दीज गाइज आर इन, हाई ग्राउंड पे बैठे हैं और अपने साथ इन्होंने एक एनपीसी भी रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो क्राउच करके वहां पर ही बैठा हुआ है इनकी हेल्प के लिए। जी हाँ, I mean that is actually quite good, but साथ ही साथ they have like the rocket launcher as well, RPG है उनके पास, जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं। कोई भी आसपास वाले घर अगर कोई प्लेयर स्पॉट होता है, they would love to give some damage there। कोर्जी वो भी वहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे बात की जाए पनवाड़ी ग्रीडी की, he has to be a little patient there, ग्रीडी ज्यादा नहीं हो सकते, इंतजार वो कर रहे हैं। और वही अगर एक ट्रक चलाया जा रहा है वैक्सी की तरफ से, ट्रक्स हमको देखने को और भी ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली बिकॉज एंड गेम हमारी शुरू हो चुकी है एंड यहाँ पर वेयर जोन में है अभी भी रोटेट कर रहे हैं, एंड जैसे इनकी सिचुएशन है आई डोंट थिंक ये जोन में पहुंच पाएंगे, और मे बी नॉट जोन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इनके पास 5 शील्ड बबल्स है अभी, इनको अभी किल मिली है, आई थिंक इन्होंने बस डैमेज दिया, किल नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, बट लूट मिल चुकी है इनको। शील्ड बबल यूज करते इनको मिल गए हैं बिग पॉट्स एंड सम लॉन्च पैड्स विच इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। यहाँ पर हम फाइट देख सकते हैं शिज नट्स के बीच में भी हो रही है, कोएक्सी एंड शिज नट्स एक ओपोनेंट से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा डैमेज दिया है, इन्होंने भी काफी ज्यादा डैमेज लिया रिटर्न में। इंतजार करते हो अभी वापस अपने बंकर में आके बस इंतजार कर रहे हैं। देखना चाहूंगा मैं कितनी देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि अभी आखिरी के कुछ सर्कल्स बचे हैं और काफी ज्यादा आपको यहाँ पे क्राउड देखने को मिलता है। 33 प्लेयर्स हैं, वैक्सी भी खत्म हो गए जो ट्रक चला रहे थे कुछ देर पहले, अभी के लिए ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। इंडिया गेमर की अगर बात की जाए, स्पॉट उन्होंने करा एक और अपोनेंट को, आई थिंक मल्टीपल टीम्स है वहाँ पे शील्ड बबल के आसपास, एंड सबको डैमेज देने की कोशिश, गाड़ी को ब्लास्ट करा जरूर गया है, बट गाड़ी में जो डायनो थे वो भी के लिए बच जाएंगे, गाड़ी से कूदेंगे डायनो, एंड इस बार भी बचना थोड़ा मुश्किल है, एचपी बहुत कम है और वो भी यहाँ पे खत्म कर दिए जाएंगे। इंडिया गेमर जो घर उनका था वो तबाह करा जरूर गया है, बट वो जो शील्ड बबल है उसका इस्तेमाल करा जाएगा, गन का इस्तेमाल भी करा जा रहा है, बट टू नो अवेल इट सीम्स। जो पोजीशन है हाइपर इंडिया गेमर की वो इतनी अच्छी है इस पॉइंट पे कि जोन भी उनके बिल्कुल ही पास में है, कि आई थिंक वो ऑलरेडी जोन में है एक्चुअली, एंड उनको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट हैव टू स्प्रे द फाइट्स, थर्ड पार्टी द फाइट्स जो उनके नीचे हो रही है, एंड यहाँ पर हम साहिल को देख पा रहे जैसे ऑलरेडी नॉक है, एसएफ भी बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं, आई थिंक वो भी नॉक हो जाएंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। यहाँ पे पूरा डुओ जा चुका है उनका। Wow, I mean look at the number of kills they are getting, 5 किल मिला के दोनों
प्लेयर्स ने यहाँ पे ले लिया अपनी टीम के लिए, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। हाइपर लो डाउट काफी अच्छा है, स्नाइपर का इस्तेमाल भी वो यहाँ पे कर जरूर सकते हैं। देखते हैं क्या शॉट कनेक्शन ढूंढ पाएंगे, एक हेडशॉट देने की कोशिश यहाँ पे हाइपर की तरफ से, क्या ये कनेक्शन ढूंढेगा? शॉट लिया एंड ही वुड गेट द शॉट एंड 1x लॉर्ड को टेक डाउन करते हुए हाइपर, दैट वाज फिनोमिनल। बट अभी भी गुगन का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, डैमेज देने की कोशिश। सामने सिगार वाइटी आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉट दिए जा रहे हैं, सिगार उनको भी टेक डाउन किया जाता है। जी हाइपर एक्चुअली ऑन फायर राइट नाउ। हाइपर अपना पूरे फोर्स में आ चुके हैं, उनका मकसद है ये गेम जीतने का है। हम देख सकते हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपने टीममेट के पास वापस आते हुए थोड़ा सा लूट ले रहे हैं सिगार वाइटी से, जिनको उन्होंने अभी भी मारा। सिगार वाइटी ने आरपीजी चलाई थी पर इतना डैमेज नहीं कर पाए कि वो पूरी की पूरी सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेके आ सकें। यहाँ पर उनके सामने एक और आकर्ष एंड उनका डुओ है जो कि बहुत एग्रेसिव है नॉर्मली अपनी फाइट्स में। तो देखते हैं वो फाइट एक्चुअली ये वाली लेंगे कि उनको पूरा इग्नोर करते हुए जोन में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1x लॉर्ड जो नॉक हुए थे हाइपर के थ्रू विद द स्नाइपर ऑलरेडी गेट्स टेकन आउट कंप्लीटली। एंड यहाँ पर एक और डुओ पूरा का पूरा एलिमिनेट हो चुका है हाइपर के द्वारा। दिस इज फिनोमिनल। हमें जिस तरह से यहाँ पे ये खेला जा रहा है मुकाबले को, टोटल 8 किल यहाँ पे निकाल चुकी है ये टीम एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ लूट एज वेल। अच्छा लग रहा है देख के, इनकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी, इनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी एंड पूरा का पूरा दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे आरपीजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए सामने जो ओपोनेंट्स है उनकी एचपी थोड़ी सी कम जरूर करी गई है। आगे बढ़ने की कोशिश, कर्श ऑन द बैक फुट एंड ही हैज टू टेक अ डिफरेंट रूट देयर। रेहान को स्पॉट किया गया, शॉट देने की कोशिश, डैमेज काफी दिया बट वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। जी हाइपर अनदर किल फॉर दिस प्लेयर। जी हाइपर एंड इंडिया गेमर कंप्लीटली ऑन अ रोल। क्या आरपीजी किल्स आ रही है, क्या स्नाइपर किल्स आ रही है, क्या एआर स्प्रे आ रहा है उनकी तरफ से। एंड यहाँ पर हाइपर ने 1 सेकंड वेस्ट भी नहीं करा, गोएक्सी के ऊपर चढ़ गए हैं पूरा एंड आरपीजी यूज करी, एआर यूज करी, उनको नॉक कर दिया गया है। हाइपर अनफॉर्चुनेटली नॉक हो चुके हैं उनके साथ एंड इट इज अ फाइट, इट इज अ 1v1 दैट इज लेफ्ट। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया गेमर हवा में गए, डैमेज करने की कोशिश करी बट इतना नहीं कर पाए कि वो फाइट जीत जाए। शिज नट्स एंड उनका डुओ कोएक्सी विल बी द विनर ऑफ द सेकंड राउंड। व्हाट एन इंटेंस फाइट दैट वाज। और कमाल की बात यही है, कोर्जी की टीम ने ही पहले ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो क्रिएटर्स थे उनको खत्म करा और फिर उनके प्लेयर्स को भी खत्म करा। दैट इज समथिंग एल्स बट इट वाज अ ब्यूटीफुल गेम। आई थिंक हाइपर एंड इंडिया गेमर दे प्लेड रियली वेल बट जीत नहीं पाए, सेकंड पोजीशन से ही उनको संतुष्टि करनी पड़ी। यस एंड उनका जैसे एंड का प्ले था, आई वाज प्रीटी श्योर कि वो पूरे फुल पावर में जा चुके हैं। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड गेटिंग सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, उनको फर्स्ट ही चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हाइपर जो थे हमारे नॉक हो गए थे। उनको पता नहीं लगा एग्जैक्टली बुलेट्स आई कहाँ से, मेरे को भी इनफैक्ट पता नहीं लगा। एंड इंडिया गेम में थोड़ा प्ले एक मूव करने की कोशिश करी, उन्होंने अपने आप को शॉक वेव करा, एआर चलाने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली हवा में आपका एम पूरा मैसअप हो जाता है एंड वो शॉट्स की एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती। सो दे डिड कम सेकंड, वेल प्लेड टू बोथ ऑफ देम, काफी अच्छा खेले कोएक्सी को, जीजीस। एंड आई थिंक स्पीरो शुड वी मूव ऑन टू द एड्स, उसके बाद हम आके और बात करते हैं। जी हाँ, चलते हैं फटाफट से आज की तरफ, वापस आएंगे और ज्यादा एक्शन के साथ। Yeah, let's go to the ads right now.
एंड या दैट वाज एनवीडिया रिफ्लेक्स फॉर यू गाइस. तुमको देखने को मिला उसका पूरा परफॉर्मेंस डिफरेंस जो तुमको मिलता है वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट. इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट अगर तुमने नहीं करा है. आई एम गोइंग टू कीप टेलिंग यू गाइस अबाउट दिस फीचर over and over because that's how good this is. Nvidia Reflex is definitely one of the craziest thing out there, and especially if you have a RTX graphic card, तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. All you have to go to your favorite game, turn on the setting, and that will be it. You'll get extra performance, low latency, and great smoothness in the game. एब्सोल्युटली आई मीन एनवीडिया रिफ्लेक्स जैसा कि हमने पहले बात करी कि हर एक मिली सेकेंड का फर्क भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा सकता है, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल प्लेयर्स और द एस्पायरिंग प्लेयर्स जो यहाँ पे और बेहतर बनना चाहते हैं, बेहतर खेलना चाहते हैं. उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक बेनिफिट का वो हर एक टेक्नोलॉजी का वो बेनिफिट उठाएं, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एनवीडिया रिफ्लेक्स जरूर ट्राई कीजिए. अगर आपने अभी तक नहीं किया है आप उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं एंड यू कैन चेक दिस आउट एज वेल. 110%. एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे स्पीरो ने ऑलरेडी बोल रहा, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक आउट कौन से मॉनिटर्स है, कौन से माउस है जो कि कंपैटिबल है हमारे एनवीडिया रिफ्लेक्स के साथ, जिसके साथ आपको और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा लेटेंसी कम देखने को मिलेगी. बट बात करते हैं हमारे अभी जो गेम हमने देखने को मिली. स्पीरो, क्या कहना चाहेंगे आप इस गेम के बारे में? Well, it was beautiful. और गेम की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट्स के ऊपर चलते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड एंड देखते हैं किसने कितनी वैल्यू निकाली. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी क्वर्जी एंड शिप्सी जो आएंगे नंबर 1 पे. दे गॉट 9 एलिमिनेशंस ऑल इन ऑल. 111 टोटल अंक उनके यहाँ पे हो जाते हैं, व्हिच वाज फिनोमिनल. साहिल लेके चीकू एंड S6 एक्सी एफएक्स की अगर यहाँ पे बात की जाए 8 तक टोटल किल्स उनके पास है, 86 टोटल अंक उनके पास जाते हैं. नंबर 3 पे वी हैव वाइबलोड एंड वेक्सीफाई 007. एक ही एलिमिनेशन है बट यू कैन सी दे गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज उनको प्लेसमेंट पॉइंट्स काफी मिले हैं. डेफिनेटली. एंड 4th नंबर की बात करें, हमारा जी का डुओ हाइपरट्रोफर प्लस इथीरियम दोनों ने काफी अच्छा करा. एंड मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं उनके 12 किल्स हैं बिकॉज हमको देखने को मिला उन्होंने एंड गेम में, लास्ट गेम में क्या करा है. मतलब उन्होंने हवा में उड़ के आरपीजीज चलाई हैं, सबको नॉक करा है. 12 एलिमिनेशन है उनकी, 82 पॉइंट्स के साथ 4th नंबर पे बैठे हैं. 5th नंबर की बात करें, हमारे पास हैं वेयर XLS एंड गोकू पापा विद 0 एलिमिनेशंस बट फिर भी 66 पॉइंट के साथ 5th नंबर पे अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. 6th नंबर पे हमारे आते हैं वायरस FN123 विद रॉक एंड रोला, जो कि ऑफ कोर्स हमारी पहली गेम जीती थे बट आई थिंक सेकंड गेम में हमको इतना नहीं देखने को मिला इनका. मे बी वो अर्ली गेम में एलिमिनेट हो गए थे, इसलिए वो 63 पॉइंट्स के साथ बैठे हैं 6th पोजीशन पे. जी हाँ, 7th पोजीशन की अगर बात की जाए वोल्केनिक सेट के साथ यूकी आर्यन आपको देखने को मिलते हैं. 4 किल्स निकाले, 61 टोटल अंक वहां पे देखने को मिलते हैं. वहीं अगर बात की जाए नंबर 8, इट इज योर फेवरेट सिगार वाइटी और रुचिर के साथ खेल रहे थे. कोई किल नहीं निकाले बट 61 टोटल अंक इनके पास भी हैं. I'm really happy to see Cigar Whitey on this leaderboard. At least किसी क्रिएटर ने तो टॉप 8 में आने की कोशिश करी. एंड या सो मैं बाकी क्रिएटर से भी अभी और परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज 2 गेम्स में भी आप इतना प्लेसमेंट पॉइंट्स लेके आ सकते हो कि आप लीडर बोर्ड से वापस टॉप 8 में एंट्री ले सकते हो. तो या लेट्स सी उनका कैसे जाता है. बट पूरे फाइट में, पूरी गेम में एनी स्पेसिफिक मोमेंट यू वांट टू टॉक अबाउट स्पीरो? Well, I think it was crazy, but जो हायर ग्राउंड से हाइपर ने जो 2-3 स्क्वाड्स को वाइप आउट किया वहां पे, I think that moment was crazy to be honest. I thought they would end up getting the victory royale as well, but they were not able to. I still thought कि वो जीत सकते हैं वहां से. आरपीजी का इस्तेमाल काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, बट इन द एंड थोड़ा सा ना ओपन एरियाज में यहाँ पे आ गए थे प्लेयर्स, एंड वही एक चीज थी. थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव नेचर के प्लेयर्स हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन दिखा दिया उन्होंने. अदरवाइज अगर कवर होता तो जीत जाते. मेरे को सबैटिकल एंड जी डुओ का काफी प्ले वहां पर अच्छा लगा. मेरे को लगा कि दे हैड सम स्ट्रेटजी when they used the chrome splashes and went into the enemy space, and if they would have been sneaky enough, क्या पता वो play चल भी जाता. but unfortunately he just came out and something happened and मैं exactly समझ नहीं पाया वो क्या हुआ, and they got very unlucky and got eliminated by the same duo again, Koexi, जो कि of course winner थे हमारे second round के. So yeah, that was very interesting. and also हमको वॉल देखने को मिली साहिल के and उनके डुओ के द्वारा जो बैलून के ऊपर बैठे हुए थे काफी टाइम तक, जब तक उनके ऊपर जोन नहीं आया, एंड उन्होंने आराम से बैठ के लूट लिया वॉल्ट के थ्रू. एंड या एंड में जाके मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा,
और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एलिमिनेट हो गए थे बिफोर द फोर्थ राउंड इवन स्टार्टेड. Absolutely. I mean, there were a lot of great players there, but अब मैं चाहता हूँ फाइनली 2 गेम हो चुके हैं, वार्म अप हो गया होगा क्रिएटर्स का, तो वापसी करने की कोशिश करेंगे. आई वांट सल्बाटिक एंड सुकी टू मेक अ कमबैक. आई वांट सिक वॉरियर टू मेक अ कमबैक एज वेल, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो चहीते स्ट्रीमर्स हैं आपके वो अब कम बैक करते हैं नजर आए. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रोफेशनल्स इन दिस टूर्नामेंट, तो इतना आसान होगा नहीं, बट देखते हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप सिक वॉरियर इस बार थोड़ा सा बेटर कर पाए यहाँ पे. Definitely, and what I am really surprised to see is Bloodline का हमने अब तक कुछ भी नहीं देखा. So I would definitely like to see Bloodline a little more into the spotlight in the third game. And also McQueen हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा except from the early game. Maybe he got eliminated right off the bat or in the early game. She? Yeah, she. She, मैं आपके फेस एक्सप्रेशन देख के समझ गया था. ठीक है, माय बैड. मे बी शी गॉट एलिमिनेटेड इन द अर्ली गेम. हो सकता है. सो डेफिनेटली उनसे भी मैं थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहूंगा गेम प्ले. एंड मेलो हर्ष का हमने लास्ट गेम आई थिंक बिल्कुल भी नहीं देखा. फर्स्ट गेम में हमने देखा था. हाँ, तो मेलो हर्ष का भी मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगा गेम प्ले, बिकॉज मेलो हर्ष जैसे मैंने बताया ऑलरेडी काफी अच्छे प्लेयर हैं. सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको हम नहीं इतना देख पा रहे. सो डेफिनेटली ये क्रिएटर्स के द्वारा मैं और अच्छी सी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा जैसे आपने बोला. एंड उसके अलावा एंड गेम के बारे में बात करते हैं. हमने देखा जी की हाइपर ट्रोफर एंड इथेरियम ने ऑलरेडी काफी अच्छा काम करा, बट मैं क्रेडिट देना चाहूंगा दूसरे टीममेट्स, उनके ओपोनेंट्स को भी, कि जो क्वर्क्सी है एंड उनका टीममेट है, उन्होंने भी काफी अच्छे से सर्वाइव करा एंड गेम. एंड डिस्पाइट द फैक्ट क्वर्क्सी डिड गेट एलिमिनेटेड एट इन अ वेरी वियर्ड सिचुएशन जहां पे 2v2 था एंड क्वर्क्सी एलिमिनेट हो गए एंड उनके टीममेट ने उनका पूरी फाइट कैरी करी. इट वाज अ 1v1 सिचुएशन एंड या उन दोनों को जीजीस. Well, absolutely. I mean, I thought Corsi बचे हुए थे वहाँ पे 1 HP के साथ, और वो he was still there in the final circle with his teammate. It was a 2v1. But still, let's see. बहुत ही amazing यहाँ पे matchup देखने को मिला हमारे stream के ऊपर, and you know I'm glad. I think a lot of people are watching us on different streams on different channels. So I would like to ask you guys कि फटाफट से like करो, share करो, subscribe करो. आपकी favorite game Fortnite का tournament बहुत time बाद यहाँ पे हो रहा है, and you know I'm loving this. Fortnite is coming back in India, and all thanks to Nvidia. Definitely, very very thankful to Nvidia. And yeah, हमने लीडर बोर्ड देख लिया, हमने सेकंड गेम देख लिया, अब हम थर्ड गेम पे जा रहे होंगे. हमारी गेम शुरू होने वाली होगी एट एनी सेकंड. लॉबी बन रही है हमारी बैकग्राउंड में. एंड या लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द सेकंड गेम दैट वी सॉ. सो अर्ली गेम्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक फाइट स्पीडो जो आपको काफी यूनिक लगी हो, कोई डिफरेंट लगी हो? Well, I mean that is amazing, but I just got an update there, so my you know thought process was there कि वो कह रहे हैं कि होने वाला है, शुरू होने वाला है, ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, काफ़ी जल्दी आपको एक्शन यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा. बट जैसे कि आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, आई फील कि जो शुरुआत में हमें टिल्टेड टावर्स के ऊपर जो क्राउड देखने को मिल रहा है, जो फाइट्स वहाँ पे हो रही हैं, दैट इज एक्चुअली क्वाइट गुड. बट आई यू नो व्हाट, it's the third game. It's basically my last game. It seems like that. क्योंकि इसके बाद बूम आ जाएंगे कास्टिंग करने के लिए, तो मैं तो चाहता हूँ अब तो हो जाए, अब उतरते ही बहुत सारी फाइट्स हो जाए, थोड़ा सा एक्शन रुके ना. एंड आई वांट सम ड्रॉप क्लैशेस टुडे. वेल आई थिंक हमको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 गेम्स में हमने देखने को मिला कि ऑफ स्पॉन फाइट्स काफी ज्यादा हो रही है. डिस्पाइट सबको पता है कि प्लेसमेंट पॉइंट्स मैटर अ लॉट. दे आर गोइंग फॉर ऑफ स्पॉन फाइट्स एंड कंटेस्टेड प्लेसेस पे लैंड कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही घर है लूट के लिए. एंड जैसे आपने बोला टिल्टेड टावर्स, डेफिनेटली 3-3 डुअर्स हर गेम पे लैंड कर रहे हैं एंड काफी क्रेजी फाइट्स हो रही है वहां पे. बट आई वुड से कि वहां पर जैसे लास्ट गेम में हमने देखा सबैटिकल और उनके डुओ ने काफी अच्छा वहां पर प्ले दिखाया था, अपना गेम एक्सपीरियंस दिखाया था कि कब फाइट से डिसएंगेज करना है, कब उनको हाई ग्राउंड के लिए जाना है एंड कब उनको बस वेट करना है कि अपने ओपोनेंट्स को ऑफ गार्ड कैच कर सकें. उन तीनों का काफी अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने डिस्प्ले करा था. एंड उसके अलावा अगर हम बात करें मिड गेम में जाके, राइट, हमने साहिल को तो देखा ही था, वो बलून के ऊपर थे एंड काफी सारे प्लेयर्स वो देख रहे थे नीचे जो बुशेस में जाके बैठ रहे थे एंड दे वर जस्ट हाइडिंग एंड जस्ट रनिंग अराउंड. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शॉट किसी पे नहीं लिया, प्रॉब्ली वो अपनी लोकेशन गिव अवे नहीं करना चाहते होंगे एंड सिंस उनके पास स्नाइपर नहीं था वो कोई भी गारंटीड किल नहीं ले सकते थे. तो डेफिनेटली अ गुड प्ले बाय हिम एज वेल.
देखिए ट्रिगर डिसिप्लिन जताना दिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, स्पेशली इन तरह की सिचुएशंस में जब आपके पास डिस्टेंस काफी ज्यादा है अपोनेंट से। इवन दो आप दो टीमों को क्लियरली देख सकते हैं कि वो आपस में फाइट भी ले रहे हैं, दो चीजें होती हैं वहां पे, या तो वहीं बैठे रहिए वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का, या आप भी जुड़ जाइए थर्ड पार्टी कीजिए वहां पे, आप भी किल निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास लूट कितनी है और कितने कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं, और पॉइंट्स टेबल में आपके पास जो लीडर बोर्ड रैंकिंग आती है उसमें आपकी पोजीशन क्या है। अगर आप थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा सा आप सेफ खेलना पसंद करते हैं, अगर आप ऊपर है तो आप थोड़ा सा अटैक करना भी पसंद कर सकते हैं। बट इन द एंड दिस इज इट, थर्ड गेम आज के दिन का काफी जल्दी शुरू होता नजर आएगा। सिगार वाइटी में देख रहा हूँ अभी चैट सेक्शन में यहाँ पे बातें जरूर कर रहे हैं, तो इट इज सो नाइस टू सी हिम हियर एज वेल। देखते हैं कितनी वैल्यू निकालते हैं अगले गेम में। डेफिनेटली मैं सिर्फ गुड लक बोलना चाहूंगा सिगार वाइटी एंड सारे हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं एंड जितने भी प्रो प्लेयर्स हैं, सबको सबको बहुत बड़ा गुड लक। ठीक है, थर्ड गेम है, अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाओ। एंड अगर रिकवरी के लिए कि कोई आना चाहता है टॉप के 30 लीडर बोर्ड्स में, नहीं तो टॉप के 8 लीडर बोर्ड्स में, दिस इज योर चांस। क्योंकि एक बार थर्ड गेम निकली तो दो गेम्स में रिकवर करना इतना काफी मुश्किल रहेगा। एंड या तो ये गेम खेलो आराम से। इवन द स्पेडो वांट सम ऑफ फन एक्शन, आई वुड या सजेस्ट गो, थोड़ा थोड़ा दूर लैंड करो। ठीक है, अपना अर्ली गेम नो नो थोड़ा नो सा इजी निकालो, राइट? यू शुड गाइस, डोंट डेफिनेटली गो लिसन फॉर द टू प्लेसमेंट संशु एट पॉइंट्स। ऑल। संशु की बातें बिल्कुल मत सुनो, इट्स माय लास्ट गेम एंड आई वांट सम एक्शन अर्ली ऑन। तो आप जाओ एक साथ, मैं तो चाहता हूँ 5-6 डुओस कूद जाओ यहाँ पे टिल्टेड टावर्स पे, तो मजा आएगा। यप, टिल्टेड टावर्स अभी फिर भी थोड़ा शांत है, आई वुड से, कि इन दिस टूर्नामेंट। नहीं तो इफ यू सी एनी अदर टूर्नामेंट, टिल्टेड टावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड प्लेस एवर, क्योंकि वहां पर या लूट इतना ज्यादा मिलता है, राइट? एंड इतना ओपन एरिया भी है वहां पे बिल्डिंग्स भी काफी है, वहां पर काफी अच्छा एरिया है। तो स्टिल 3 डुओज वहां पे लैंड कर रहे हैं, तो लेट्स सी अगर ज्यादा लैंड करते हैं कि आपकी बात सुनते हैं सही में वो। एंड लेट्स सी क्या होता है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि जी सलबाटेक एंड सुकी वो तो वहां पे जाने ही वाले हैं, क्योंकि दो मैच से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से तीसरे मैच में भी जाएंगे जाएंगे। ज्यादा फाइट्स हुई नहीं है उनकी, ज्यादा फाइट्स नहीं हुई, बाकी जो दो डुओ आते हैं वहां पे उनकी फाइट जरूर हुई है। सलबाटेक हर बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, स्काउट करते हैं, इट सीम्स लाइक दे वांट टू फाइट इट आउट, बट उनको इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं वहां पे फाइट करने की। पिछली बार भी हमने देखा डैमेज खा के थोड़ा पीछे जाना पड़ा था उनको, माउंटेन पे होल्ड उन्होंने करा जरूर था, बट आई वांना सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वुल्वरीन यहाँ पे चैट सेक्शन में आए तो जरूर है, आ जाओ टिल्टेड, जिसे आना है आई विल बी वेटिंग। वेल वेटिंग टू डाई इट सीम्स। Tilted is going to be really chaotic, that's for sure. And यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा दूसरे POIs के बारे में भी। यहाँ पर हम रेव केव में देख रहे हैं GE, हाइपरट्रोफर एंड इथेरियम को काफी टाइम से लैंड करते हुए। पहले गेम में आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे से सर्वाइव कर लिया, पर सेकंड गेम में उनको डेफिनेटली काफी लक चल गया, क्योंकि उनका एंड गेम में जाके लूट काफी अच्छा था। तो रेव केव डेफिनेटली सीम्स टू बी वर्किंग आउट फॉर देम। इवन कल भी वो यहाँ पर ही लैंड कर रहे थे, एंड उन्होंने 5 सेकंड के अंदर एक डुओ को, उनके ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया। एंड आई बिलीव दैट डुओ वाज फैल्कन डब्ल्यू कीज, एंड उनका जो डुओ था, द फाइट एंडेड बिफोर इट इवन स्टार्टेड। मैं एंड बूम वी वर इन कंप्लीट शॉक कि हाउ डिड दिस इवन हैपन सो फास्ट। एंड या सो उनके लिए डेफिनेटली द प्लेस इज वर्किंग आउट, दे शुड डेफिनेटली कीप गोइंग देयर। एंड जैसे मैं बोल रहा था, राइट, हेरल्ड सैंक्टम, no one wants to go there because there is no loot. No one is going for that high risk high reward AR weapon. एंड यहाँ पर हमारी थर्ड गेम स्टार्ट हो चुकी है। लेवी, so we have Levy on 70 ping here, landing on Fort Chauncey, which got renovated as this update came along. यहाँ पर पहले थोड़ा सा अलग था, देखने को मिलता था, अब थोड़ी प्लेस एलिवेट हो चुकी है, ताकि I'm guessing क्रोम का जो इफेक्ट है जो कि सारे POS में आ रहा है वो इस पे भी ना आ जाए। सबैटिकल ने अपनी लोकेशन तो चेंज करी, रेव केव की जैसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर आने का सोचा, बट वो नॉक हो चुके हैं बिफोर द फर्स्ट जोन इवन स्टार्टेड। सूकी भी यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए, GE का पूरा डुओ निकल चुका है। डेफिनेटली स्पीरो को देख के काफी दुख लगेगा जब वो वापस आएंगे। मैं क्वीन को हम यहाँ पे फाइनली देख पा रहे हैं। सेकंड गेम में हमको इतना देखने को नहीं मिला था इनका। लगता है इनके साथ ऑलरेडी 2 डुओज हैं, तो इनको काफी ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा। इनका टीममेट ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, एंड इनके पास सिर्फ एक SMG है, तो इनको डेफिनेटली लूट ढूंढना पड़ेगा, और इससे पहले वो आगे जाके कोई फाइट पिक कर सके और अपने टीममेट को बचा सके। शॉटगन मिली है पर उठाई नहीं इन्होंने।
नो काफी शॉटगन्स इट इंटरेस्टिंग सीम्स। डिसीजन था वहां पे। वेल एब्सोल्युटली, बट जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं भी काफी सरप्राइज हूँ। सलबाटेक एंड सुकी आते ही खत्म हो गए, और ये तो हम चाहते थे कि थोड़ा सा फाइट्स हो आते हुए, बट फाइट तो यहाँ पे भी चलती हुई। मैक्वीन काफी ज्यादा डैमेज लिया भी है, और आई फील के हर्ष का जो आर्मर है वो भी काफी ज्यादा डैमेज खा चुका है। बट नाउ इट्स अ 1v2 सिचुएशन। मैक्वीन को पीछे जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाए, और एक और गेम में एक अर्ली एग्जिट मैक्वीन की तरफ से आपको देखने को मिली। हर्ष की अगर बात की जाए, आई थिंक देर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। 2 किल यहाँ पर इनको मिल चुके हैं, इससे बेहतर शुरुआत क्या होगी आपकी? डेफिनेटली, एंड अगर उनके इन्वेंटरी में देखे, उनके पास 2 शील्ड्स ऑलरेडी हैं, तो अगर वो अर्ली गेम फाइट्स में जाते भी हैं, इनको काफी हेल्प करेगा। मिंटी गैल एंड सिक वॉरियर की अगर बात करें, लगता है दोनों के दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। डेफिनेटली क्रिएटर्स के लिए इतना अच्छा नहीं साबित हो रहा टूर्नामेंट, कोई इतना ज्यादा खास कुछ कर नहीं पा रहा, बट आई स्टिल विश देम ऑल द बेस्ट। अभी भी 2 गेम्स बची हैं, दे कैन डेफिनेटली रिकवर। बात करते हैं यूकी आर्यन की, क्या एलिमिनेट हुए हैं, क्या शॉटगन पड़ी है इनको मुंह पे एक्सजी ट्विंस के द्वारा। एंड इस 2 ने डेफिनेटली काफी अच्छा करा, यहाँ पे फाइट्स काफी अच्छे से पिक करी, एंड या इन्होंने काफी अच्छे से जीत चुके हैं जी फाइट। वेल बिल्कुल, एडी द चाम्प की अगर बात की जाती है, तो एक किल इन्होंने निकाला, एक्सडी टीम्स ने एक किल निकाला ना। दैट्स हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट किल्स अमंग ईच अदर। इफ यू प्ले एज अ टीम, यू लिव एज अ टीम, यू विन एज अ टीम। मीनवाइल लूट भी काफी अच्छी मिल चुकी है इनको। पनवाड़ी ग्रीडी की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो उनके सामने उनके अपोनेंट्स अभी के लिए तो छुप रहे हैं। देखते हैं कितनी देर तक छुप पाते हैं, बिकॉज हरामी रूलर जो उनके दोस्त थे, उनके साथी थे, वो खत्म हो चुके हैं। नाउ ही इज द सोलो मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। देखते हैं कितनी ज्यादा वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल, एंड यहाँ पर मैं हेरल्ड सेंटम की बात कर रहा था पीओआई में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला 2 डुओज लैंड करे हैं इनफैक्ट, इवन तो यहाँ पर इतनी लूट नहीं है, एंड आई थिंक यही सिचुएशन के कारण उनका टीममेट नॉक हो गया था। आरएनजी उनकी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी नहीं की होगी। कोड वुल्वरीन पे आते हुए यहाँ पर हम बात करें तो स्पॉट हुए हैं एक डुओ के द्वारा, उन्होंने थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश करी, एआर चलाई, बट कोई शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। वुल्वरीन जा रहे हैं अपने एक आइलैंड पे, बिल्कुल ही मैप के मिडल में, एंड यहाँ पे जाके आई थिंक इनको थोड़ा सा और लूट मिल जाएगा, बट इनको अपने डुओ के साथ रहना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई और डुओ इनको पुश करने आता है, ये डेफिनेटली 1v2 सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वही अगर बात की जाए इंडिया गेमर की, तो काफी अच्छी लूट उनको मिल चुकी है। अगर आप देखें तो पंपकिन लॉन्चर है उनके पास 12 एमोनेशन के साथ, 2 शॉकवेव नेड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छी लूट है। शुरुआत के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आई फील के देयर ऑफ टू रियली गुड स्टार्ट, क्योंकि एक किल भी हाइपर यहाँ पर निकाल चुके हैं। आई स्टिल फील के अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि यहाँ पे रेव केव के साथ बहुत सारे प्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं। आई फील के इनके अलावा भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो काफी जल्दी अल्टरकेशन में आ सकते हैं। डेफिनेटली, एंड जैसे मैं बात कर रहा था हाइपर एंड इंडिया गेमर का, तो मनपसंद जगह है ये पीओआई है, लैंड करना रेव केव, एंड उनकी सारी गेम्स अच्छी जा भी रही हैं। मैं वो टच करना चाहूँगा ताकि मैं इनको जिंक्स ना कर दूं, जैसे मैंने बाकी क्रिएटर्स को कल कर दिया था अनफॉर्चुनेटली। बट इनको मिली है यहाँ पर एक वॉल्ट, जिसमें से इनको काफ़ी गोल्ड मिल सकता है वहाँ से। ब्लड लाइन फाइनली देखने को मिल रहे हैं हमको यहाँ पे, इनके पास लूट तो काफ़ी ठीक ठाक है, इनको शील्ड्स डेफिनेटली चाहिए थोड़ी सी, और सम ब्लू शील्ड्स इनकी काफ़ी हेल्प करेंगी। उसके अलावा ये खेल रहे हैं रिप्सो वाइटी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि हम इनको मिड गेम और एंड गेम में देख पाएंगे थोड़ा और ज़्यादा। आरपीजी मिली है इनको, एंड मेरे को लगा एक सेकंड के लिए ये आरपीजी लेंगे नहीं, बट अच्छा डिसीजन यहाँ पे इनके द्वारा, आरपीजी उठा ली इन्होंने कुछ और ड्रॉप करके। काफी एक्सप्लोसिव लोडआउट है उनके पास, गूगन भी है, आरपीजी भी है, तो इन दोनों के साथ वो काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। वहीं अगर ब्लड लाइन वाइटी की बात की जाए, आप देखना चाहते थे इनको, लीजिए आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। लेट्स सी कितनी वैल्यू निकालेंगे आज के इस मैच के अंदर, बिकॉज पहले जो 2 मैच थे इतने कुछ खास गए नहीं इस डुओ के। अरिप्सो, आई फील इट्स अ गुड टीम। वहीं अगर पनवेड़ी ग्रीडी की बात की जाए, अभी भी छुपे हुए हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं हेरल्ड सैंक्टम के अंदर। आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, छुपे ही रहना चाहिए उनको, क्योंकि अगर पकड़े गए तो काफी खतरे में जा सकते हैं। एंड ये जिस पोजीशन में आके छुपे हैं ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अगर इनके ओपोनेंट्स ने यहाँ पर इनको ढूंढ लिया, नहीं तो ये एनपीसी ने यहाँ पर इनको ढूंढ लिया, तो ये यहाँ पर फंस जाएंगे और ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। एंड आई थिंक एनपीसी ने इनके ओपोनेंट्स को तो डेफिनेटली ढूंढ लिया, क्योंकि उन्होंने वूल्स छोड़ दिए उनके ऊपर। बात करते हैं यहाँ पर कोएक्सी की, द विनर ऑफ द सेकंड गेम। लेट्स सी इनका लोड आउट कैसा है। लोड आउट में इन्होंने सिर्फ एक वेपन रखा हुआ है, एआर, और साथ में रखी हुई है अपनी आरपीजी, अपने टीममेट को
टीममेट से आरपीजी के एमओ भी ले लिए उन्होंने, एंड रोटेशन एंड शील्ड्स देखे उनके पास। इट्स रियली नाइस। आई मीन जिस तरह से यहाँ पे उनका लोड आउट है वो अच्छा दिख रहा है। बस सिल्वर की अगर बात की जाए, स्पॉट किया उन्होंने अपोनेंट के एक व्हीकल को, शॉट देने की कोशिश जरूर करी बट शील्ड के सामने वो कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए सिल्वर। अभी जोन के बाहर ये एक घमासान मुकाबला हो जरूर रहा है, और अगर यहाँ पे देखा जाए स्काई अटैक थोड़ा सा फंस चुके हैं, उनको शॉट पे कनेक्शन होगा, बचना बहुत मुश्किल। उनका साथी ऑलरेडी यहाँ से दूर जा चुके हैं, जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आरपीजी दोबारा निकालेंगे गाड़ी का सहारा वो लेते हुए और बच जाएंगे। दैट इज इंप्रेसिव। जिस तरीके से उन्होंने वहां पे गाड़ी का सहारा लिया बचने के लिए वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल, वहां पर उन्होंने शील्ड्स का भी काफी सपोर्ट लिया, 2 शील्ड्स के बबल से, तो उन्होंने बाउंस करते रहे दोनों के बीच में ताकि किसी का भी शॉट ना कनेक्ट हो, कोई बड़ा डैमेज ना आए, एंड इट्स टोटली इंप्रेसिव उन्होंने जो वहां पे सर्वाइव करा। वेरी वेल प्लेड। Well, really, I mean, you know, it's a battle royale, right? ये सर्वाइवल का ही तो खेल है जो यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया। भाई अगर ऐसे टच इनको साहिब बुलाऊं मैं तो चलेगा? I don't know. साहिब ही होगा ये। Yep. साहिब यहाँ पे अभी तो उड़ते हुए ग्लाइड कर रहे हैं टोर्नाडो के जस्ट साथ से इस्तेमाल करके वो आगे जरूर गए उस पावर को। देखते हैं क्या जोन के अंदर वो सही जगह पे जा पाएंगे। अभी के लिए तो जहां वो जा रहे हैं वहां कोर्जी जो लास्ट मैच के चैंपियन से इंतजार करते हुए, और अगर वो वहां जाते हैं एक काफी अच्छा बैटल। ऊपर आप देख सकते हैं हॉट एयर बैलून के ऊपर भी लोग हैं, एंड यहाँ पर फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। साहिब टेक बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए यहाँ पर एंड नॉक हो चुके हैं। इनका टीम में मर्सर अभी तक लैंड भी नहीं हुआ था, एंड साहिब को इतना ज्यादा डैमेज ऑलरेडी लेने को दिख गया। शिवनर्स ऑलरेडी उनकी लोकेशन में पहुंच चुके हैं। इट्स अ 2v1 सिचुएशन अभी, एंड मर्सर को अपना कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो प्लान लगाना पड़ेगा उनको सर्वाइव करने के लिए, एंड आई थिंक उन्होंने एग्जैक्टली वही करा, वो भाग चुके हैं सिचुएशन से। बात करते हैं जी मून फायर एंड एंटी सिल्वर की। एंटी सिल्वर के पास अभी आरपीजी है हाथ में, एंड उन्होंने काफी ओजी स्किन पहनी हुई है जॉन विक की। ये स्किन किसी टाइम पे इतनी ज्यादा डेंजरस होती थी कि अगर आपने किसी के ऊपर ये स्किन देख ली तो आप उल्टा भागना शुरू कर दो। मैं सीजन 1 एंड सीजन 2 की बात कर रहा हूँ, तब हर एक ट्राई हार्ड प्लेयर यही स्किन लगाता था। वेल ये स्किल्स का गेम है बट इन द एंड तो स्किल्स पे आके रुक जाता है। नोवा शिजनट्स अभी के लिए तो जिपलाइन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली, 1 किल निकाल लिया इन्होंने। पिछली बार के चैंपियंस इस बार भी 1 किल निकाल के काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जोन के अंदर जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा करीब है तो ज़्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए, बट इनको भी पता है कि यहाँ पे और प्लेयर्स हैं और वो हॉट एयर बैलून के जस्ट ऊपर इंतजार करते हुए। साबित से आज की अगर बात की जाए तो इनके पास एचपी कम है, आर्मर फुल ज़रूर है इनका। देखते हैं कितनी जल्दी वो यहाँ पे जोन के अंदर जा पाएंगे। अभी के लिए आई थिंक रुके हैं, देखते हैं यहाँ पे अपनी हील को कितनी तेज़ी से वो बढ़ा सकते हैं। या मशरूम का यूज कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 1x लॉर्ड एंड वेक्सीफाई, लॉर्ड को हमने काफ़ी बुरी डेथ देखने को मिली थी लास्ट गेम में उनके लिए, तो आई होप इस टाइम दे कैन डू समथिंग बेटर। उन्होंने पोजीशनिंग ली है बैलून के बिल्कुल ऊपर एंड जोन के अंदर है, तो दे कैन प्रॉब्ली स्टे हियर फॉर क्वाइट अ वाइल। यहाँ पर जोन ऑलरेडी क्लोज हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू फुली क्लोज इन 1 minute and 11 seconds. So the players who are still rotating need to make a decision if they want to continue fighting. Like Quirksy is still holding this place क्योंकि उनको पता है उनके सामने एक duo है कि or they want to go into the zone early and find a good place to stay in. I think they have the lead in the leaderboard, so थोड़ा सा रिस्क वो यहाँ पे ले सकते हैं, बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 2 दिन का गेम बचा हुआ है, आज के कुछ मैचेस और कल का पूरा दिन, तो शायद अभी के लिए तो थोड़ा सेफ खेलना ही पसंद करेंगे। जोन टू जोन रोटेशंस एंड आखिरी तक बचे रहना, प्लेसमेंट पॉइंट्स हासिल करना शायद एक स्ट्रैटेजी बन सकती है कोर्जी के लिए। बट मर्सर को उन्होंने स्पॉट किया, मर्सर वापस आने की कोशिश यहाँ पे कर क्यों रहे हैं? क्या उन्होंने स्पॉट किया है? जी नहीं, मर्सर वहाँ पे हील कर रहे हैं उनके जस्ट सामने, बट अभी तक स्पॉट नहीं हुए हैं कोर्जी। अगर उनको स्पॉट करेंगे तो काफी जल्दी वो डैमेज दे सकते हैं। यहाँ पे क्वर्क्सी काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है बलून के ऊपर भी 2 प्लेयर्स हैं, सो उनको रोटेशन हमको काफ़ी परफेक्टली टाइम करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक इसलिए वो थोड़ा जोन में रहने का डिसीजन लिया उन्होंने। अब जब सब एनिमीज ऑलरेडी रोटेट कर चुके हैं वो आराम से रोटेट कर पाएंगे बिना कोई डैमेज लिए। बात करते हैं वॉर एक्स नट्स की। यहाँ पर उनके पास काफ़ी सारी शील्ड्स हैं और उनके पीछे एक एनिमल आ रहा था, आई थिंक शीप था वो, नहीं तो वुल्फ होगा,
एंड उनको उन्होंने मार दिया। यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन उन्होंने भी ले लिया पहाड़ के ऊपर, टिल्टेड टावर्स के बिल्कुल बाहर। मर्सर अभी भी पता नहीं कैसे जिंदा है एंड अपने टीममेट को रिवाइव करने जा हाय, रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट ये रिवाइव कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी शील्ड इनके पास नहीं है, इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब एक तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं या नहीं। मर्स इंतजार जरूर कर रहे हैं, 17 एचपी बची इनकी है, कहीं यहाँ पे रिवाइव करने के चक्कर में खुद ही गायब ना हो जाए, कोशिश जरूर करेंगे। बट सिजल के पास चलते हैं, सिजल 69 अंडरस्क्रॉल वाईटी वहाँ पे है। मर्स नहीं कर पाए कुछ, खुद यहाँ पे नॉक जरूर हो गए। इनके साथी साहब अब आ तो चुके हैं, देखते हैं क्या वो रिवाइव यहाँ पे करने वाले हैं। नहीं, उठा लिया है कंधों पे अपने साथी को और फेंक के जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश। I can't actually believe that's actually working. वो एक्चुअली दोनों सरवाइव कर गया, रिवाइव भी हो गया उनका टीममेट। वेल प्लेड, गुड स्ट्रेटजी राइट देयर। एंड काफी ज्यादा ट्रस्ट लगता है अपने टीममेट के ऊपर कि वो आके तुमको रिवाइव कर लेगा और अब खुद नहीं भाग जाएगा जोन में। तो यह कोऑर्डिनेशन भी आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में है। यहाँ पर इंडिया गेमर एंड जी हाइपर की बात करें, दोनों के पास रॉकेट लॉन्चर तो हर गेम में मिल ही जाता है। इनको तो गेम बोलती है आप पहले रॉकेट लॉन्चर रख लो, एक्सप्लोजन तो आप करते ही रहोगे पूरी गेम में। साहिब एंड मर्सर दोनों की हेल्थ बहुत कम है एंड साहिब को बहुत जल्दी लूट ढूंढना पड़ेगा अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भी और, क्योंकि अगर आप देखोगे मैप के ऊपर उनके बिल्कुल सामने प्लेयर्स हैं जहां पर उन्होंने जोन में जाना है, उनके बिल्कुल राइट साइड में प्लेयर्स हैं जहां से वो जोन में एंट्री ले सकते हैं। तो उनको काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी साइड से रोटेशन था सेफ रहेगा उनके लिए। एब्सोल्युटली। ब्लड लाइन की अगर बात की जाए तो आर्मर उनके पास अब नहीं है और वो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। गाड़ी में बैठ के यहाँ से रिट्रीट करना एक सही डिसीजन था उनकी तरफ से। जोन के अंदर है, एक अच्छी पोजीशन ढूंढ के वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए एक पोजीशन की तलाश में जरूर। वहीं अगर जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे बात की जाए, ऑलरेडी प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं गूगन के साथ, उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज वहाँ पे दिया जरूर है। इंडिया गेमर 2003 की अगर बात की जाए, इस होल्डिंग ऑन आरपीजी के साथ बिल्कुल तैयार है, अगर किसी को स्पॉट करते हैं तो जरूर डैमेज दिया जाएगा। एंड इंडिया गेमर एंड जी हाइपर अभी भी अपनी पोजीशन में बस बैठे हुए हैं एंड आई डोंट थिंक उनको मूव करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी 28 सेकंड में जो ये जोन क्लोज होगा तो नेक्स्ट जोन कहाँ पे बनेगा। बात करते हैं यूनिक्स एंड वुल्वरीन के डुओ के बारे में। वो प्रेशर दे रहे हैं एक टीम को, थोड़ा डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको भी डैमेज आ रहा है साइड से, थर्ड पार्टी हो रहे हैं वो रिहान और उनके डुओ के थ्रू। एंड उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे से दो डुओज आ रहे हैं जोन से रोटेट करते हुए। उनको रोटेट करना पड़ेगा खुद और एक सेफर लोकेशन पे जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी दुविधा में वो दोनों फंस जाएंगे। देखिए दुविधा तो है और ये दुविधा बड़ी भी है, बट देखते हैं इस दुविधा में से बाहर कैसे निकलते हैं। भाई आश्रय की अगर बात की जाए, टॉप जी आश्रय, आई थिंक फाइट काफी जल्दी यहाँ पे होती है, आपको नजर आएगी। स्पॉट करने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर रहे हैं, गूगन का इस्तेमाल देखने को मिला जरूर सामने उनके प्लेयर। एंड ये गो गूगन के साथ बहुत डैमेज दिया एंड यूनिक्स को डाउन किया जाएगा। यूनिक्स एलिमिनेट हो चुके हैं, वुल्वरीन भी खत्म हो चुके हैं, यूनिक्स भी खत्म हो चुके हैं, QC2X उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। आश्रय लूट अगर देखा जाए तो कुछ इतनी खास भी नहीं है इनके पास अब बची हुई। इन्होंने काफी ज्यादा ऑलरेडी अपनी यूटिलिटी यूज कर ली है जोन में आने के लिए एंड वो प्लेयर को डिफीट करने के लिए। एंड रुद्रा को ये रिवाइव करने की कोशिश तो करेंगे बट प्रेशर आ रहा है पीछे से एंड काफी ज्यादा डैमेज ले लिया इन्होंने। 26 HP पे अभी जिंदा है, पता नहीं कैसे, थोड़ी शील्ड पीने की कोशिश करेंगे बट ये पत्थर इतनी देर तक काम आएगा नहीं इनके, क्योंकि वो पत्थर तोड़ देंगे ओपोनेंट। एंड यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ा है वारी ने गोकू एंड वेयर को, पिकैक्स मारते हुए यहाँ पर इन्होंने गूगन यूज करी है। इंटरेस्टिंग। इट्स अ 1v1 नाउ एंड फाइनली यहाँ पे शॉट कनेक्शन करने की कोशिश करेगी जरूर है आगे जाके एट क्लोज रेंज के अंदर, बट खुसार गेम्स ज्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। गोकू वुड गेट द बेटर ऑफ देम। वारी और कसार दोनों को यहाँ पे खत्म करा गया। आश्रय की अगर बात की जाए, अभी तक वो सर्वाइव कर जरूर रहे हैं और गोकू रिवाइव भी कर देंगे अपने साथी को। आई थिंक जब उन्होंने उन दोनों को पकड़ा वो तब भी रिवाइव नहीं तो हील ही कर रहे थे दोनों एक दूसरे को एंड वापस सेम सिचुएशन में आ गए। इंडिया गेमर अनफॉर्चुनेटली नॉक हो चुके हैं यहाँ पर बट सेफ डिस्टेंस पे आ गए हैं वो ओपोनेंट से। तो अगर जी ही आई पर भी सेम डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा अपने टीममेट के पास आते हैं, रिवाइव यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पर उनको काफी ज्यादा लूट देखने को मिल रही है अपने सामने, उनकी लूट काफी हद तक खत्म भी हो गई थी। लॉन्च पैड यूज करा जा रहा है एंड आई थिंक ये लॉन्च पैड उनको काफी सेफ प्लेस पे ले तो जाएगा बट उनके टीममेट को पीछे छोड़ देगा।
उनके टीममेट पीछे हैं भाई। अगर आप अपोनेंट की बात की जाए, उनके पास भी एचपी ज्यादा नहीं है, नॉइजी के पास एचपी ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे हाइपर सही पोजीशन पे रहे तो एक 1v2 करने का मौका बन सकता है। नॉइजी को उन्होंने स्पॉट जरूर किया है, शॉट दे सकते हैं क्योंकि वो कहीं और बिजी है। आई थिंक ट्रिगर डिसिप्लिन यहाँ पे दिखाई जरूर जा रही है। नॉइजी को अभी भी स्पॉट किया है बट शॉट नहीं दिया जा रहा। पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने प्लेयर को रिवाइव करने की है। नूबचक, ओपी, क्लासिक हाइप, ये सब खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे बुश कैंपिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। वो सिर्फ बुश में नहीं थे, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। इनफैक्ट वेक्सीफायर का डुओ ने काफी अच्छी लोकेशन चूज करी है एंड ट्रिगर कंट्रोल हम देख सकते हैं वहां पर काफी ज्यादा आ रहा था। बट फाइट, इस फाइट की बात करते हैं, हाइपर एलिमिनेट हो चुके हैं एंड उनके डुओ ऑलरेडी एलिमिनेटेड थे। गोकू एंड वेयर ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करा है अपने स्किल्स का। क्योंकि ये शॉकवेव कहाँ से आ गया एकदम से, ये मेरे को समझ नहीं आया। आई थिंक उसके टीममेट ने ट्रोल करने की कोशिश करी, नहीं, इट वाज एक्चुअली एन ओपोनेंट हु इज ऑन द हिल राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। वेयर के बारे में हम जैसे बात कर ही रहे थे, ऑलरेडी काफी लो एचपी पे थे एंड नॉक हो चुके हैं एंड गोकू का भी ओह गॉड यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। काफी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों के द्वारा, काफी किल्स लिए उन्होंने डेफिनेटली। बट जब इतना ज्यादा तुम शोर मचाओगे, कोई ना कोई तो तुमको नोटिस करेगा एंड कोई ना कोई तो तुम्हारे पे किल लेने की कोशिश करेगा। जी हाँ, इधर अगर देखा जाए तो मर्सर अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, बहुत समय से सरवाइव कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी बच ही रहे हैं। बट एचपी थोड़ी सी कम है इनकी, थोड़ा दूर वो आ चुके हैं। सामने से अपोनेंट भी आएंगे और ये बैटल भी काफी जल्दी बनता हुआ नजर आएगा। या यू हैव टू गेट सम प्रोटीन इन। कोशिश तो की जा रही है अपने आप को हील करें। मेलो हर्ष वाइटी की अगर बात की जाए, लास्ट मैच में ज्यादा दिखे रही थी बट अब आ चुके हैं यहाँ पे टॉप 9 के अंदर। एंड टॉप 9 के अंदर तो है ही, प्लस दोनों प्लेयर्स फ्रॉम अ डुओ आर अलाइव और उनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। इनको एक किल भी मिल गई है अपने सामने वन एक्स लॉर्ड की, उनसे इनको काफ़ी अच्छा लूट मिल जाना चाहिए। मेलो हर्ष ने लगता है थोड़ा सा डैमेज लिया है वहाँ पे, पर अब बैठ के वो पक्का हील कर रहे होंगे। किंग्स की बात करें अगर, वो सैल्वा के साथ फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आरपीजी आया है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया एंड दोनों को एलिमिनेट कर दिया एक ही आरपीजी से। What an incredible shot by that guy. Well, Cytec, कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। He's still not stopping, he's still not stopping, he's still fighting there. And क्या दोबारा से एक आरपीजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा? मल्टीपल बैटल्स एक साथ वो लड़ते हुए, शॉट्स उनके ऊपर आ जरूर रहे हैं। And Cytec, he won't be able to survive that. उनको भी खत्म करा जाता है और मेलो हर्ष वाइटी now in top 3, if I presume, right? Yes, he's in top 3 or top 4. Let's see. मेलो हर्ष की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है एंड उन्होंने वेक्सीफाई को आई थिंक स्पॉट कर लिया, जो कि छुप के बैठे हुए नहीं कर रहा है। मेलो हर्ष विल बी कॉट ऑफ गार्ड, पर उनकी टीममेट उनकी हेल्प के लिए आ गए और उन्होंने वेक्सीफाई को एलिमिनेट कर दिया। मेलो हर्ष यहाँ पर रिवाइव हो रहे हैं, होपफुली उनको कोई ओपोनेंट आके तब तक ढूंढ ना ले। उनके पास हीलिंग तो है इतनी कि अपनी हेल्थ को थोड़ी सी वापस ऊपर ले आएंगे। एंड यहाँ पर डीएमटी 12 रॉकेट लॉन्चर एमओ के साथ अभी को स्पॉट करा है ना उन्होंने, बिल्ड के पीछे आरपीजी मारी है एंड अभी भी एलिमिनेट हो गए हैं। 2v2 सिचुएशन बची है। Yeah, it's a 2 versus 2 for the final circle and Google and rocket launcher सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। It's an explosive game. देखना पड़ेगा कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे खेला जाता है। हर्ष वाइटी एचपी उनकी थोड़ी सी कम जरूर हुई है, नीचे जाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, हील करके वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लोज रेंज में एक प्लेयर डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, दूसरा प्लेयर अटैक करना चाहता है, बट ये 1v2 सिचुएशन अब बन सकता है। And now it is a 1v1. मेलो हर्ष के सामने मोब ऑन डीएमटी, डैमेज काफी ज्यादा लिया, एक एचपी थे, अपने आप को हील करेंगे। Still a 1v1. Let's see what he can do. पूरी तरह से अपने आप को हील यहाँ पे करना जरूर है। शॉट का इस्तेमाल करा, आरपीजी उनके पास, बट रीलोड पे जाएंगे और ये रीलोड के कारण उनको बहुत डैमेज का सामना करना पड़ा यहाँ पे। बट मेलो हर्ष वाइटी आगे बढ़ते हुए और ये आरपीजी शॉट नहीं दे पाएंगे मेलो हर्ष वाइटी for the great win there. होली, क्या हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली है मेलो हर्ष के दोबारा, क्योंकि उन्होंने आरपीजी को पहले अपने आप को डिफेंड करा आरपीजी से पूरे निंजा के स्टाइल में, इधर उधर जंप कर रहे हैं वो, एंड इट गॉट रियली अनलकी फॉर द ओपोनेंट एज वेल, क्योंकि उन्होंने तो पूरी प्ले की कोशिश करी, उन्होंने सोचा शॉकवेव करूंगा, फिर आरपीजी से इंस्टेंट किल है क्योंकि उनकी ऑलरेडी हेल्थ काफी कम थी, बट रॉकेट लॉन्चर चला गया रीलोड पर एंड उनको ये पता नहीं था। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिला। प्रॉप्स टू मेलो हर्ष फॉर विनिंग द थर्ड गेम ऑफ Nvidia iCafe Attack Fortnite tournament. So yes, I think we'll be moving on and हम देखना अभी थोड़े से एड्स देखेंगे, राइट, जो कि शुरू होने चाहिए एट एनी मोमेंट। Absolutely, man.
Alright guys, welcome back after those ads and यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे हमारे पास नया कास्टर आ चुका है. Actually पुराना कास्टर वापस आ गया है. Boom has joined us for the evening again. Boom, how are you doing? Hello, Shanshu. I'm doing good. I've been watching the games as well. They have been really interesting today. Um, the second game that I saw, I think it has been one of the most interesting games so far that we are getting to see in the grand finals. Like, दिख रहेगी grand final level पे अब games जा रही हैं, and Hyper and Duo were on such a rampage that game. They're just pushing everyone absolutely, and yeah, like as a viewer, I've been enjoying these games so much, and I'm happy to be casting with you again. How are you doing? I'm doing really good and yeah, 3 games हम already देख चुके हैं and क्या अच्छा प्रदर्शन है हमारे सारे creators and pro players के द्वारा. And last game में boom, I don't know if you saw or not, Melo Hirsch won the third game of the That's Nvidia amazing. iCafe attack. Yeah, and they were facing an opponent who were doing pretty good, but unfortunately one of their plays ended up Oh, yeah, we have the leaderboards थोड़ा सा already. messed up. What Yep, am let's I seeing talk about here? them. Yeah, so the duo that is on the first place is Vibe Lord and Vexify. These are new names for me. I haven't seen them before. They only have 2 eliminations, which is nowhere close to any other duos here, in the leaderboards, and they're placing first with 130 points. Wow, that's just amazing. On second place, we have the OGs. We all must know them, Kurzi and Chipsy. They have 10 kills and 127 points, just 3 points behind the first duo. On third, as expected, Hyper and Ethereum, another very formidable, really strong duo with 16 kills. As I said, yeah, they're just killing everyone. They're just emptying the lobbies today. They're on a different level today, Shanshu. So 107 points for them, Definitely. and they're on the third place. And you can take it over from here. Yep, at number fourth place, we do have the players who came second in the previous game. It was Sizzle and Mobo with 8 elimination and 105 points. Coco Papa and VLX still maintaining their position in top 5 and 97 points with 2 elimination. Virus and Rocarola are in top 8, but they have 0 elimination and 90 What points am I still. seeing here? This just Wow, shows as far how as I know, important placement Shanshu, points are. these guys are always getting kills, aren't they? Yeah, in the previous 2 days, we saw them getting pretty aggressive, but they definitely changed up their strategy today because at 0 elimination, having 90 points is definitely a huge deal. And I wanted to point out the duo that is on the seventh position, Sahil and Asif, the duos from yesterday that Asif and Sahil really played out of their minds yesterday. And yeah, they're still maintaining the consistency for the grand finals day one of the iCafe Attack tournament here. Like really consistent performance by this duo. And I'll be really looking forward to see them today as well. Yeah, and talking about the player, the duo at number 8, I didn't expect Melo Hirsch to play such, good. I mean, he is a good player, not gonna lie there. But that end game performance was really good, and especially getting 13 kills is a victory in itself. And there's such a crazy tournament where everyone is so um, really good at the game, basically, right? And they are in the top 8. Really good to see a creator there in the leaderboards. So yeah, moving on for the Absolutely. last 2 games, it's going to be really exciting to see how these guys do. Yeah, so we just have 2 games left for today, guys, and we are done with the 3 games. And yeah, I'm really looking forward to that. And talking about the last game, and yeah, really well played by Melo Harsh and Duo. So this also goes on to prove the fact that yes, even content creators here can win games, can place there. It doesn't necessarily mean they are any worse than these pro players or these competitive players that are playing. And Melo Harsh is a live example here. Yep, and Noble definitely equalized the playing field a little because building does require a lot of hours, a lot of practice to be put into Fortnite, and taking it out definitely, makes it a little more easier for the other players, for the creators who do not play this game 24/7, like some of our pro players definitely do. Even back in my days, right, when we used to play Fortnite for competitive, we used to grind all the day, play creative, grind those 90s, right? Learn those side jumps, perfect the timing. So yeah, taking the building out, taking that one crucial aspect out of the game will definitely help equalizing the playing field. But boom, did you see all the 3 games that happened today so far?
Not all throughout the game, but I was joining in and out. I was busy with something, but yeah, Sparrow did an amazing job filling in for me, and I'd say even a better job. You guys were amazing casting together. But and yeah, coming back to the thing that you said, there's no build. You said that requires less skill, but I think this compensates, or if this sort of skill level of mechanics go down, then you have to use more of your brains. It becomes more strategic. Somewhat, the game is just as hard, just as technical, just as much skill required, but a different kind of skill required there. And yeah, it's equally challenging as the build mode, just in a different way. That's what I That is believe. very true. Yeah, I totally Yeah. agree with you. But that kind of skill, I'm pretty sure these creators already have because they play so many different games. So they already have a very good level of game sense built up for all the games, especially for the battle royales. Because taking the build mode out, this game just turns into a normal battle royale like any other, like PUBG, Quad M, uh, Warzone, and games like those. And talking about the plays from the last game, did you see any specific play from earlier three games that you want to talk about, Boom? The one play that I like the most would again go back to the end of the second game. This is where Hyper and India Gamer 2003 decided, okay, we see these 3 4 duos, and they decided to push them with their RPGs and their explosive goo launcher, and their aim was so on point. They just they had a broom with them. They saw some dust, and they just clean swiped that with their broom, and like it was very clean by them. And then going on to see the last fights was really amazing. I think it was Shiznats who got the kill mid air. Really good aiming by him, and yeah, it was a very intense end game with really highly skilled players reaching the end. And yeah, it was a really good showdown of 2v2 at the very end there. So it was really fun to watch. Yep. And we also saw GE and Hypertropher landing at the same place that they did in the previous 2 days. They are still going to the Rave Cave, and it has been working out for them. Unfortunately, they couldn't do that good in the last game because they were caught in a very unfortunate situation. So I definitely expect to see more of them from for the fourth game. And coming to the other players, we should also probably talk about the players who are not longer in top eight. Uh, so the team that was in the top eight until the second game, but after the third game they went down, is Cigar, Whitey, and his duo. Hmm. And I think Cigar actually did pretty good in the second game. In the third game, I am not really sure what happened, but in the fourth, maybe he can pick up his pace again and come back into the leaderboards. There's always hope to be top 30. You just need one good game. I think it really just you need one good game and you'll be in top 30. The name that I'm missing today in the leaderboards that we got to see yesterday, who did really well, Silent and W Falcon W Key and Silent and W Key. I guess that's what the Hmm. names were. These players were getting so many kills all across the board, everywhere in the map, and pushing everyone. So I'll be looking out for them. I haven't seen them so far, and yeah, these games are getting so interesting to see. And the no build is actually growing on me. The more I see it, um, I had a different perspective of it before, but thanks to this tournament, iCafe Attack, sponsored by Nvidia. Um, these games are like it's a different type of skill, different type of gameplay, and it is just as fun compared to the build mode. So this is really fun to see so far. Definitely. And the explosions are continuing today as well. Boom. Players are able to find enough RPGs and enough goo guns to really just blow up the entire field. And it just feels like Diwali came a little early. Yeah, or my name came a little early. So they just yeah, so just doing some boom boom. I'm all in for that. I support all the booms. That's my name here. So yeah, I think the next game would be starting anytime now, guys. The players are queuing up. We'll just queue into the game real soon here. So be patient. Talking about the duos that we didn't see much of in the top eight that did really good in the previous 2 days is Akarsh and his duo. If you remember, they were playing pretty aggressive in the previous Really 2 days. aggressive players, kill based players. Yeah, 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 I do know them. and in this today I didn't see them in the top leaderboard after the first game, I believe. So I'm not really sure what's happening there, what they're doing wrong, because we didn't expected them enough. But hopefully they can pick up their pace again as well, and we can see them in the leaderboard by the end of game 4.
Hopefully, yes. Maybe they are still W keying, going for the kills, and it's not working out. Maybe they're getting punished. Other players have learned their lessons how to hold the W key, and maybe they have to change their game style. But yeah, I'm definitely looking forward to see all these players again. They always put on such a great and entertaining show here for all the viewers and us casters. And yeah, it will be really amazing to see them again as well. And so, what are your thoughts? Like, we had this same discussion yesterday as well. And do you have the same opinion on the explosive goo gun and rocket launcher? These two explosives being into the game, because even on this day three that we have, I've seen them being used so heavily, and they have been still so problem causing for the players. So, what are your thoughts on it, Sanshu? Well, I think if Fortnite wants to continue this game in no build, they definitely need to nerf the weapons a little. But I still think it is crucial for players to carry those weapons to the end game, because if it's there, you have to use them to your advantage, right? Or someone else will. So if you find that RPG, if you find that goo launcher, drop your AR, drop your shotgun, drop whatever you have to, but pick those things up, because that things will get you the end game. Yeah. So we have Noisy here landing near. Um, they made it Chrome Jam Logyard, and they'll just be looting this sort of a Synapse station, one of the Star Wars station. And he already got his hands on an explosive goo launcher, just looting up the edges of the map. Here's the basic default kit that he would need for the mid game at least. He also got himself the two big pots already, which will take him to the 100 shield. And here we have our very own Sick Warrior. We all must know him from so many games, and we all have been seeing him since so many years streaming for all of us. He's a really amazing streamer. Of course, he needs no introduction from me. We all know that. He loves to play all these games, and yeah, and I know that because there was a time where he wanted to make Fortnite famous in India, and he made the effort to stream that game for all of us. So yeah, that's really great of him to be. And here Aryan just takes down an opponent with the rocket launcher. He did not have much to work with, but that RPG at the start of the game can be really dangerous, especially in no builds where you can't build walls to cover yourself, and the enemy doesn't have a lot of shields. That RPG really chips you down slowly and slowly, nothing else to work with. Taxbot gets a knock here at Chonker Speedway, clutching up for his duo and reviving his duo Creambot. Just has a lever and a pistol, but he was somehow able to still clean up the opponent duo. We have a duo from GE, Selbatic and Suki. I believe these are the content creators that have joined us today. And let's see what they're doing. They're here in Tilted Towers. And I see two other duos with them here in Tilted Towers, just looting up peacefully. He has pretty decent loadout. He'll be taking the chest splash instead of the Firefly jars. He's taking his time thinking what he wants. Maybe saving the chest splashes later to use with his duo. I must have marked it for his duo. Really like the marshmallow skin here with the wings combo. These all the duos that are here in Tilted, they are very close to each other. So I believe a fight can break out at any time here. Selvatic really taking his time choosing the perfect loadout for the mid and the end game. Noisy here camping on top of a building. I think he has spotted Abhi here, and he does not have any long range weapon to start the fight. But all he has is an explosive goo launcher that he can maybe throw at Abhi here, but he won't do that because I think he's a solo. I don't see his duo on the map. So he's playing it somewhat safe, and he spots Abhi. He tries to go for the goo launcher, but it doesn't connect. And almost gets sniped, running away for his life now. Yeah, dropping down from that building just to get that kill was definitely a good choice, especially because he had no idea where his teammate really was. So he needed to play it more safe, and lucky for him, he didn't have to face too many consequences of that action. Talking about Sabbatical and Suki, this GE duo has been dropping at Tilted Towers for the first two games. In the third game, they did try to switch it up, but didn't work out for them. So they are back at Tilted yet again. And looking at the loot, I think it is pretty good. They have been lucky enough to find RPG this early in the game. And if they play it good, play it right, they might be able to win this fight. And they And he found sees a a llama llama right, here. right in front He's of them. definitely And the going for the llama llama. definitely finds a big pot that he definitely needs since he has no shields No already. shields. He's just collecting the loot from the llama. He'll try to take down the llama with the assault rifle that he has, just chasing it down.
Doesn't seem Just to be get working that good. it eventually gets the knock on the llama, which will make the llama still for a while, so you can easily connect it shots and take it down. Meanwhile, we have a duo here at Rafe Cave, just looting up, getting those full shields from the slurp barrels. He seems to have not a very great loadout when it comes to like not enough much shields, just two shockwaves, but I think they can make work with it if they're smart enough. And there's a fight going on here near this Herald Sanctum. Panwadi and Ruler. I think they just cleared up a duo, a kill for Ruler here. Hmm. I think the Panwadi duo is looking for was the here. it was the top G Ashray and his duo that just got eliminated. Or actually, never mind. They are right in front of him. Probably another duo that just got eliminated by Panwari Greedy and Harami Ruler. And they have spotted top G Ashray right in front of them, but they are so far away that the AR is not going to be worth it. If they had a sniper, this would have been a totally different scenario, and taking a shot might be worth it. They have decided to drop that fight and try to focus more on loot. We have Minty Gal and Sick Warrior here Sick driving in Warrior. a car. Hmm. Sick Warrior being this one of the OGs in the battle royale scene as well. So I'm pretty sure these guys have the absolute game sense of using these vehicles, getting into the right spots or locations for the game, and using the positional advantage and whatever they can. They seem to have decent loot, some shield bubbles and some porta bunkers, a shotgun, a DMR, some minis, a little bit of everything that they need for the game, and they're looking decent on the loot here. Definitely. Now, all they need to do is find a good place in the zone to camp in, to find a good house, and I think that's exactly what they are going to do. They have found an empty gas station where they can probably loot and just hide in. Back to here at watching GE Hyper and India Gamer 2003. They're at their usual spot, Rafe Cave. This is where you would expect them to be at the start of the game. It seems that they have hurt some enemies. There's some fight going on. There may have been an initiation, but Hyper is just patiently camping, waiting for his enemies to run into him so he can just get a free kill. And now they decide to just quietly leave. He doesn't want to make much noise. He wants to leave quietly so he doesn't get followed or chased. Mm. And Sahil seems like landing up on Stutterban. there is a fight that is going to start very soon, since there are two duos in this place, in this small POI, sorry. Seems like the fight is going to be between the team Asics and team Mellow Hirsch. Mellow Hirsch, of Really course, being to the winner choose here, from the right, last round. Shanshu? I'm We sorry. love both these duo. Really hard to choose a duo to be favorable to any duo Mm-hmm. here. I think both these duos have been fan favorites so far. Of course, people True. love Melo Harsh, and then we have Sahil and Asif, who showed really great performance yesterday, and I believe they have gained themselves many fans from yesterday. So really interesting fight that went on. I would have loved to see more of it, but one of the duos smartly decides to disengage and not take the fight. Yep, and we have Cold Wolverine here with an RPG in his hand. They did see Minty Gal and his duo Sick Warrior just riding away in a car and decided not to disturb them. So that's definitely a good decision. And we see Tejas going down by Hyper. Another duo just got eliminated. Unfortunate for them. Hyper has been really going crazy in this match, in this games today, Particular because he day. has been so aggressive in all I'm his pretty sure they fights. must have studied the games, and they do believe that they have the advantage over other players when it comes to being aggressive and W keying and just the better coordination, allowing them to get those kills. And we have here another duo which joined us yesterday, Saitek and Salva. What are your thoughts on that? Never mind, the fight broke out and it was a quick fight. Taxbot and Creambot just getting killed like that when how they always do, easily clearing up the enemies, getting the kills, getting themselves 2 points with easy AR spam here. Melohush and Duo to be senior. I think they're pretty separated. He's waiting for Melohush to rotate inside while he secures themselves a bush. Sick Warrior Yeah. revives his teammate. Mhm. Seems like they got into a fight and there's no kills on the team, so they just were able to escape the fight and get the revive off, which is really great. It's always best to have the complete team going into the mid game here.
That is very true, but the opponents they have started the fight with is none other than Pyro and his duo, who did pretty decent in yesterday's game, and we all know Pyro is a really good player. So it's definitely a good decision by Sick Warrior and Vintigal to just escape that fight and find a safe place to go. Now I believe they are going to use this balloon to maybe go into the zone and maybe just stay here for a while, find some more loot. That's a lot of shields just It's a lot sitting of there in shields this. and whites. Yes, Mhm. it's amazing these balloons have these walls. It's like a quick stop by, get some shields, get some heals, and now they can rotate into the next zone. This was a very much needed refresh for Sick Warrior and the duo here. Looking at the mini map, there's so many duos that are already placed inside the zone, and there's three duos that are at the very middle of the newly formed zone, the white circle. There's three duos camping on the hilltop, and I see a duo still in Greasy. They're still in the storm. Think they'll be rotating a bit late, and the And map if again very you evenly distributed. Mhm. if you look at the bottom left of the map, bottom right, sorry, in cloudy contours, there's a solo just chilling there. I don't think he realizes that he is now safe to go to the zone, because I remember there being a duo there, and it's possible that his partner was actually killed by this duo. Yeah, he seems to be so far away into the zone. He's just being super careful with this to not run into any enemies. He may have enough fights for himself to sustain the first zone and get into it safely as late as he wants to. KZ and Mohak Malhotra rotating inside the next zone here, just using the balloon transportation system. Very sneaky play coming here from Goku and Sahib. They're just camping in the cellar. They have spotted the enemies. The enemies have spotted them as well, just at the same time. They both get hit by the RPG, but yeah, one of them is able to disengage using the shockwave grenade. But Sahib unfortunately wasn't able to make the escape. He has been knocked down, and Goku is getting shot at by the enemies. He is not getting chased though, so he will get away here, but he loses his duo in the process. I'm pretty sure he won't be able to collect the reboot card here. I believe the reboot card will be camped by the enemy duo, and he decides to swim towards the center island, thinking it's clear. But little does he know, there's already two duos waiting here at the island. I think Sick Warrior has heard him. He has spotted two enemies, and he tries to take a sniper shot. He misses and decides to disengage, go towards the other side of the island. And this island at the center of the lake is getting pretty crowded. There's three duos already and one solo that are camping on the island so far. It's not even inside the zone. And same goes for Tilted. Tilted is barely inside the zone. Half of the Tilted is inside the storm. Asif just using a medkit here. I think they'll be leaving pretty soon. 50 seconds left for the next zone. This is the third zone here. Sahil and Asif both looking healthy on shields and guns and mats. They have really good loot here for the end game, and I really know they'll be able to capitalize on this well. Sabatic and Suki finally deciding to leave Tilted Towers in the car, but they do get shot down, they get spotted, they get shot down, and they have no other option but to swim, which is obviously more safer than running at this point because they're at the low ground and they're constantly getting shot by the enemies. Minty Gal with a rocket launcher in her hand, she hits two enemies at once, but she's constantly getting sprayed high and oh my god, it's fire. Take her down. Sick Warrior and the duo gets taken down, but they are soon avenged by this other duo. Oh my god, its firepower gets knocked down instantly, and his duo is barely surviving at any HP. Asif cleaning up the kills here on the airplane, and we see Salbatic and duo did actually make it safely. They're almost inside the zone here, just spotting the enemies and making their plan for the next rotation that they need. And we can see high here only on 14 HP. This was, of course, the duo that was fighting Mintigal and Sick Warrior. And both of those guys were able to do a lot of damage. OMG Firepower did get knocked down as well. And the sad thing is, High does not have any shields or health to help him out in the situation. We have Goku, who is going into the zone actually and using a shield bubble, which is very interesting to see. High only on 12 HP now, making its way to some loot that he can see in the corner. But the thing is, if he finds any player, even from far away, if any player spots him, even one AR shot will be enough And for him to that will die. be his demise. Hai somehow survives all of that, which was really unexpected. He is somehow still alive, taking all that pressure. He was able to disengage, run away to safety, and heal himself up on the blues, the shields, but still very low on the whites. And he just passes by a duo that was camping inside the bush. Luckily,
he wasn't shot at, and he's trying to find himself a better position here. I think he has spotted Ashray and Duo here on the bridge. He's trying to go for a play, no, but he decides that since he's a solo, he decides to play it safe and goes to the edge of the zone here, finds himself a bush. Silbatic gets knocked down here and thrown away into the zone, and so does his duo get spotted and they are killed right away. So the GE duo gets taken down, and here we have High again, the solo player, just spotting his enemies, playing it very smart and very safe. And here we And have talking. Hyper and India Gamer. They have found themselves a really good spot again. I've seen this duo again and again. They find themselves a really good hill. They place porta bunkers there and they just camp and shoot at everyone that they see. Yep, talking about Pyro right here, he does seem to have pretty good loot. Even some chrome splashes to help him in the end game, and his teammate is still alive and kicking. So would definitely love to see this duo making it to the end. Talking about a fight that's happening right here. Top G Ashray is trying to apply as much pressure as possible, but he decides to run away. Pyro taking some fall damage, only alive on 2 HP. Top G Ashray is now healing, hiding in a corner. Pyro definitely needs to consume some shields as soon as possible, and that's exactly what he does. Rudra, teammate of Ashray, is already knocked, and I believe he does have his card with him. So a revive, we might be seeing a revive coming in anytime. Pyro being so sneaky here. He's just a blob of chrome. But I think he has been spotted. This is one of the most He does get spotted by Ashray. Will he be shot at because he's really low HP? But Ashray decides not to shoot at him. He decides his own safety first and decides to glide inside the zone. Pyro, very sneaky player. Really good showcase of the new item Chrome Splashes and how to use it. He gets to safety from a very tough situation, a very tough position where he was under the bridge. And now he spots Ashray. Ashley is getting Who? pressured by some other duos on top. Yeah, He but wasn't I able to cannot rotate spot into- anyone else right there, so I'm really surprised where the damage came from. Now you can see Pyro was stuck in a bit of a trouble there. But talking about Hyper and India Gamer, who Rehan. both got eliminated by Tejas. Very interesting, an RPG play coming in on Harsh. A by double hit from the Aryan. RPG. But none of those RPGs really connected. They both are still alive. Another duo coming in from the hilltop, and I don't think Yuki has any idea about it or his duo. They did knock the Good player RPG down. use. Both the There's way guys. too many RPGs being spammed. It's just Diwali right here in front of our faces. And Volcanic gets taken down as well. Aryan takes down Kurzi as well. And a very chaotic fight full of RPG shots being fired all over the place. But eventually Aryan and Duo coming out on top of all of that. That is for sure. And we can see Kazar Games just got eliminated, and so did Shivnuts by Harsh, of course. Abhi gets eliminated by Salva, and coming back to Aryan, who is reviving his teammate who did get lucky enough to survive all that chaos. Lighter, who is in a very good position, has decent loot, and his teammate is still alive. It does look like he might be one of the duos that survives for the end game and might actually end up winning the game. Rehan and Akash talking about this duo, the very aggressive duo that we have. They seem to be in a very good position here. 6 shockwave grenades with 400 ammo in that hammer assault rifle and 5 chuck splashes. They're just shooting anyone they see gliding in front of them. Going for those kills, and he already has 5 kills, so that's a lot of kills for this game already, and they won't stop at just 5 kills. Looking for more kills. Definitely, and talking about kills, look at this duo. They have a total of 11 kills combined, which is actually pretty crazy to get 7 kills in just one game, and this too in a scrim match. Now we do see 2 duos fighting with each other, and Saitak just comes in, cleans the entire entire fight, and Harami Ruler flying in the air, trying to go towards the zone, but that shot will not let that happen. Shield bubble being popped so that they can heal in silence. Peace. Yes. In peace, yes. Taken down, put down to such low HP. Team almost got taken down there by the RPG, but a good shield bubble which will allow them to heal. Saitek are using shock waves to. Maybe he left the fight to just run into another fight. He's in a bad position.
and he is not able to use that launch pad. You're just half a second away, and he gets taken down. Taxbot and Duo gets another kill for them. This is a 2v2. We're in a top 2 situation with 4 players alive. Rehan and Duo versus Screenbot and Taxbot. Both of these duos very highly skilled. Both of these duos having so many kills on the board for them. And let's see how this final battle of 2v2 goes on from here. Yep, lucky for Rian and his duo, they do have a launch pad. One of them decided to go on foot, and well, the other is actually never mind. Both of them are on a launch pad. The fight has now ensued, and it looks like Arsh is already down. So is Tag Shot. 1v1 was a situation, but it will be Rehan and Akash who will come on top. Yes, Akash coming on top. I believe the first rocket that was fired completely missed, and after that, Rehan and Akash, they didn't miss any shots. They connected all of their shots, winning that aim duel, jumping around, connecting all the shotgun and rifle shots, and getting themselves a victory royale here. That was actually very well played by them. And as soon as I saw them in a very good situation on top of that hill, and then the next zone, they were able to rotate pretty easily. I knew they had very strong chances of winning the entire game. And no doubt their opponent were tough. Like you said, these two duos, they both are really good at the game, very skilled. But having so much confidence since they had so many kills, like we talked about yesterday, kills does definitely give you an advantage in terms of confidence. They were able to pick that last fight pretty confidently and come on top and win the game. Fourth round is now over of this Nvidia iCafe attack featuring Fortnite. And boom, before we talk any further about this, should we go and see some ads? Definitely. Let's move over to that now. So we just saw how good Nvidia Reflex really is. I would like to talk about this further with you, Boom. So can you tell a little about Nvidia Reflex to our audience? Of course, since I'm an NVIDIA Reflex user myself, so basically NVIDIA Reflex reduces your latency. It means whenever you give a command from your mouse or your keyboard to shoot or to move, there is this travel time. The signal goes and it finally shows up on your monitor. Suppose you press this left click on your mouse. So when you press this left click, it commands for the shoot button, but it takes a few milliseconds for the gun to actually shoot in the monitor. So Reflex helps the GPU and CPU coordinate better. It helps to reduce this latency, and it makes the signal go faster. And whatever action you do physically here over outside, it shows faster in the game. So it's a really fascinating technology for me. And talking more about it, I recently got to know this. I'm so astonished by this, that there's Nvidia collaborating with companies, and for the companies to make these mouse and keyboard which work with Reflex. They're specifically made to work with this Reflex feature that is brought to us by Nvidia. These mouse and keyboard directly connect into the monitor, and further reducing the latency for these competitive players and giving them the edge. Yep, and that edge definitely shows up. You can feel the difference when you turn on Nvidia Reflex and when you
use their peripherals. But we will continue talking about that after we check out this leaderboard that is right in front of us. And at number one place, we still have Vexify and Vibe. I believe they were at the number one place in the previous leaderboard as well, with 165 points and 6 elimination. Coming second to no one's surprise is of course Querzi, who has been doing so good in all the 4 previous matches, with his teammate Shipsy at 13 elimination and 151 points. Coming at number 3, it's Rihan and Akarsh, who did a fantastic job last game, and 23 kills. Wow, that is something really. And they are at 128 points, doing pretty good for themselves. Number fourth, we have Ethereum and Hypertropher. They're at 19 kills and 123 points. Before I move on with the leaderboards, I would like to point this out. Sancho, we have been casting for about 2 days now, and you can see like we have never seen these many kills on the leaderboards ever. Like 23 We kills, we definitely have haven't. never seen it reach the 20. So we can say the players have really paced up their game. They're playing more aggressive, and they're just doing anything they can to get maximize their points. Along with the placement, they're getting kills. So because they really want to be in this top 30 to have that chance at winning 1,50,000 rupees. Yep, that is the ultimate cash prize. And it is really interesting to see who is going to come at number one in the matches tomorrow. So, yeah, really excited for tomorrow. We do have still one more game left with us for the evening. And this game is going to be very crucial for everyone. If you are only a few points away, or maybe if there is some a points disadvantage that you are at, this is the game that you need to win or come into top 5 or top 3 for you to have a chance to come back into the top 30 and qualify for tomorrow. So I would suggest everyone to play as slow as possible. Focus on your placement points, right? I would like to see as many as creators and pro players as possible going into the top 30 tomorrow. And I wish you all good luck for the last game. Yeah, the fifth and the final game for today. Yeah, what Sancho said is very correct. You should not give up. Like, even if we're not close to top 30, I can guarantee you through the point system and my experience, if you're able to place top 5 in this, you will definitely make it to top 30. So all you have to do is still be patient, not give up. To all those content creators or anyone who out there who feels demotivated, there is no reason to be demotivated. You still have a chance. Go at it, give your best, even if it's the final game for today, and get that chance of getting into top 30 and competing tomorrow for the grand finals day 2, where you get the chance to win rupees 1,50,000 again. Thank you so much for Nvidia sponsoring this iCafe Attack tournament featuring Fortnite. Really grateful and for them to do this and bring all of us together here to enjoy such a lovely event. Yep, I'm actually honored to be a part of this entire thing. It feels like a privilege, right? Because Nvidia made all of this effort organizing this tournament, and here we are casting these games, watching these wonderful players show their performance, show their skills, and then there are creators joining us, having some fun, right? Trying their best. So this is a really exciting. And yeah, fifth game should be starting at any moment, but meanwhile we will talk about the previous game. And we did see a little bit more of Bloodline. I believe he was able to get a couple of kills, he and his duo, but I would definitely like to see some more action by him in the last game. Talking about another streaming duo, that is Minty Gal and Sick Sick Warrior. Warrior. Unfortunately, yeah, they tried their best to escape as many situations as possible. They definitely do realize that placement points are very crucial for them to qualify, and they were trying their best to survive for as long as possible. Unfortunately, people kept popping up left and right near them, and unfortunately, they were uh, taken down. Uh, yeah, so moving on. Do you have any particular fight that you want to talk about, Boom? When you ask me about any particular fight, this is for the first time. No particular fight comes to my mind because the last game was so action packed. There were way too many fights to have one particular fight in mind. We saw so many fights, we saw so much action, and again, like people had way too many RPGs on them, and
the fight of the RPGs. Okay, there's one particular fight that I liked. There were three duos under the same shield bubble, under the porta bunker. They kept firing the RPGs, and eventually one duo came out victorious. So yeah, very action-packed game, very fun game to watch and cast, and was really fun overall to see that. How about you? Is there any particular fight that you would like to point out? Uh, None of them really comes to my mind, but I did miss Mellow Hirsch in this game. We only saw a little bit of him. I believe he might have died somewhere in the mid game. Really unfortunate for him. He was in the top 8, but now he isn't anymore. I would like to see some more performance by him as well. And yeah, Kwarzi and his teammate Shipsy being in the top 2 is definitely no surprise because they have been playing pretty aggressive as well. They had a lot of skills, and not to mention their playstyle has been very aggressive as well. Making it to the end games while being aggressive is definitely an achievement in itself. Yeah, of course, definitely. We know these players since the very start, and we have hyped them up. The chat is full on supporting them, and they're really living up to the expectations, to the name that they have built for themselves in the Indian Fortnite community. And yeah, really, really good showcase of their skills being shown. They're performing as we expected them to perform. They're showing us kills throughout the map. They're pushing the players. They're showing really smart, aggressive plays. Rather, I would not call any of these plays brain dead. I would just call them really calculated, aggressive plays, which they they're always in the advantage. They know when to go aggressive. They're making these plays and they're playing to their advantage, getting those skills and the points. They're gonna. I think it may cross 200 today. Even cross someone may cross 200 points today with how it's going. Definitely, because we also have 5 games in total today instead of the 4. And with all these content creators, it's really amazing. Truly a sight to watch. Definitely. And I would like to talk about our duo that has been dropping non-stop in Tilted Towers. It is the GE duo, of course, I'm talking about. We did see a lot more of them this game, which I'm really happy about. I hope they continue to keep doing better and we can see more of them in the round in the game 5 as well. And yeah, so they have been landing in the Tilted Towers for the past 4 games and only in the past 3 games, and only one game did they decide to land Rave Cave. But little did they know it was the same place where Hypertropher have already captured the entire area. Like no one else is allowed to land They at don't that drop spot. there. If you Yes. remember from yesterday, it was W Keys, Falcon and W Keys. Actually, Falcon, W Keys, and Silent, right? Their duo did try to contest them at the spot, and they were vaporized. They died so quick. So we already know Rave Cave is definitely not to be messed with. You do not contest there. Yeah. Talking about the GE duo, they do seem to be not veterans. They are like beginner players, but a big shout out to their sportsmanship. Like if I was a beginner at this game and I know there is this spot known as Tilted Towers, I would not dare land at that place. But they have been landing there for so many games back to back. They're getting their loot and they're showing such fun games, making this event so much more fun for us. It's really truly amazing of them, and yeah, I'm really happy to see these content creators still giving their best, even though there's players who have been playing this game non-stop for 4 or 5 years, and yet they are showing great sportsmanship regardless and not getting demotivated at all. This is really amazing of them. Definitely. And there is one specific play I do want to talk about from the last game. If you remember, in the middle of the map, on the island, there was one player alive, only on 12 HP. It was high, right? He Hi. was trying his best to stay alive. And I think he did a pretty good job. I think he was able to survive that entire situation, gather some loot, get some shield, and then make it all the way to the zone. So yeah, definitely good performance by him. We saw a lot of even Mercer, if you remember from the previous games, he had to go through something similar. And yeah, so if your teammate is out, you should definitely try to focus on getting those crucial points, right? For the placement points, that is so important. Instead of going for the kills or taking revenge on the players who did kill your teammates. Yeah, of course. So, guys, please be patient with us. We'll be getting into the fifth and the final game for today at any time now. Um,
I would like to also point out how they were like this zone specifically for the last game. There was very high concentration of duos at um, where the zone closed. Two specific such places were the island where we saw three duos, four duos, almost four duos. It was a solo, and for Tilted as well, we saw four duos there fighting there, and that is why I think there was players being eliminated so fast because of this particular circle that we had. So much concentration of players at just one place, and of course, we're not complaining about the more action that we got to see in this game, more shots being exchanged and more gun power, more explosives. Yeah, keep going, players. We are celebrating an early Diwali here at the iCafe Attack tournament with all those RPGs and explosive goo launchers. Keep up the show, and yeah, really looking forward for the final game for today. And just as I expected, with each further day that we go into the tournament, it keeps getting more intense, more intense and more exciting for all of us to see here. The players have been increasing and upkeeping their performance as well. They're showcasing their skills to even very new next level that we did not expect. And yes, it's really interesting game so far. Definitely. And you were talking about Diwali and explosions. I really hope you are not able to hear all the पटाखे जो मेरी गली में भी यहाँ पे फट रहे हैं. People have been celebrating Diwali since this week even started, and there have been a lot of firecrackers that have been bursting all around my neighborhood. So I hope उसकी आवाज ना आ रही हो, right? And it's not No, disturbing there you is because I can hear a absolutely lot of no it. sound, Shanshu. Talking about that, I would also suggest all our viewers watching here, please minimize on bursting crackers. We already know we have so much pollution in our country and the air quality is not that good. So let's not further add to that. Have a safe Diwali, have a happy Diwali, light some diyas, spend some time with your family and try to minimize or even not burst any crackers, and it would help all of us immensely. So have a safe Diwali most of all. Please don't harm yourself while bursting those Definitely. bombs. And if you want to celebrate Diwali so badly, of course, you have all these new explosive weapons in Fortnite. Hop into a game of solo or duo or squad with your friends, and or even creative and shoot some RPGs at yourself and get the kick out of that. Plus, please have a safe Diwali, all of you. Definitely. I couldn't agree more there, Boom. But yeah, talking about the previous game, since we do have still some time left for the fifth and the final game for the evening to start. Talking about the previous game, if you remember Yuki Aryan and his duo, Voxy, I believe it was, they were going down Boxy is on. with Lighter, I think. Oh, sorry, We it call was him Vague Volcanic. My Lighter. bad. Yeah. It was Aryan and Volcanic who Volcanic. were dropping down on a duo from a hill when they were caught in a bad situation. Uh, when there were two players coming from behind and two players right in front of them. And so, yeah, they were caught in a very bad situation, but they still made it out. If you remember, these are the duo that killed Corzi and his teammate who were hidden right beneath a Bota bunker in a very quiet This corner. is But this is the yeah, so RPG exchange. I was also talking about Sanchu. One particular fight that I remember from the last game is there's uh suddenly these three duos in a shield bubble and they all have an RPG in their hands and they're just shooting at each other, and whoever survives, they survive. I don't think there is much thinking involved. It's just you see enemy, you shoot, and if you're lucky, you survive the fight. So it was really chaotic, really true. fun to see, and yeah, this is one particular fight I And had in my mhm. mind as well. Yeah, someone in the chat said, ironically, your name is Boom. Uh, Just to yep, spread awareness that is on very ironic. Boom. Yep. It's just like I'm telling you how to boom safely. So yes, when you True. boom those crackers, be safe. I'm not promoting All any right. sort of bursting crackers, guys. Please don't be confused or misled. Yes, but Definitely, irony is definitely. there. All right. Yeah. Talking about more from the previous game, if you remember, there was a fight that happened between Pyro and Top G Ashray on the what was it? The bridge, right? That was a very interesting Yes. fight as well, where Pyro survived on very low HP and was able to get out of the situation. But we are finally into the fifth game, and talking about sabbatical, the GE duo here seems like they have decided to switch their drops. And yeah, let's hope this works out for them. On the other side, we do have the streaming duo Sick Warrior and Minty Gal going towards the
I believe that is icy area of the map. Is it the north Yes, side they or the west definitely. side? We'll have to see This though. is the this is the northwest side of the map, and Mhm. we have Suki and Silbatic. They're landing at the eastern islands here. Totally different landscapes here for both the duos. They're landing at the house with the maze, and this house definitely has a lot of loot as far as I know, and it's uncontested for them, so they'll be enjoying all the loot to themselves there. Meanwhile, there's a fight. So we see two duos here at almost, yeah. There's three duos here at Shiny Sound. Okay, there's two duos here at Shiny Sound. They're so close to each other, but there still has been no engagement so far between the two duos. And there we go. Just as I talked about that, some extra shots being exchanged at the champ, and XG team just pushing with their shotguns and rifles. They take down Hungry, and they're just going for the solo. They're going to be chasing the solo, but the solo escapes with the shockwave grenade. Yep, Kowarski is down, which is very unfortunate. Hunger Joy gets taken out as well. Now, talking about NT Silver, I remember him. He is a streamer from back in the day as well. So, would definitely like to see how he does in the fifth and the final game for this tournament for today. Volcanic Sid and Yuki Aryan, of course, landing on a very non contested area on the edge of the map. Mm-hmm. Just in this is the north of the Shiny Sounds, and this side itself has more than enough loot for four players, so they're just enjoying this side to themselves. Meanwhile, there were two doors on the south side of Shiny Sound, which is the main Shiny Sound, which one of the doors I seem have died or escaped. Here we see GG Monfire and NT Silver. They're just looting up here, and they may hire this NPC for their personal protection. They Yep, have coming back gotten to the most recognizable weapon from this patch so far, the rocket launcher, the pumpkin launcher that they have got their hands on. I'm sure they will definitely put it to good use. talking about the GE duo once again. They are in Herald Sanctum now, just flying away in the tornado. And by the way, fun fact, guys, if you are in this tornado, you will get the superpowers of the Chrome Splash for a couple of minutes, I believe it is. So you can turn into the blob, you can face through the walls, you don't have to use Chrome Splashes. That's amazing. A mini or a handy chrome splash. If you don't get your hands on one, you can just get into the tornado. Tornado gets taken down while breaking a wall. He gets sneaked up behind. And another trivia for you guys, Silbatic here is actually the CEO of Global Esports, playing the tournament himself. So a big shout out to him. Yep, Sahil and Asif here. I Yes. truly do like how they're just enjoying and having fun and being competitive at the same time. This is what gaming is all about, right? Yeah, definitely Shanshu. So one of my favorite duos from the tournament here, Sahil and Asif, we all have our eyes on them. They have been showing amazing performance, just camping on top of the hot air balloon. They're just waiting for the zone to close in, and then they'll take their time to just go inside the next zone and find the perfect spot for themselves. Skid and Skangs, This as you can three see, duos Skangs here. already has a golden shotgun, which should help him a lot in those early games fights. Find some more splashes, but he cannot unfortunately carry them. Does shade the weapon with the Evo Chrome AR, which is definitely a good idea. Vaxi here, meanwhile, is low on shield, so he's using some splashes. Porta bunker is being used by Kengs. Sid is already very low on HP. He spots a player. It is the GE Suki, and unfortunately, he will get eliminated right there. And since he did get insta eliminated, I believe Sabbatical did also get Both knocked the out duos were earlier. taken down at the same time in the same fight. Lighter and Navy just gliding away from the enemies here. I think those are they probably could be NPCs, but they were getting shot at, and they just decided, okay, that was another duo, not NPCs.
and they just decide to disengage. They have no extra shields to work with. Baby is out of any sort of heals here. Just on 150 HP. You have Kasar Games and Varii here. They have a car to themselves. They'll be rotating inside the next zone, finding themselves a good position to camp at, just chilling. There's no one close to them, so they have all the place to themselves. They're pretty safe here. Meanwhile, whenever we go on to R7 Sahil, then half the time they're either rotating or they're shooting or fighting. They're always busy with something, never giving themselves any free time. And here they are Yep. fighting the Mellow Harsh and the duo, applying pressure on them from the height. And moving on to this fight is Grim Cables. Yep, XG Twins and at the Champ are at the Grim Gables, as you said. And I think they did spot a duo right in front of them in the building, but it was only for a second. Now they are probably deciding what to do with that information. Coming back to Asif and Sahil, they are still engaging in a fight with Mellow Harsh. Both of the duos are still alive and they have enough shield. Looks like no damage has been taken from either side just yet. And Asif is playing very aggressive. Looks like he is thirsty for this kill. He spots Mellow Harsh, does He some damage. dragged Mellow Harsh will Mellow get Harsh like taken a down. book there. He knew Mellow Harsh would climb up from the other side and go for the launch pad. He was already waiting there for Mellow Harsh. He perfectly picked up the footsteps and he gets the knock before he's able to use the launch pad. He hears his duo as well, takes him down. Oof. 2 kills for Asif and duo and showing so much aggression and really good read of play there, reading Mellow Harsh so nicely, already waiting for him to use the launch pad, catches him there, kills him. They have this medkit he'll use, very clutch medkit by him. He was almost about to go down to the storm. Gonna heal up to full HP, and they have all this extra loot, and they'll be going inside the storm, getting themselves those 2 extra points, which could make the difference at the end here. Very true. We could see there was a lot of shields there and a lot of better AOT weapons. So they should be pretty much set for the mid game now, which is about to start. And coming to Ashray, he's taking down Cigar Whitey. Gugan coming in clutch. Cigar Whitey goes down. Ashray and Rudra both alive at the moment. Looks like Cigar's duo will try to escape and go into a safe area. Meanwhile, Ashray is stuck. He's actually stuck. Under the porta bunker, and he's getting Oh, shot. no, There's no RPG. way to go. This is very unfortunate for him. Wow, And he's stuck what a- again. There Back is to no back, way. getting stuck under his own bunker. But that RPG did him damage, but also got him unstuck from that place. And talking about whenever we move on to Whoa! spectate Cigar, this is the streamer's curse or the spectator's curse. Whenever we go on to spectate him, he instantly dies. So I guess to wish him some luck, we should not be watching him much so he can have safer games. Yeah, but can we talk about that shotgun to the face while the guy was in the car? And Rudra here using RPG, but to his... He's outnumbered, he gets taken down, not able to dish out much damage before getting knocked there. Aripso, Whitey and Karthik getting a kill for themselves. Meanwhile, we have this duo that I talked about yesterday as well, Ritik and Karthik. They became a duo because they have rhyming names and they're showing great performance here. We've seen them consistently make it to the mid game and leader in the leaderboards here and there. Wow, They get that was 2 kills actually for very well themselves. played by the duo Ritik and Karthik. Karthik did use the RPG to start that fight off, doing some guaranteed damage, then switching to the shotgun and the AR to finish his opponent off. Sahil, meanwhile, in a lot of trouble, will get taken down. I believe that was Rehan who did so much damage Rehan towards Akash. him. Yes. And these 2 duos that went against each other the last game, I think this time Asif, after reading the names, he will be playing extra safe and would try to play solo here, maybe go for the reboot card if he does have the time. But yes, I definitely know he wouldn't go for the 1v2 there after reading those 2 names. And what a sneaky play here, Bloodline getting caught off guard by Wow. Mercer. He was just camping there waiting for Bloodline to run into him and gets a shotgun shot right off the bat on him as soon as he sees him. I was just about to say, look at the loadout that Bloodline has, and they were able to kill 2 opponents just before this, so they should be pretty set. But unfortunately, Mercer did find both of them off guard and takes them both out solo. He's definitely angry from that round, from that game where he had to solo clutch to the top, and it looks like it's happening yet again. He's
his teammate is nowhere to be found. And But coming here what's to happening Abhi and here? Cyclone, I think this is a strategy. This in this particular game mode in this particular place, there's a tunnel at Reef to go down. If you glide under the bridge, there is no way anyone can come and shoot you. So this is guaranteed survival for them. You remember yesterday a duo was trying to find an angle to shoot an RPG at them. All Abhi right, and Saikun I here. Yeah. So yeah, where was I, I was going to Shanshu? say it seems Yes. like there are actually three players there instead of two. So I believe there might be a solo just chilling with them. And there's a place like this is the safe zone kind of place. Since you're gliding, you can't shoot each other, and no one else can find any Hmm. sort of angle with their guns or RPG to shoot at you. So this is a very niche trick in the game. I don't think many people know that they're somewhat using here to stay alive and guaranteeing their survival, saving those resources and HP, and not getting into any fights. Yep, and looks like there is a fight that has just ensued between the team Lord and the team Tejas. Both of them did exchange some shots, but no one took any damage. They had a car that they just ran away in. Fortunately for him, he did find a car and probably going to pick his teammate up and go away from here. Lighter and Vaxi are also here, and they're also trying to disengage from the fight as quickly as possible. Look at how many players are there in this small area. And especially being a fight in this area is definitely not a good idea, especially because since the Fortnite Mare started, the zombies have been added back into the game, and you know how annoying they can be. Yes, one thing I know, you stay away from those zombies unless you are the MMT trio, Mongral, Mitro, and MMB, Benji. Yes, that duo, they know how to take those zombies down for their advantage, but those zombies will definitely get you killed and draw so much attention towards you. So Saikun and Abhi finally leaving that very safe place, and that using this really amazing trick of staying alive and guaranteeing that nobody shoots at them or spots them. They just fly out of there and they'll find a good spot to land at, getting shot from uphill. Yep. And we do see Saikun and Abhi. Looks like they have decided to go out from that area they were hiding in, probably because of the zone. Saikun did, sorry, not Saikun actually. Abhi did use a shield, and Saikun used a Potafort. They looks like they are probably going to just chill in this area. There is a duo that just uh, drove by them, and Abhi did try to uh, use his gun to do some damage, but it wasn't possible since the car did protect that duo. And there is mob on DMT right in front of them. He might be able to spot Abhi and his teammate very, very soon. Hiding in this Pota bunker is definitely not a good idea, because if there is an experienced player, he'll just use a Shoot the RPG, RPG, right? Yeah, just to of check course. if there's anyone hiding. And when you Because see that it's damage definitely worth splash it. from the RPG, you're definitely going for the kill. So yeah, the 110. portal bunkers are pretty tricky to use, and they do not provide much cover from every place. So players have to make do with whatever they have, and there's also just that one particular disadvantage of an RPG being shot there. Harsh gets taken down here by Sizzle, and his duo Hyper has just decided to hide. He's not going to be fighting the duo, or he won't go for the revenge. Hyper, I'm not able to tell where exactly he is. He seems to Yeah, be I'm trying under to figure out the same thing. Port bunker, which is next to these granite or marble sort of structures. And Akarsh If has three uh-huh. kills on him. Rehan's duo, Rehan had one kill. He has been eliminated from the game, but yes, as expected from this duo, they'll always have some kills on the board for them. Yep, these are the guys who just go crazy in each round, each game. They need to get some kills. They need to show their dominance, right? And put fear into their enemies by getting so many kills. And we have Hyper here. Did change his position, get out of the previous bunker he was in, and used the Porta bunker yet again.
And yeah, Seems to be this in the I think same this place to situation. me, just staring into the walls. I'm not sure though. But can we talk about the map here, Shanshu? This is a pretty interesting zone. There's there's a lake in Hmm. this zone, and half of the zone is almost water, which is like the water is at the center of the zone instead of being at the edge, which usually the case is. So I'll see how players play in this zone where there's not much land and you really can't be staying in water because you can't build. So let's see how players will adjust to this, and I believe this zone will push players to fight so much at the edges here. Definitely, and we just saw one of the duo getting taken out by Skens, and then his teammate Sid got taken out, so he had to improvise and go into the zone to collect some loot and Asif gets escape a from the loot here. situation. I believe he's solo, yet he's still getting kills on board. Anyways, regardless of this situation, he's still going aggressive, still getting those kills. What just happened And here? some Wait, explosive goo launcher. oh, these guys What? looks like they are in a bit of a trouble. Their car does not seem to be working fine. Mechanic might be needed to fix that. And here comes the goo launcher being used by the opponents. Hyper and India Gamer definitely needs to get out of that place because it's not safe for them at all. They get out of the car and use the shield bubble. Is definitely a good decision. And looks like It's a they're already three-man in team zone. for them. Really interesting of them to hire this NPC, which will be like their personal bodyguard. They've spotted a solo player, they'll definitely be pushing him, and I believe they'll get the kill on him anytime now. Here we have Abhi and Saikon, the really smart, sneaky duo who kept gliding under the Rafe Cave tunnel, and they found themselves like in such a great position after leaving that tunnel down there. There's four dudes on Yup. top of the hill. Hyper and Indie Gamer have spotted them, but they know it's not smart to shoot at players who are at high ground and you're on the low ground. Abhi just trying to finish the kill doesn't go completely for it. But Hyper and Indie Gamer seem to be pushing these duos who are fighting on the other side of the lake here. They're just spamming them with explosives and their rifles and just cleaning up and getting some extra points for them. They're already on 5 kills, which is pretty good. Now they're sneaking near the hill. This is such a sneaky play. They're trying to catch Cyclone and Abhi off guard, and they do. They get a knock right away, I believe. No, they don't. But yes, they'll be pushing Cyclone. Cyclone is really low HP. It's just almost 1 Yup. HP that he escapes at. Abhi is trying to go for some shots. He takes down India Gamer 2003, and this aggression really didn't play in the favor of Hyper and India Gamer. Hyper in a 1v2 situation now. He's really low HP, and he's somehow trying to escape and Oh for his no. life, and the play did not work out for them. They do get taken down by Abhi and Cyclone. Really good counterplay from the duo, and yes, they get kills on one of the most notorious duos in the tournament. Yeah, definitely. But I still do believe they are going to hold their position in the top 30. That's for sure. Talking about Salva and this and Cytec, they seem to be doing quite good for this game. They are in the end game now. So let's see how good they'll be able to use their resources and their weapons to survive this end game. Goo Launcher did get stuck on his body, which is unfortunate. Goku is just going ham with that gun. And Salva, who is in a car trying to go into the zone, it seems like Goku is just firing his weapon at anyone that comes in front of him. Blue launcher being used by him and his teammate. And like I was talking about, that RPG takes corners are them definitely not a down. good place to hide, especially when the opponents do have that RPGs in their hands. Cytex Alpha still alive somehow uses the shockwaves to go on top of that high ground on that Salva is hill. trying his best to go up there and get some shots on the hill. Duo on the hill, but the duo on the hill is holding their position so well. Oh my god, it's firepower and high, making it to get another end game here. And just spamming RPGs at Salva. Salva shockwaves up, and I believe he'll be. Yeah, he gets taken down by Abhi, and Abhi gets taken knocked as well at the same time. Oof. And that was a very quick end game high and do oh my god, it's firepower taking the win here, and that really great positioning. Sancho, I believe they were on top of the hill most of the time. They held their position so well, and any duo that tried to contest them, Cytec and his duo, they were like, you come up, we'll shoot you down again. And really good, amazing play by them, holding the king of the hills here, I must say.
Definitely. I mean, the performance was pretty good, and they did hold the high ground pretty good as well. Unfortunately, the play that was made by, I believe it was Abhi and his duo that went tried to go on top of the hill, right? And No, the it end was game, Hyper and India Gamer 2. Oh, it was Cytec and Duo that tried to go up on the hill using Saitik and shockless, but duo. they failed to do so. So it did not work out for them, which was unfortunate. And if by chance they would have been able to take out the King of the Hills for that game, they might have been able to win that game for themselves, but unfortunately it did not happen. And talking about Haifa Trophy as well, getting eliminated before the end game started, that is pretty unfortunate. A lot of good fights happened in this game as well, and we will talk about them a bit more. But before that, it's time for some ads. Let's go. I believe Nvidia wants to see more of us and not the ads. Really, Yep, uh, maybe. it's a pleasure, You know what? Nvidia. So Uh-huh. there All we right, go. so that was Nvidia Reflex for you, and boom. Do you want to tell our audience a little more about Nvidia Reflex once again? I guess let's talk about that later. Here we have the leaderboards with us. And Vexify and Vibe Lord, they're maintaining their lead. They've maintained the lead from the past 3 games, still on position 1. 7 kills and 187 points for them. Really playing that placement game. Very strong, very consistent gameplay by them. On second, we have Goku, Papa, and Bear with 3 kills and 181 points. On third, the fan favorites Hyper and Ethereum with 24 kills on the board and 165 points. Cytec and Raisin 27 kills and 159 points. Saikon and Abhi, the duo that really stepped up last game with 8 kills and 159 points. Querzi and Shibzi doing really well as well with 13 kills on the board and 151 points. Rehan and Akash 27 kills, just same as Cytec, and they're on 149 points. And Volcanic Sid and Yuki Aryan following up with 14 eliminations and 145 points for them. So those are the leaderboards for us. I'm just totally in shock. 27 kills. That's truly something. And even though it was 5 games, but 27 kills in 5 games is a huge thing, especially in scrim matches when each kill is so hard because you are facing such hard opponents that are on the same skill level as you. Truly, truly interesting and well played by all the guys. Congratulations who are in the top 8. And yeah, so I wanted to talk about one specific play here by Hypertropher, right? We saw him hiring an NPC to help him out. So it became a 3-man team in duos. So I wanted to tell you why it's so valuable to get an NPC for your team now, because you can actually control the movements by using emotes that are specially created for them. You can throw up a different type of emotes. If you remember, there were emotes for asking your teammates for ammo and stuff like that, right? So it's the same Yes. type of a scroll wheel thing that you can use
to control your NPC, which gives you a lot more advantage for having that on your team. And I have seen them do this all day. They have done this in the previous games as well. It seemed like it did work out for them in the previous game, but this time one wrong play, and they were out. They should not have They gone probably on top of the hill. underestimated their enemies, and Abhi put on such a great fight. Anyways, that concludes Definitely. the fifth and the final game for day third of this iCafe Attack tournament, sponsored by Nvidia, featuring Fortnite. What an amazing 5 games. I'm so happy to have tuned in with you, Shanshu. It was really fun to watch. And again, I would like to thank Nvidia for sponsoring this tournament and the players for playing in this, all the content creators that have joined us, Sick Warrior, the GE Duo, and such many and another amazing content creators, and all the audience that we have here watching us watching these players play these games. I would like to thank all of them as well. You guys are great, and thank you for being so supportive in the chat, and it's really fun to be watching a Fortnite tournament in the Diwali vibes. Yep. It's going to be great. See you guys tomorrow. Till then, have a good night and take care.